So this is the concept. Okay. तो से पर्सपेक्टिव रे मु ट्राई करूची इकोनॉमी टाको सरका पे. तो फर्स्ट थीम इज जीडीपी एंड जीएनपी. तो आगु हमें जानि छे जीडीपी जीएनपी रो रिलेशन टाको हमें देखिबा. देन एनएनपी कोन, देन तो मैं कहूँ ना नेशनल इनकम रो कांसेप्ट. करेक्ट. तो नेशनल इनकम रो कांसेप्ट एनएनपी जीडीपी जीएनपी एगुडा टिके देखबा. तो जीडीपी कहू छी ग्रॉस, एक रे तो होची ग्रॉस डोमेस्टिक एंड पी फॉर प्रोडक्ट. देन जेतले ग्रॉस कहू छी दैट मींस इट इज एन एग्रीगेट. D for domestic, that means domestic territory रे produce होता दरकार. Product means goods and services, not only goods, neither only products. It is goods as well as services. So total value of all final goods and services, important keyword, final goods and services by Indian resident or non-resident, चाहे से Indian resident हो या फिर non-resident हो, केही भी लोगो जे कि इंडिया रे और टेरिटरी रे प्रोड्यूस करूची, they produce in the domestic territory of India in a given accounting year, that is called GDP. मन रहिबो GDP रो फॉर्मूला. Gross means all final goods and services, all final products produced within the domestic territory of India within a given accounting year, that is called GDP. ताहले प्रोड्यूस किए करूची, चाहे से अमेरिकन है कि से इंडिया रे रही कि प्रोड्यूस करू, चाहे इंडियन इंडिया रे रही कि प्रोड्यूस करू, इंडिया रो टेरिटरी रे प्रोड्यूस होतवा दरकार. बुझिएला? यस और नो? क्विक. ओके. के जण लाइब्रेरी रे अछो? के न? ओके. बाबू लाइब्रेरी. आ बाकी जे जण घरे अछो ना, सो यू कैन बी रेस्पोंसिबल, राइट? तो जदी रूम रे अछो ताले यू कैन रेस्पोंस. Oh sorry, Assis. Oh, sorry. Okay, fine. Then gross national product, GNP रो concept, total value of goods and services produced by residents of a nation in a given accounting year. Again, GNP GDP रे कोहा होतला, चाहे से रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, बट एठी कोहा होची GNP रे नेशनल प्रोडक्ट जेतले कोहा होची सेतले हमें रेसिडेंट रो कांसेप्ट होचे. ता रेसिडेंट नॉट सपोज्ड टू बी अ सिटीजन आल्सो. करेक्ट. नो, सिटीजन भी रेसिडेंट ही पारे, सिटीजन न होय कि भी से रेसिडेंट ही पारे. जदी इंडिया रे 6 मास रो अधिक रहि गला ताले से इंडिया रो रेसिडेंट. ओके. तो जीएनपी फॉर एग्जांपल गोटे अमेरिकन सीआसी जदी इंडिया रे रहिला 6 मास रो अधिक एंड सी इंडिया रो टेरिटरी रे किछि प्रोड्यूस कला, देन इट विल बी कंसीडर्ड टू बी जीएनपी ऑफ व्हाट? जीएनपी ऑफ इंडिया. बुझियाला? तो जीडीपी रे सेटा कैलकुलेट करिवो ना नहीं करिवो. So total value of goods and services produced by the residents of a nation in a given accounting year, that is called GNP of India. Okay. So 182 दिन रु अधिक means 6 मास रु अधिक staying in India, then that person will become resident. And सी जदी प्रोड्यूस कला 15 लाख रो goods and services, 15 लाख रो goods and services, that will come under India रो GDP. GDP रे तो इंडिया रे पळे आइसो. जदी से आउटसाइड भी प्रोड्यूस कला, एठी भल से देखो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट ऑफ ए नेशन इन ए गिवन, इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी. होंगी नहीं? डोमेस्टिक टेरिटरी कोट लिखाई छै कि? लिखाई ही नहीं. त माने से जदी बाहर भी, जदी इंडिया रो रेसिडेंट जदी से बाहर भी प्रोड्यूस कला, फॉर एग्जांपल मु इंडिया रे 6 मास रो अधिक रहउची, मु अमेरिका को गली, अमेरिका रे 2 लाख टका कमेली, ताले अमेरिका रे जो सर्विस ता दे कि 2 लाख टका कमेली, सेटा को इंडिया रो जीडीपी रे आसीबो कि? ये सर नो. अमेरिका रे बाबा आसीबोनी. यस आसीबोनी. किंतु सेटा इंडिया रो जीएनपी रे कैलकुलेट होबो ना होनी? जीएनपी रे कैलकुलेट होबो बिकॉज़ आई एम स्टिल रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मु जाई के बाहर कोठी भी सर्विस कमाए, जहां भी पैसा सेटा इंडिया रो जीएनपी रे कैलकुलेट होबो. ओके. देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ जीडीपी पोटेंशियल. कोन ना पोटेंशियल होची कोन ना हाईएस्ट और मैक्सिमम आउटपुट दैट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस विद इन ए अवेलेबल लेबर एंड कैपिटल. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थिला. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रो कांसेप्ट रे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड चाइना मानुचे डाटा को भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. नाउ गोटे फैक्टर ऑफ पेमेंट थिला. फैक्टर ऑफ पेमेंट कोन ना लैंड पई हेले तमे कोन नबो ना रेंट नबो, लेबर पई हेले लेबर कोन पैसा नबो ना वेज नबो, कैपिटलिस्ट जो माने से माने प्रॉफिट कमेबे, एंटरप्रेन्योर जे सॉरी ये माने इंटरेस्ट, कैपिटलिस्ट रे इंटरेस्ट लागियो, कैपिटल अकाउंट रे इंटरेस्ट लागियो कि फॉर एग्जांपल मु गोटे बॉन्ड नै जे बॉन्ड रे इंटरेस्ट केते कैपिटल रे पळे आसो, एंटरप्रेन्योर जे से प्रॉफिट कमेबो. दिस इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विथ फैक्टर ऑफ पेमेंट रो लिंक. मन रहइबो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विथ फैक्टर ऑफ पेमेंट रो लिंक. डन. नेक्स्ट कांसेप्ट. सो बहुत सारा कांसेप्ट अछि, छोटो छोटो जस्ट तमे खाली माइंड को फ्रेश करो बिकॉज़ सीडीएस सीएपीएफ रे क्वेश्चन ओडा पचारि सारी छी. जीडीपी पोटेंशियल तो कहू कि हाईएस्ट और मैक्सिमम आउटपुट दैट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस यूजिंग अवेलेबल लेबर. कोन फॉर एग्जांपल मु घंटा मु गोटे दिन रे 10 घंटा पढी परिबी. ठीक अछि. मैक्सिमम 10 घंटा पढ़ी पारि. जदि ताठू
ड्यूरिंग एग्जाम टाइम मु कोन करूची जनरली मु 10 घंटा पढुची एटा होची मोर पोटेंशियल देला बट एग्जाम टाइम रे मु 12 घंटा भी पढी परिबी ड्यूरिंग एग्जाम टाइम ताले मोर एक्चुअल रु जदि मु माइनस करबी मोर पोटेंशियल ताले मते मिलियो इन्फ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेट केते होची कि मोर पोटेंशियल होची 10 घंटा किंतु ताकू आहुरी भी मु पढे परिबी जदि आहुरी पढे परिबी ताले से जो मोर एक्चुअल पोटेंशियल नॉर्मल पोटेंशियल होची 10 घंटा एक्चुअल पोटेंशियल 12 घंटा भी जाई परिबो देन जदि 10 घंटा मोर जदि ठकीली फ्री टाइम रे एक्चुअल मोर तळकू भी पळे आसीबो दैट इज 8 घंटा दिस इज कॉल्ड गोटे इन्फ्लेशनरी हला आ गोटे होची रिसेशनरी डिक्रीज और शॉर्टफॉल जोटा होची सेटा रिसेशनरी तो जीडीपी पोटेंशियल बुझा पड़ियो जीडीपी पोटेंशियल ओके नेक्स्ट आंसर जीडीपी जीएनपी रो कांसेप्ट तो जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड वेरी इंपोर्टेंट जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ताले जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सेम कथा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मने पकाओ जीएनपी रे हम कोन कहउतले इंडिया रो रेसिडेंट जडी इंडिया रे गोटे जिंस प्रोडक्ट कला प्रोडक्शन करके लाख टका पाइला सेटा जीएनपी रे कैलकुलेट होबना होनी हबो इंडिया रो लोक जदी इंडिया रे गोटे जिंस प्रोड्यूस कला जीएनपी रे कैलकुलेट हो ताले सेटा एक्चुअली कोन सेटा जीडीपी ना यस इंडिया रो सेम लोक इंडिया बाहर जाई कि जदी प्रोडक्शन कला बट इंडिया रो से रेसिडेंट ताले सेटा जीएनपी रे कैलकुलेट होबना होबनी सॉरी होबो बिकॉज़ सी एटा कोन हो जाउची नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मु इंडिया रो लोक भाबिनो मु गोटे चासी 7 मास मु इंडिया रे रहि कि चासो काम कली एंड प्रोडक्शन जहा हला ताकू बिकी देली तो सेटा तो मोर इंडिया रो जीडीपी रे कैलकुलेट हिजो खबर हामनी हिजो 7 मास बाद मु आउ जो 5 मास बढ़ला सेटा जाय कि अमेरिका रे रहि कि हेठी भी चासो सिके कि लोक हेठी भी भाबिनो 10 लाख टका मु कमे देली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ए दीटा को मिसी गले काहे ना मु इंडिया रो रेसिडेंट ए दीटा को मिसी गले सेटा जीएनपी रे कैलकुलेट हिजो बुझियला ताले ए जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एठी एक्चुअली ए जो नेट फैक्टर इनकम करो जी के दैट पर्सन हैज टू बी इंडियन रेसिडेंट नेट जदि मु लखेबी ताले इंडिया रो रेसिडेंट किछि जाय कि बाहर काम करी किछि पैसा आनी छी बाहर रो रेसिडेंट किछि इंडिया रे कमे कि पैसा नै छी ताकू जदि मु कैलकुलेट कर देबी ताले मते नेट मिलि जिवो बुझियला ना नै बुझियला यस डन सो नेट फैक्टर इनकम आमे जतले कहूचे इट इज नथिंग बट income from abroad to India minus income from India to abroad. This is the only concept. So GDP plus net factor income from abroad equal to GNP. GNP. Next one. Okay. ये क्वेश्चन टा कर दियो ये क्वेश्चन रे सॉल्व हो जिवो एटलीस्ट जीडीपी जीएनपी रो कांसेप्ट शेष भाबिनियो एटा होची यूएस एंड एपटा होची इंडिया गोटे इंडिया रो सिटीजन जे कि 3 मास रहिची इंडिया रे 3 मास रहिची इंडिया रे सीए जो अमाउंट इंडिया रे कमौची ओके और टेक ए क्वेश्चन डायरेक्ट गोटे क्वेश्चन या if an Indian citizen is working in USA for a duration of 9 months गोटे इंडिया रो सिटीजन से यूएस रे 9 मास काम करूचे then the goods and service produced by him will be counted in what will be the answer इंडिया रो सिटीजन काम करूची यूएस रे 9 मास goods and service produced by him will be counted in what okay इंडिया रो जीडीपी रे कैलकुलेट होबो की काहे ना सेटा यूएस रे अछि तो goods and services produced by him will be counted in produced by him in USA okay produced by him in USA will be counted in India रो जीडीपी रे तो जीवनी यूएस रो जीडीपी रे जीवन नाही यस यूएस रो जीडीपी रो कांसेप्ट रे केबे कोठी सिटीजनशिप रेसिडेंट ए सब लिखा होनी ताल तो तीनटा तो डेफिनेटली करेक्ट 2 इंडिया रो जीएनपी रे जीवो हाउ कम इंडिया रो जीएनपी रे जीवो से तो रेसिडेंट भी नो ना इंडिया रो रेसिडेंट किसे बोल से देखो तो जदि रेसिडेंट न ताले जीएनपी रे काहे नै मु जीएनपी रे भी जीवनी सो आंसर विल बी ओनली 3 not 2 and 3 only 3 see से या तो मो स्टार्टिंग रो कहूची जीएनपी इज व्हाट सी जीएनपी
the total value of goods or services produced by resident, it's not citizen, citizen kotha no, it's resident of a nation in a given accounting year. भाविनो एक्स होची इंडिया रो सिटीजन जे कि यूएस रे रही 9 मास, यूएस रे 9 मास रे रही कि यूएस रे जहां प्रोडक्शन करची सेटा यूएस रो जीडीपी रे जीवन ना जीवनी जीव, यूएस रो जीएनपी रे जीवन ना जीवनी जीव, काहे ना से यूएस रो रेसिडेंट भी हेची, इंडिया रो जीडीपी रे जीव जीवनी, इंडिया रो से जो 9 मास रो कामटा एटा इंडिया रो जीडीपी रे जीव जीवनी, 9 कामटा यूएस रो जी इंडिया रो जीएनपी रे जीव सेठी भी जीवनी, बुझियला ना बुझियलानी नाउ कार डाउट अछि फाइन ओके नेक्स्ट कांसेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोन ना कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, मोर सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जोटा ताकू मु जदी सैक्रिफाइस करूची ताहाले सेटा होची अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मु वर्तमान तुमको पढौची, लेट सपोज मु तुमको वर्तमान पढौची, मु वर्तमान सैक्रिफाइस कोन करूची मोर मेंस प्रिपरेशन, एटा होची प्रीलिम रो रिवीजन, ताहाले मु जदी सैक्रिफाइस करूची दिस इज गोइंग टू बिकम माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बुझियोची ना बुझियोनी, तो मोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोन मेंस प्रिपरेशन सेटा वर्तमान मोर लॉस होची, लेट सपोज दिस इज हाउ you have to understand कि cost of sacrificing second best alternative is known as opportunity cost. UPSC CDS वगैरह रे क्वेश्चन आ जाय जी, I don't know OPSC न पचारि पारे but still I have to be prepared with the key term. Next, जदि 500 टंका कैश इन हैंड अछि, if in bank I will get interest, that is the opportunity cost. Yes, जदि मो पारे 500 टंकाटा हाथ रे अछि मते टंकाटा इंटरेस्ट के देबेनी, किंतु जदि बैंक रे थांदा ताले मते इंटरेस्ट नता, तो से जो इंटरेस्ट है जो मो पई opportunity cost. Then there is a concept of depreciation. What is depreciation? The loss in value of capital due to normal wear and tear during production process. मु बर्तन गोटे कार टे तयारी कर देली, कार टा ए वर्ष तयारी हो गला, नेक्स्ट वर्ष से कार रो प्राइस ए वर्ष रो प्राइस जदी 10 लाख अछि, नेक्स्ट वर्ष तार प्राइस कार टोटल चला ही नहीं बट तार प्राइस 9 लाख होई जिवो, देन धीरे धीरे तार 5 लाख होई जिवो, करेक्ट नो? ताले ए जो डेप्रिसिएशन होची लॉस इन वैल्यू of what capital, loss in value of capital due to normal wear and tear, that is what we call depreciation. ताहले net depreciation कोन ना जति ग्रॉस रा अमाउंट थिला माइनस डेप्रिसिएशन, that is called net. तो जीडीपी जेमिति हमें कहउतले जीडीपी जोटा कि हमें ग्रॉस कहउतले, ग्रॉस रु मु जदी डेप्रिसिएशन को हटै देबी ताले मते नेट मिलि जिवो, ताले जीडीपी रु एनडीपी मिलिवो, एनडीपी। तो व्हाट इज एनडीपी ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मन रहइबो। सिमिलरली जीएनपी रु एनएनपी डेप्रिसिएशन को हटेले नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जो, नेट माने ग्रॉस माइनस समथिंग। नेक्स्ट, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। पार्लेजी फैक्ट्री रे लैंड लेबर कैपिटल थिला, बर्तन हबो पार्लेजी रो गोटे कॉस्ट ला 8 टका, 2 टका प्रॉफिट हैला, से बर्तन बिकियो केते टका रे 10 टका रे। जेतले फैक्ट्री रु प्रोडक्ट ता बाहरुची इंक्लूडिंग प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। फैक्ट्री रु बाहरला, जस्ट फैक्ट्री सामने रे मु ठियाई पड़िबी मते मिल जिवो कि केते रे। ट्रांसपोर्ट रे भाबिनो गवर्नमेंट को टैक्स दिया गला 3 टका एंड सम सब्सिडी गवर्नमेंट देला टंकाटे, तो ओवरऑल केते रहला 2 टका। तो शॉप को बर्तन आसिला बेलकू 12 टका शॉप रे रहउची, भाबिनो शॉप वाला भी सी आउ टंकाटे प्रॉफिट रखला, तो बर्तन मार्केट रे से बिकिबार अछि 13 टका, ताले मार्केट कॉस्ट केते प्रॉफिट रखिला परे एठी प्रॉफिट रखि नदला बेले मु 12 लिखिछि। प्रॉफिट भाबिनो जे बिकी बसी आउ टंका रखि दो, टोटल मार्केट प्राइस केते हिजो 13 टका। बुझियला ना बुझियलानी? ताले फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस ऑफ टीसीडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। यस, तो दिस टैक्स माइनस सब्सिडी इज नथिंग बट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ए टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी वाला कांसेप्ट एंड सब्सिडी वाला कांसेप्ट भी होची इनडायरेक्ट वाला कांसेप्ट। So net indirect tax is equal to market price. Done. So the next concept, ताले national income कोन ना, national income होची net national product at factory cost, at factory cost। सिंपल कथा, बर्तमान मु भाई जानली जीडीपी, जीडीपी जदि मते जीएनपी दरकार प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जदि मु कहली ताले मते जीएनपी मिलिबो, जीएनपी मिलिबो हां कि नहीं? कैन आई राइट जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड?
मीन्स नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड कोन ना इंडिया रो रेसिडेंट जे जाई कि बाहर पैसा कमे के आनी इंडिया रो रेसिडेंट बाहर पैसा आनी हां कि नहीं एंड बाहर रो रेसिडेंट इंडिया रो पैसा नै कि पळै दिस इज व्हाट वी कॉल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नाउ जीएनपी बर्तमान मते कहबी जदी एनएनपी नेट ग्रॉस रु नेट केमती पाइबी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन यस एनएनपी पाइबा कहले जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन नेक्स्ट what is this GNP minus depreciation and this is NNP market price and this is market price minus depreciation कहीं ना GDP एटी market price कथा कहू एटी भी market price कथा कहू but national income होउची NNP at factory cost can I write factory cost plus tax minus subsidy equal to market price can I write this जदि मोटा लिखि परिबी ताले GNP at market price कोन GNP at market price is nothing but GNP at factor cost plus tax minus subsidy minus depreciation होंगे नहीं तो NNP at factor cost भी देखो NNP at factor cost is equal to NNP at market price minus tax plus subsidy एटा भी लिखि परिबी factor cost is nothing but see factor cost plus tax minus subsidy रे ही मते market price मिलुला ताले market price NNP at factory price I can write NNP at market price minus tax plus subsidy and NNP at market price can I write this is nothing but GNP at market price minus depreciation market price रो GNP equal to GDP plus net factor income minus depreciation ए टोटल जिनसटा को मो एठी लिखुची GDP at market price plus net factor income from abroad एठी जो GNP factor price लिखाई छी tax minus subsidy minus depreciation tax minus subsidy आउथरे में करूछ NNP at factor cost equal to NNP at market price एपटे थिला plus tax minus subsidy एपट को जदी जीवो minus tax plus subsidy am I right NNP at market price can I write GDP at market price minus depreciation because net पाइबार अछि मते depreciation होटेल मते मिल जीवो tax plus subsidy एति की तो concept this is what we call national income कार डाउट अछि fine so let's see GDP GNP national income let it load meantime we'll go further सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ठीक अछि तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जतले कहउचे एगुडा तो हेते कांसेप्ट आगु एगुडा पढिबार भी नहीं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम माने जदी फैक्टरी रो किछि पैसा से माने किछि हाउस होल्ड को पैसा दो जदी हाउस होल्ड कोन देथियो तार लेबर पई से पेमेंट भी नउथो होंगे नहीं से पर्सपेक्टिव रे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें जानि छै इंडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर तो डिफरेंट सेक्टर ओडा कोन अछि ना तमरो भाबिनियो फार्म अछि एठी हाउस होल्ड अछि एठी किछि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जोटा कि बैंकिंग सेक्टर हे गला गवर्नमेंट हे गला जोटा कि तमरो फिस्कल पॉलिसी उडा देखिबो एंड एक्सटर्नल सेक्टर जोटा कि तमरो पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट वगैरह बैलेंस ऑफ पेमेंट रो कांसेप्ट से गुडा सब देखाबो ए गुडा रे एते किछि नथिला तो जीडीपी हमें कथा कहले जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज तो यूज्ड बेस्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज तारा हमें कथा कहले जीडीपी रे कहारो डाउट अछि कि and this will be final product that will be the final product जोटा कि कंज्यूम होला वाला सिचुएशन में थिबो सेटा कोई हमें जीडीपी कहउतले तो यूज्ड बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज दोज आर ड्यूरेबल और दोज कैन बी नॉन ड्यूरेबल तो कंज्यूमर रो गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ड्यूरेबल जोटा कि लंबा टर्म में रहबा आ किछि रहबा नॉन ड्यूरेबल then these consumer goods and services that will be used for final satisfaction for the consumer then what is capital good ना capital goods ये होची गोटे intermediate वाला good जोटा कि further production of goods and services over a long period of time capital good होची गोटे intermediate good जोटा कि further production में यूज होबो over a long period of time कि मते goods and service produce करियार अछि तार intermediate good ता होची capital good ठीक अछि there are so many questions actually
Try this question. In the context of how national income is measured, what does the concept of basic price include in addition to factor cost? See, what a factor cost thila, out joda market price, basic price wala concept. Net product tax only, net production tax only, both net product tax and net production tax, neither net product tax or net production taxes. Production. See, बर्तन दीटा concept जो गोटे product tax और गोटे production tax. Both are two different things. Let's see, I am going with the net production taxes only. Okay. Let's see. Option B is the correct answer. Why? Because basic prices represent the value of output that indices the earning of factors of production plus production taxes, not product tax. Product tax माने कोन? जेतले मु तमु पढेइली मु कोन कहली फैक्ट्री सामना रे मु ठिया है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी पहुंची गलानी फैक्ट्री सामना रे, राइट? ता पर प्रोडक्शन ऊपर टैक्स लागुची, नॉट कि प्रोडक्ट ऊपर टैक्स लागुची. प्रोडक्शन हे जाईची, बर्तन प्रोडक्शन जेतले ट्रांसपोर्ट हबो, मार्केट प्राइस वगैरह जेतले एस्टैब्लिश हबो, सेतिकले प्रोडक्शन टैक्स लागिबो. कोन ना प्रोडक्शन टैक्सेस सच एज इट एक्सक्लूड प्रोडक्शन सब्सिडीज. सब्सिडीज को हटाई दे, प्रोडक्शन बेले जो सब्सिडीज मिली ताको हटाई दियो, तो सेटा तो माइनस हमें कर देले ना. ताले आउ रहिला कोन? प्रोडक्शन टैक्सेस आर चार्ज सच एज लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस. Those are imposed irrespective of how much output is produced. Since these are linked to the production process itself, they are included when calculating basic price. However, product tax such as excise duty, service tax, and import-export duties are not included in basic price. These are added when computing market prices. They are imposed per unit output sold. Therefore, basic prices serve as the intermediate valuation point incorporating production taxes. See, dita concept. गोटे हूँ बेसिक प्राइसेस आ गोटे हूँ मार्केट प्राइसेस. फैक्ट्री सामना को जिते मु आनिबी फैक्ट्री सामना को, तो लैंड लेबर कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पाई जो टैक्स लागे दैट इज प्रोडक्शन टैक्स. बुझियला? गोटे प्रोडक्ट भाबिना पार्लेजी रो कांसेप्ट मु जतले कहली, पार्लेजी रो कांसेप्ट रे 8 टंका तमरो खर्च होइतिला, हां कि नहीं? 2 टका तमे प्रॉफिट रखलो. से जो 8 टका खर्च होइतिला एक्चुअली सेथिरे लैंड लेबर कैपिटल रो पैसा केते? लैंड लेबर कैपिटल रो पैसा भाबिना फैक्टर कॉस्ट होची 10 टका, प्रॉफिट तमरो 2 टका, ताले एक्चुअली खर्च केते हला लैंड लेबर कैपिटल रे? 8 टका. सो दैट 8 टका विल बिकम व्हाट? 8 टका विल बिकम व्हाट? बेसिक प्राइस. 10 टका इज योर मार्केट सॉरी फैक्टर प्राइस बिकॉज़ एथर प्रॉफिट भी इंक्लूड है. देन सेटा वन सॉरी वाला करे देन तमे तो ट्रांसपोर्ट करू जो जीएसटी बीएसटी लागू छे से सब तमरो कोथरे पळेबो, दैट विल बी योर मार्केट प्राइस. बुझियला? गोटे होची प्रोडक्ट प्राइस, गोटे होची प्रोडक्शन प्राइस, आ गोटे होची बेसिक प्राइस आ मार्केट प्राइस. तेनु एगुडा ऊपर एते भी जीवानी, बस हमें जानि जे कि भाई देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ बेसिक प्राइस, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ फैक्टर प्राइस. करेक्ट नो? तो मु सिंपल कथा रे कहूची कि जो हमें एग्जांपल टा लेकी गले एग्जांपल टा रे जेतले फैक्टर कॉस्ट कहूचे, फैक्टर कॉस्ट कहूचे हमें 10 टका, काई ना इथरे 8 टका अछि प्लस 2 टका अछि. देन बेसिक प्राइस रे हमर कोन कैलकुलेट होबो ना ए 8 टका रे लैंड लेबर कैपिटल केते लागि छि, बिकॉज़ दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस. बुझियो कि ना नहीं? प्रोडक्शन करिया पई जो खर्च उडा है छि लैंड लेबर कैपिटल, दैट विल बी कमिंग अंडर बेसिक प्राइस. बुझियला? बुझियला? once that is done, याकु बर्तन मते प्रोडक्शन सरी गला पारे, प्रोडक्ट सरी गला पारे प्रोडक्ट ऊपर जो टैक्स लागि जिवो, गवर्नमेंट रो टैक्स लागि गला, सब्सिडी प्रोडक्ट ऊपर दिया गला, ताले से गुडा हे जो मोरो अल्टीमेटली एठी मु जतले कैलकुलेट करूची दैट विल बी बाय मार्केट प्राइस. सो बेसिक प्राइस प्लस प्रॉफिट वगैरह ऐड कर देले फैक्ट्री सामना रे जहा प्राइस ता लागिवो सेटा होची फैक्टर प्राइस. प्रोडक्शन प्रोसेस रे जहा खर्च होइदिवो लैंड लेबर कैपिटल बिकॉज़ दोज आर कंसीडर्ड टू बी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ता पई जो खर्च लागिदिवो सेटा होची मोरो प्रोडक्शन प्राइस. एंड प्रोडक्ट प्राइस जोटा कि मार्केट प्राइस एट द एंड सेटा होची सेथिरे तमर लागि जिवो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह अछि. डन. नेक्स्ट कांसेप्ट होची जीडीपी. तो जीडीपी रो कैलकुलेशन वाला कथा भाबिनियो यूएस रे
यूएस रो गोटे लोक जे कि इंडियन एम्बासी रे इंडिया रो लोक इंडियन एम्बासी रे 9 मास रही के काम करू इंडिया रो लोक इंडियन एम्बासी रे 9 मास रही के काम करू बर्तमान सी जो काम कला से कामटा कोथरे इंक्लूड हो 1 2 3 4 व्हाट विल बी द आंसर व्हाट विल बी द आंसर टू इंडिया रो जीडीपी रे जीवो इंडिया रो जीडीपी रे जीवो यस यूएस रो जीडीपी रे जीवो नो कहीं ना ये इंडिया रो लोको एंड अच्छी भी इंडियन एम्बासी इज लाइक व्हाट इंडियन टेरिटरी होंगे नहीं इंडियन टेरिटरी ही से 9 मास अछि देन कैन आई से ही इज इंडियन रेसिडेंट आल्सो जदि से इंडिया रो रेसिडेंट भी होबो देन से इंडिया रो जीएनपी रे भी जीवो करेक्ट ओके बेस ईयर शिफ्ट है 22 23 को ओके so gdp at current price which is called nominal gdp at constant price is called real gdp जदि करंट प्राइस रे कहूचे ताको हमें नॉमिनल कथा कहूचे जीडीपी जदि कांस्टेंट प्राइस रे कहूचे ताको हमें रियल वाला कथा कहूचे कांस्टेंट माने बेस ईयर रो को नै की फॉर एग्जांपल गोटे गुड अछि ए गोटे गुड्स अछि बी क्वांटिटी ए रो अछि 100 केजी बी रो अछि 200 केजी प्राइस एट बेस ईयर मींस 2022 23 रो कांसेप्ट रे आज 2026 रे जदि मु कहबी ए रो प्राइस केते अछि पर केजी लेट सपोज 10 टका 22 रे केते थिला ना 5 टका ताले एक्चुअली रियल प्राइस तार केते ना 5 टका बट नॉमिनल प्राइस केते ना 10 टका ताहले नॉमिनल रो जदि मु रियल फेडबी ताले मु जान देबी इन्फ्लेशन केते होची होंगी नै यस तो गुड्स ए जदि मु 100 केजी को 20 टका प्राइस रे लेबी ताले जीडीपी एट 11 12 और एटा को 22 23 कर दियो 22 23 बेले जीडीपी केते रहइबो ना 20 इनटू बेस ईयर रे प्राइस केते दिला ना 100 बी रो 40 टका दिला बेस ईयर रे क्वांटिटी केते प्रोड्यूस होची 200 तो 2022 23 रो डाटा अनुसार भाबिनो टोटल प्राइस थिला 10000 टका रियल जीडीपी कैलकुलेट करियो और नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करियो भाबिनो 2026 27 रो डाटा वर्तमान मु उठोची 2026 27 रे ए प्रोड्यूस हला 400 एंड नॉमिनल करंट प्राइस होची 50 टका बी रो प्रोडक्शन रो प्राइस होची 800 करंट प्राइस होची 100 टका ताले जीडीपी एट करंट प्राइस केते हो लक्षे टका जीडीपी एट रियल प्राइस केते हो 400 इंटू 20 केजी टका 20 टका पर केजी 800 प्रोड्यूस होची 2026 27 रे 40 टका पर केजी ताले एथिरे कोन प्राइस टा कांस्टेंट रहिला आउटपुट टा अलग आसी होंगी नहीं प्रोडक्शन टा चेंज हेची ताले एथिरे मु जानि परिबी कि प्रोडक्शन बढ़ीची ना कमीची बुझियोची ताले जीडीपी एट बेस ईयर रो कैलकुलेशन रे मते मिलिबो प्रोडक्शन केते मात्रा रे बढ़ीची तो एठी जदी प्रोडक्शन 10000 थिला बेस ईयर रे एठी प्रोडक्शन 40000 होची ताले प्रोडक्शन 4 टाइम्स इंक्रीमेंट हेची बुझियोची जोठी प्राइस कांस्टेंट अछि am I right किंतु जदी मु नॉमिनल पाइबी नॉमिनल भाई मते किछि जणा पडिबोनी पॉइंट जणा पडियो तमर एठी लागियो कि प्रोडक्शन बढ़ी जाईची 10 गुना बट इज इट 10 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ी नाही मात्र 4 गुना बुझी परछो ना नाही ताहले रियल जीडीपी आ नॉमिनल जीडीपी तमे जदी काढी दबा ताल तमे जानि परियो जोठी 40000 टका हबा कथा एठी जदी लक्ष्य होची ताले इन्फ्लेशन केते अछि मार्केट रे 60000 टका रो बुझियला ताले नॉमिनल रो रियल को मु जदी माइनस करबी मते इन्फ्लेशन मार्केट रे मिलि जबो देन ग्रोथ रो कांसेप्ट कोन ना ग्रोथ तो सेताले बढ़ियो सेताले क्वांटिटी बढ़ियो so quantity is directly proportional to growth quantity in the price is directly proportional to value also am I audible okay sorry there was a disconnection so I was saying nominal gdp सेतिकी बेले जेताले तमे कहउछ सेही वर्षर प्राइस केते रियल जीडीपी सेताले कहउछ जेताले तमे ताकू बेस ईयर सहित कैलकुलेट करछ बेस ईयर बर्तन शिफ्ट हेकी 22 23 हेची फाइन नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी तेरे कार डाउट अछि की फाइन ओके नेक्स्ट मेथड फॉर जीडीपी कैलकुलेशन yes this is also important the method for gdp calculation कोन गोटा होची एक्सपेंडिचर मेथड गोटा होची इनकम मेथड आ गोटा होची प्रोडक्शन मेथड व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड ना सीआईजी एक्सएम
C for consumption, I for investment, G for government expenditure, X minus M is nothing but export minus import, or which is called net import. Okay. So this is what we call expenditure method. So jeta consumption ko hoji seta all household consumption means public ro consumption. Jeta investment ko hoje businessman वगैरह से माने किसी किसी investment कले, entrepreneur वगैरह किसी किसी investment कले. Then G for government रो expenditure कहते हैं and net export. कहीं ना इठी जो consumption होजी ना एमाने भी मे भी गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर रे भाबिनो गवर्नमेंट को गोटे परचेस करदेला गोटे भाबिनो गवर्नमेंट गोटे परचेस कला गोटे कैपिटल गुड जोटा कि गोटे बहुत बड़ा मशीन टे जेसीबी टाइप रो हला तो से जेसीबी टा इंडिया रे तयारी हिनी से जेसीबी टा ऑस्ट्रेलिया रो आसी तो एटा तो गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर एठी पळेबो बट सेटा तो इंडिया रो जीडीपी रे कैलकुलेट होबा कथा न हां कि नहीं काई ना से इंडिया रो टेरिटरी रे थोड़ी प्रोड्यूस हिची नहीं ना देन दाउ मते हटेबार अछि x माइनस m रे इंपोर्ट हटे दे किछि जिंस एक्सपोर्ट हे जाई जोटा कि सीआईजी रे भी मिलिबोनी काहे ना सी इज कंजम्पशन ऑफ व्हाट पब्लिक से पब्लिक तो इंडिया रो किंतु जो जिंसटा बाहर को प्रोड्यूस हे जाई प्रोड्यूस हे बाहर को एक्सपोर्ट हे जाई से जिंसटा इंडिया वाला कंजम्पशन रे थोड़ी भी देखेबोनी ना तेणु हमको डाटा दरकार बुझी होची ना बुझी होनी सीआईजी एक्सएम मन रहबो कंजम्पशन मेथड इनकम मेथड आउट होची प्रोडक्शन मेथड इनकम मेथड होची दीटा गोटे होची फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आउट होची फैक्टर ऑफ पेमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोन सिंपल मो पाखरे लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर अछि सी पूरा देशर जीडीपी जहा ता माने केही ना केही याको तो प्रोड्यूस करूची हों कि नहीं गोटे सी जीडीपी माने कोन कि द फाइनल गुड एंड सर्विसेज that has been produced within the territory of India given in one accounting year हों कि नहीं तो जदी प्रोडक्शन हेजी ता माने केही ना केही तो पैसा नै थिबे गोटे जिंस प्रोडक्शन होआ पई ताले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोन ना लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर तो लैंड लागी गोटे लोक को रेंट दिया हेतिबो जदी काली गोटे पेन टे भाबिनियो मते तयार करियार अछि गोटे सिंपल पेन कलम देन मु गोटे फैक्ट्री एस्टैब्लिश करथिबी से फैक्ट्री जो जगह तयार करथिबी लैंड देथिबी लैंड पाई रेंट देथिबी मो पाखरे लेबर थिबे तांगु वेज देथिबी काटू पैसा आनी थिबी कैपिटल अमाउंट 5 कोटी कि 7 कोटी गोटे कंपनी चलाया पई ताकू मु इंटरेस्ट दउथिबी एंटरप्रेन्योर जो अछि से प्रॉफिट नउथो ताले जदी मु एई गुडा को भी कैलकुलेट कर देबी ताले ये भी तो सब फाइनल प्रोडक्ट रो मते दे दबो कि जदी ओवरऑल भाबिना मु गोटे वर्ष को मु रेंट देछि 20000 टका वर्षटा जाकरे मते पेन प्रोड्यूस करियार अछि 1000 टा ताले 1000 टा पेन प्रोड्यूस हेछि गोटे वर्ष रे जोटा कि मोर जीडीपी रे कैलकुलेट हबो किंतु कैलकुलेट हवा पई मु जानि कि तार प्राइस टा ना मु देखिथिबे रेंट केते देछि 20000 टका अच्छा वेज केते देछि भाबिना 50000 टका 50 कोटी 70 कैपिटल जो आड़ी इंटरेस्ट केते देछि भाबिना 10000 80 मोर प्रॉफिट केते देछि भाबिना 20000 लखे ताले गोटे जदी 20000 पेन मु तयारी करछि तार गोटा पेन केते टका बिकिबी 5 टका रे ना होंगी नहीं मिनिमम तो 5 टका रे बिकिबी तो एथिरु भी मते मिलि जिवो कि पूरा 20000 टा पेन रो डाटा 20000 पेन जो डाटा एटा भी मते इनकम मेथड रे मिलि जिवो तो इनकम मु जहा जहा जनरेट करछि ता माने हेति के अमाउंट रो मु प्रोडक्शन भी करछि डन देन प्रोडक्शन मेथड कोन ना फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट जहा अछि ताकू मु हटे देबी फॉर एग्जांपल फार्मर से प्रोड्यूस कला भाबिनो 0 रुपीस फॉर इनपुट देन व्हीट आनिला व्हीट जो प्रोड्यूस कला व्हीट भाबिनो वैल्यू ऐड हला 100 टका फार्मर को कोनोसी मु टका दउनी मागणा रे से खटुची वैल्यू ऐड कला से 100 टका व्हीट मिल गला व्हीट को से गोटे बेकर को देला बेकरी वाला तो बेकरी को 100 टका रो 50 टका रो व्हीट दे से बेकरी को देन ए व्हीट 50 टका रो व्हीट हे गला इंटरमीडिएट आ 50 टका रो व्हीट हे गला फाइनल कंजम्पशन बुझियो ना बुझियोनी ताले जो इंटरमीडिएट थिला 50 टका सेटा तो बेकर नेला बेकर कोन कला प्रोड्यूस कला 200 टका रो बेक करिकि से 200 टका रो पाउरुटी भाबिनो बेकिला केक बेकिला ताले एठी से वैल्यू ऐड केते कला 150 होंगे नहीं यस ताले जीडीपी केते हे जिवो एपटे 150 एठी 50 होंगे नहीं टोटल 200 प्लस एठी 0 थिला एठी वैल्यू ऐड हला केते 100 टका 100 माइनस 0 100 तो ओवरऑल केते हला 300 टका
किंतु किंतु तमे देखो ना ये 50 टका ये तो इंटरमीडिएट रे यूज होईची फाइनल कंजम्पशन को थोड़ी जाईची ये तेणु ताको मु सबट्रैक्ट कर देबी माइनस इंटरमीडिएट ताले वैल्यू ऐड केते हला ना टोटल वैल्यू ऐड हला एठी 150 एंड तो टोटल वैल्यू ऐड होईची एठी 100 टंका एंड एठी 150 टका ये जगह रे 150 टका 50 रु 200 एठी 150 टका एंड एठी वैल्यू ऐड होईची 100 टका तो टोटल ओवरऑल वैल्यू ऐड केते होईची ना 250 टका तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज नथिंग बट तो सिंपल कांसेप्ट तुम मोड कहूतिल ना कि भाबो रॉ मटेरियल मिलला रॉ मटेरियल रु मते गोटे लुहाटे बनेला लाख टका खर्च होला 1 लाख वैल्यू ऐड होला ए लाख टका को से बर्तन गोटे इंजन बनिया को जाउची एठी आउ 4 लाख टका खर्च होई कि एठी बर्तन ये लाख टका रे बिकिले ये लाख टका रे पाइला ये बर्तन एटा को 5 लाख टका रे पाइला गोटे इंजन टा पर से ट्रैक्टर हे गला ट्रैक्टर टार दाम होची 10 लाख टका ताहले मु जदी कहबी कि जीडीपी कैलकुलेट करबी ताहले मते कोन मिलियो वैल्यू एडेड एठी 5 लाख एठी 4 लाख एठी लाख लाख 4 लाख 5 लाख टोटल होची 10 लाख वैल्यू ऐड हैला एंड आर जीडीपी कैलकुलेट करले भी से ही मते मिलियो हो कि नहीं यस बुझियला तो वर्तमान मते एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड आउ फैक्टर मेथड जणा अछि नेक्स्ट कांसेप्ट गोटा होतला आईसीओआर व्हाट इज आईसीओआर ना इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो तो additional unit of capital or investment needed to produce one additional unit of output मोर गोटे मशीन रु 100 टा बोतल तैयारी करि परिबे मैक्सिमम एति की हो आ पर ठु जदी आ गोटे भी बोतल तैयारी करियार अछि ताले मते आ गोटे नुवा मशीन रे दरकार ए मशीन रो दाम भाबिनो 1 लाख तो 1 लाख रुपीस रे भाबिनो मु 10000 बोतल तैयारी कर परिबे किंतु तार लाइफ स्पैन सेति रे सरी जीवो बर्तमान 10000 एक नंबर बोतल आ गोटे बोतल तैयारी करिया पई जदी मते पुणी आ गोटे लक्ष टका इन्वेस्टमेंट दरकार होती दिस इज व्हाट वी कॉल एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल आउटपुट तो इंडिया केस रे दिस इज लिटिल बिट ए चैलेंजिंग वन रादर देन यूएसए तो यूएसए रे 10000 एक आउ गोटे यूनिट प्रोड्यूस करे पे ताकू मे भी तार टेक्नोलॉजी एते भलो ए पूरा मशीन रे जदी छोटो पार्ट ते जो थरे 10000 टका खर्च होबो ए 10000 टका पार्ट टाकू मु जदी रिप्लेस कर देबी ताले मोर आहुरी 10000 जिंस प्रोडक्शन हेइबो ताले गोटे यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करिया पई गोटे 10000 रो यूनिट टाकू मते चेंज करियार अछि जहार प्राइस 10000 किंतु इंडिया केस रे पूरा गोटे नुवा मशीन रे दरकार पडुछि जहार प्राइस लक्ष तेनु जहार इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जेते अधिक से देशर अर्थनीति सेते खराब बुझियला so if 10% additional investment required to push over output by 1% then ICOR is 10 10% जदी एडिशनल कैपिटल दरकार खाली गोटे परसेंट बढ़िया पे प्रोडक्शन को then ICAR is 10 चलो नेक्स्ट कांसेप्ट primary activity secondary activity tertiary activity okay so I'll stop here and we will connect again at 12:30 will that be fine 12:30 to 1:30 तो जीडीपी पोर्शन सरला नेक्स्ट होची कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी तो एथिरे जो टाइप रो अछि देन इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट सेटा सारी दबा देन हमें मनी मार्केट को पढिया जनरली एठू अधिक अधिक क्वेश्चन आसे लेट्स आकु सारी दबा ना एना चलो सारी देई कि तापर मनी मार्केट पढिया नेक्स्ट टॉपिक ठीक अछि तो कांसेप्ट होची आईसीआर बुझियला आईसीआर बुझियला ओके नेक्स्ट होची प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी टर्शियरी एक्टिविटी तो जेतला हमें कहूचे प्राइमरी एक्टिविटी गोटा होची सेक्टोरल एनालिसिस आ गोटा होची एक्टिविटी लेवल रे एनालिसिस सेक्टोरल एनालिसिस कोन ना हमर तीनटा सेक्टर गोटा होची एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर गोटा होची इंडस्ट्री आ गोटा होची सर्विस ताले एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जेतला हमें कहूचे जोडा कि डायरेक्टली प्राइमरीली काम होची देन गोटा होची इंडस्ट्री सेक्टर जो थिरे कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट गोडा आसिला से गोडा इंडस्ट्री रे मु यूटिलाइज करियो देन से इंडस्ट्री यूटिलाइज कला पर तार प्रमोशन तार मार्केटिंग सेल्स से गुडा होची सब कोथरे जीवो सर्विस रे जीवो बुझियाला ना बुझियाला नहीं तो सेक्टोरल एनालिसिस हमें जो देखुचे 16% लगभग जदी एग्रीकल्चर रे रहउची इंडस्ट्री रे रहउची 29% सर्विस रे रहउची 55% इंपोर्टेंट हाईलाइट कि सर्विस इंडिया रो सर्विस सेक्टर होची सबसे अधिक तो इंडस्ट्री रे जदी देखियो तमे माइनिंग करो कोरिंग करो मैन्युफैक्चरिंग करो इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई अदर यूटिलिटी सर्विसेज कंस्ट्रक्शन एगुडा सब तमरो कोथरे आसीबो ना इंडस्ट्री रिलेटेड सर्विस जो देखिबो ट्रेड हे गला होटल हे गला ट्रांसपोर्ट नहीं जाओ कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिलेटेड ब्रॉडकास्टिंग हे गला
financial, real estate, professional service, public administration, defense, other service like coaching institutes, coaching वगैरह दबा पढ़ेगा ये सब कौन है जाउची सर्विसेज तो सेक्टर कंट्रीब्यूशन जो देखियो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन जोटा कि 1950 रे बहुत अधिक थिला से सबटु कम बर्तन इंडस्ट्री रहउची मझिरे एंड सर्विस सेक्टर बूम करूचे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्राइमरी एक्टिविटी कोन ना जे प्राइमरी एक्टिविटी जे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रे रहिला से जो काम गोडा कला व्हाट इज एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी काहू कहबो ना जो थिरे तमे वैल्यू जनरेट करिवो एंड से वैल्यू को मेजर करि पाबो आमे राइट ताले प्राइमरी एक्टिविटी कोन ना तुम किसी गोटे कम कल मुझे डायरेक्ट जमी रे कम करके आलू लगेली एंड आलू प्रोडक्शन कली प्रोडक्शन कला पर मार्केट रे बिकिदेली मते किसी वैल्यू मिलिला कि आलू रो केजी प्रति 20 टका हां मिलिला देन दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मु आलू तयारी कली जमी रे एंड आनी के आलू मु निजे खाइ देली किसी वैल्यू जनरेट कली कि ना मु निजे कंजम्पशन बाय यूज कर देली then that is not an economic activity जेतले तमे किछि गोटे वैल्यू जनरेट करबो एंड से वैल्यू को मेजर भी कर पारथो सो इकोनॉमिक एक्टिविटी पीपल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नेचर टू प्रोड्यूस गुड्स एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर फार्मिंग फिशिंग फॉरेस्ट्री ये सब हो जाउची प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी कोन हबो इट डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी सेक्टर आउटपुट प्राइमरी सेक्टर रो जो आउटपुट ता बाहरला सेटा मु जदी इंडस्ट्री को यूज करेबी सेकेंडरी सेक्टर रे पुरेबी करेक्ट नो and transfer them into produce goods example processing of raw material water supply solar power electricity production constructions ये सब गोडा कोन हे जो मोर सेकेंडरी एक्टिविटी बहुत भल से देखुता बिकॉज़ एगुडा सब यूपीएससी रो पीआईक्यू रे पछारछि प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल को जदी प्रोसेस कली सी सेकेंडरी एक्टिविटी रे जीवो वाटर सप्लाई वाटर डायरेक्ट पानी रे मु किछि गोटे काम करूची डायरेक्ट पानी रे नेचर सहित दैट विल बी कमिंग अंडर प्राइमरी एक्टिविटी ठीक अछि किंतु पानी टाको सप्लाई देबी पानी वंस मिल गला पर ताको सप्लाई देबी थ्रू मशीनरी दैट विल बिकम सेकेंडरी एक्टिविटी सोलर पावर मशीनरी यूज होती सेकेंडरी एक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इट्स नॉट प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस ऑल सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी कोन ना all those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary activities like software development transportation banking communication healthcare all these are what we call tertiary activity types of economy को टाइप रो इकोनॉमी अछि ना गोटे अछि प्रिमिटिव टाइप इकोनॉमी गोटे फ्यूडलिज्म गोटे सोशल एंड गोटे मिक्स प्रिमिटिव टाइप इकोनॉमी कोन ना सब्सिस्टेंस इकोनॉमी कि सेति की प्रोड्यूस करो जेति की तमे बंचिया पई दरकार primitive or agrarian society individual produce necessities from building dwellings growing crops hunting and household tribal level तो से कोन कहूची प्रिमिटिव माने मते जदी गोटे केजी चावल दरकार ताले मु गोटे केजी चावल ही प्रोड्यूस करी गोटे केजी 1.5 केजी धान प्रोड्यूस करबी जदर गोटे केजी चावल बारे ताठो अधिक मु प्रोड्यूस करबी नै फ्यूडल कैपिटलिज्म कोन ना the lords who held the land and leased to peasants want for production and receive a promise of safety and security from the lord तो जेतले फ्यूडलिज्म पळे आसला से माने कहबे कि भाई आमे बिकिबू आमे मार्केटिंग करिवू तोर केते किले दरकार गोटे किले ठीक अछि तू 10 किले कमा गोटे किले तू तोर रखिबू एंड 9 किले हमकू दबो इवन ए 9 किले को माने भाबे कि भाई मु बिकी ही देबी आ जो गोटे किले रहला पिजन को कहबे कि भाई तू 100 ग्राम रे आके 900 ग्राम मु लेबी मो पिला पिले मानकू दबा पाई सो फ्यूडलिज्म इज लाइक दे वांट मोर एंड मोर so the lords who held the land and released to the peasants who want for production and receive a promise of safety and security from the lord social economy kono it is a market economy government only decides what to produce and what to manufacture accordance with the requirement of the society capitalist economy demand and supply ro concept demand and command ro capitalist ro cost से देखियो capitalist कि मते कोटा सुविधा होची जोटा मते सुविधा होची and जोथि मु अधिक प्रॉफिट पाउची preferably सेही कामडा मु करबी दिस इज व्हाट वी कॉल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिमांड और कमांड कैपिटलिस्ट क्लास एम्प्लॉइंग वर्किंग क्लास नीड्स कैपिटल नेक्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी कोन ना डुअल इकोनॉमिक सिस्टम जो थरे कि कमांड भी दियो प्लस मार्केट भी दियो मींस कैपिटलिस्ट भी दियो सोशल दियो तो मिक्स्ड इकोनॉमी के चलची ना इंडिया जोठी कि आरबीआई सेबी वगैरह माने मैनेज भी करू दिबे करेक्ट नो रेगुलेट भी करूथिबे एट द सेम टाइम मार्केट ड्रिवन भी थिबो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी तो इंडिया रो जदी कहबो इकोनॉमी रो कांसेप्ट इंडिया इज अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी नॉट लाइक ओके कंप्लीटली कैपिटलिस्ट और कंप्लीटली सोशलिस्ट ना
इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट कोन ना इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी रो कांसेप्ट जहा जोटी कि इक्वालिटी होची क्वांटिटी बट इक्विटी तो तल तमे देखो तल क्वालिटी देखुछो सिमिलरली ग्रोथ और डेवलपमेंट भीतर कांसेप्ट भी सेया जेतल तमे ग्रोथ देखुछो सेतल तमे क्वांटिटी देखुछो जेतल तमे डेवलपमेंट देखुछो सेतल तमे क्वालिटी देखुछो बुझियो जी growth is quantitative development is qualitative growth is accompanied by increase in urbanization commercialization industrialization which expected to trickle down effect but in India top class increased productivity of sorry but in India top class size increases it didn't flow below এটা ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି କି ଭାବ ପାଣି ପଡୁଛି ओके तो जदि पानी ऊपर क्लास रे फील हबो पानी एठी सरी गले देन तळु को भी आसीबो करेक्ट नो किंतु कथा हो कि इंडिया केस रे जो ऊपर ग्लास ता अछि ना एटा बहुत बड़ चौड़ा करा जाउची ताकि याउ तळु को आसु ही नै आ साइज जदि बहुत बड़ कर देबी ताले तळु को आसीबो भी नै सो इंडिया केस रे ग्रोथ और डेवलपमेंट रो सिचुएशन एमिति ही चली चलो सॉल्यूशन कोन दिस इज रिलेटेड टू मेंस रो टॉपिक आमे एगुडा देखिवारा नाही ग्रीन जीडीपी रो कांसेप्ट calculating GDP of environment cost of economic growth 2022 RBI स्टार्ट करथिला ग्रीन जीडीपी रो कांसेप्ट 2022 रे इंडिया's green GDP showing upward trend which is a better environmental cost को जब तमे अलाउ करिवो इकोनॉमिक ग्रोथ रे कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो तमे कर देला किंतु एनवायरनमेंट काटी सफा कर देजो देन दैट इज नॉट लाइक ए प्रॉपर ग्रोथ तो मते वर्तमान डेवलपमेंट भी दरकार सो जीडीपी जदी 180 लाख कोटी अछि एनवायरनमेंट जदी 40 लाख कोटी अछि ताले ग्रीन जीडीपी होची 140 लाख कोटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जनरली पचारेनी तो वी डोंट हैव टू गो बट ठीक अछि देखि देता खाली कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कि पॉसिबिलिटी कोन गोटे स्टूडेंट रो स्टडी करियार कैपेबिलिटी अछि 8 घंटा ठीक अछि तो 8 घंटा आइदर से इकोनॉमी पढि परियो नले पॉलिटी पढि परियो कंप्लीटली 8 घंटा पढि परियो ताठो अधिक पढि परियो नै तो मु जदी गोटे ग्राफ बने देबी ए ग्राफ एपडू केबे से जीवो ही नै जदी से 6 घंटा इकोनॉमी पढिला ताहले 2 घंटा पॉलिटी पढि परियो किंतु ताठो अधिक पढि परियो बिकॉज़ तार कैपेबिलिटी होची 8 घंटा बुझियो ना बुझियोनी ताहले ए जो लाइन टा बनना दिस इज कॉल्ड फ्रंटियर लाइन वी कैन नॉट गो अबव इट सो एनी पॉइंट बियॉन्ड कैन नॉट हैव ता माने आ हेपडू को कोनोसी पॉइंट को तमे अचीव केबे करि परियोनी जहां अचीवमेंट कर परियो आ भितरे ही कर परियो सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी नॉट इफिशिएंट और इनएफिशिएंट बुझियला ए भीतर जो पॉइंट को आबो तमे अचीव कर परियो किंतु ए हेपडू को जदी को गोटे पॉइंट को आबो तमे अचीव कर परियो ना ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी मनी मार्केट तो ए टॉपिक टा टिके लंबा टॉपिक बट एटा को आज हमें रिवीजन करके सार दवा सो विल मीट एट 12:30 विल दैट बी फाइन ओके चलो थैंक यू एवरीवन basic related questions first okay so since 1980 the share of the tertiary sector in total GDP of India yes shown an increasing trend shown an decreasing trend remain constant been fluctuate and ये केपेर क्वेश्चन 1969 क्वेश्चन एंड से टाइम रे इंक्रीज हेतो करेक्ट नो 1992 पर जेतले ग्लोबलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म हेतो आई विल गो विथ ए एंड आंसर ए इज करेक्ट ओके सो एबे भी जदी टर्शियर सेक्टर रे सर्विस सेक्टर देखो इट इज इंक्रीजिंग दिस सेकंड the new GDP series released by the Central Statistical Organization CSO in February 1999 is with reference to the base price of what okay तो से टाइम रो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बट दिस इज इंपोर्टेंट कि बेस प्राइस चेंज होची ओके बेस प्राइस जोटा अछि से जो ईयर टा सेटा चेंज होची सो एबे रो हिसाब रे 22 23 होची बेस ईयर ओके फाइन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the Indian economy consider the following activities yes ये ऊपर त हम क्वेश्चन करिचे एक्टिविटीज रे चेक करो एंड एटा केबे पचारची यूपीएससी 2002 रो क्वेश्चन से पचारची एक्टिविटीज ऊपर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग okay the decreasing order of the contribution of this sector to the GDP at factor cost at constant price of 2000 to 2001 it's fine so गोटे होची प्राइमरी सेक्टर गोटे सेकेंडरी गोटे देखो टर्शियरी एंड फाइनेंसिंग इंश्योरेंस रियल एस्टेट भी अछि ठीक अछि तो तुमको कोन लागुती जीडीपी रा कंट्रीब्यूशन फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस 2001 अनुसार
एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री आज का टाइम रे भी जदि मु कहबी कि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री कमी छि तो वन टा तो मु सबटु तळगु नै कि तो वन टा सेमिति रे सबटु तळ नाही भी से ऑप्शन अनुसार ठीक अछि तो से टाइम रे 2000 टाइम रे आज का टाइम रे तो मते आज का टाइम रे कोन लागो तो कैन आई से 3 इज द फर्स्ट डिक्रीजिंग ट्रेंड जदि मु कहबी डिक्रीजिंग ऑर्डर कैन आई से आज रो डेट रे 3 टा आगर रहबो जदि 3 टा आगर रहबो ताले ए आ सी भीतर मु चूज करबी 3 देन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंश्योरेंस रियल एस्टेट बिजनेस सर्विस फाइनेंसिंग इंश्योरेंस ये भी अधिक आजिकल जो फाइनेंशियल इंक्लूजन आसला ना सेटा तो 3 4 1 2 2 1 हां 3 4 1 2 भितरे मु जीबी तो आई विल गो विथ सी जानि से टाइम रे भी आंसर सी ही अछि आज का टाइम रे भी आंसर सी ही नहीं जीवो सी रे न गले भी 2 1 ही जीवो सेटा 2 1 3 4 2 1 रे जीवो बट से टाइम रे 1 2 फाइन नो इशू नेक्स्ट क्वेश्चन 2002 रे with reference to the Indian public finance consider the following external liabilities reported to union budget are based on the historical exchange rates okay this is exchange rate which of the following countries has the lowest GDP per capita आज के टाइम रे देखो कि कोन श्रीलंका taking some time to reveal the answer of it lowest GDP per capita बाप रे बाप 2003 रे से इंडिया थिला ओके so not sure why next which one of the following was not stipulated in the fiscal responsibility and budget management act 2003 FRBM act रे कोटा stipulate है नहीं 2003 रे okay these are old questions okay I will just move to mock test only with reference to the difference between GVA and GDP and GVA which of the following statement are correct okay GVA measures economic activity from the supply side where GDP primarily measures it from the demand side in the economy okay good concept let's suppose I don't know what is supply side and the GDP primarily measure from the demand side see गोटा होची consumption side right गोटे GDP को मापिया पय गोटे consumption करू तो GVA जोटा कि फैक्ट्री बेस्ड तो सेटा होची सप्लाई साइड रे पळे आसे तो से पर्सपेक्टिव जदी मु भाबी वन टा ठीक अछि बट not 100% I will go to second GVA provides sector wise performance of the economy whereas GDP shows aggregate final demand in the economy correct sector wise GVA देखिबो and GDP is aggregate wala ठीक अछि GDP focuses on value added by the producers by excluding in this is wrong तीन टा तो काट दे परिवार आराम से 100% तीन टा wrong because GVA रे gross value add हुए होंगे नहीं am I right yes तो जदि मु तीन टा को काटिबी ताहले मते आंसर मिल जिवो आंसर इज 1 and 2 only okay this is open mock test forum रथिला next question it be open mock test with reference to the tax collection by the government in India in the period between financial year 2020 and 21 and 24 ru 25 consider the following statement during the period the government of India's gross tax revenue as a percentage of GDP has steadily increased GDP perspective रे gross tax revenue increases steadily increased the government of India's direct tax revenue as a percentage of GDP has steadily increased and indirect tax revenue as a percentage of GDP has steadily increased what do you think direct tax steadily increase indirect tax steadily see gross tax होची overall direct and indirect tax होची कोन ना तमरो direct रे income tax corporation tax yes indirect tax रे तमरो GST वगैरह तो GST रे fraud भी हे पारे तो steadily increase बोली किछ कहि होबनी so I am also not sure I will also prefer now I will use Brahmastra 1 2 2 2 so मते 2 ही ठीक लागु I will go with 2 and answer is 2 only see Brahmastra see because इथरे म किछ करि ही परिबिनी 100% see दिमाग लगे परिबी कि ओवरऑल टैक्स इंक्रीज डिक्रीज ऑब्वियसली ही थिबो किंतु डायरेक्ट टैक्स ता जनरली अधिक बढ़ुची काहेकि ना टैक्स रो स्लैब चेंज होची एंड लोको अधिक प्रेफर भी करू छथि इनकम टैक्स वगैरह देई दवा पे ठीक अछि तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज करची बट ए कांसेप्ट जानो कि भाई 21 रु नै कि 20 रु नै कि 25 जाय
जो डायरेक्ट टैक्स रो रेवेन्यू अछि जीडीपी अनुसार से स्टेडीली इंक्रीज करिछि बट ग्रॉस टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो दैट इज नॉट स्टेडीली इंक्रीज्ड इज दैट क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statement foreign direct investment is generally considered as a more long term and sustainable source of capital compared to foreign portfolio investment correct fdi is generally considered to be more long term hongi nahi first one yes currently india is the world's largest recipient of remittance yes an increase in the import cover okay first ta ठीक अछि जदी ताहले बी सी डी भितर आंसर थिबो सेकंड टा बी जदी ठीक अछि ताहले आंसर 1 2 और 1 2 3 बट 3 रो पॉसिबिलिटी केते अछि ओनली 50% 2 रो पॉसिबिलिटी केते थिला 75% 1 एंड 2 मते तो ब्रह्मास्त्र अनुसार ठीक लागु बट आई वोंट गो आई विल गो टू द थर्ड ऑप्शन an increase in the import cover of foreign exchange reserve indicates that the country's total external debt decreasing relative to the its gdp what increase in import cover of foreign exchange कि जदि हमर बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटर रहिला जदि बैलेंस ऑफ पेमेंट अधिक होला दैट मींस इंपोर्ट कवर बढ़ुची कि आमे जोठी गोटे आम पाखरे भाबिनियो सफिशिएंट अमाउंट रो डॉलर अछि जोथरे कि आमे आगुरु गोटे मास इंपोर्ट को कवर करि परथिले बर्तमान मु 7 मास रो इंपोर्ट को कवर करि परबी then say it indicates that country's total external debt is decreasing how can you say external debt is decreasing relative to its gdp external debt that we cannot say right external debt decrease he jauchi relative to its gdp our gdp jeti अछि see this balance of payment is different okay we are saying d okay but I will go with 1 and 2 why because I don't know I see this external debt is decreasing relative to gdp I don't see a like connection between these two माने बुझी होछि ना कि मो पाखरे डॉलर बहुत पळे आसिला एक्सटर्नल डेब्ट इज डिक्रीजिंग जदि डॉलर बहुत आसीबो जोथिरे कि मोर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रे बहुत डॉलर रहइबो बट एक्सटर्नल डेब्ट डिक्रीज करूची रिलेटिव टू इट्स जीडीपी ता सहित कनेक्शन कोन एक्सटर्नल डेब्ट तमे आनिबो जदि डॉलर भी बहुत आसी परिबो जीडीपी जदि तमर बहुत बढ़िबो जीडीपी सहित तमर किछि ग्यारंटी नै कि एक्सपोर्ट हो बोली मैंडेटरी अछि बिकॉज़ जीडीपी इज जस्ट हाउ मच यू आर प्रोड्यूसिंग राइट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सपोर्ट रिलेटेड किछि कथा ही नै हां जदि कहै तने कि एक्सपोर्ट बढ़ुची जीडीपी जदि बढ़ुची जीडीपी अनुसार एक्सपोर्ट भी बढ़ुची जोथि पई कि हमर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होउची देन मु कनेक्शन एस्टैब्लिश कर परिबी बट एठी एक्सटर्नल डेब्ट सहित मु किछि कनेक्शन पाइले नै जोथि पई आई डिडंट चूज 3 एंड जदि भी 3 रे डाउट भी लागुची ना चेक करो 3 रो ऑप्शन रे आंसर भी केते अछि माने 3 टा भी 50% अछि से परसेंटेज रे भी मु 1 and 2 ही मारिबी तो ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट गला स्टेटमेंट 2 is also correct statement 3 is incorrect because import cover measures how many months of imports can be paid by using the current foreign exchange reserve it does not directly track the external debt to gdp ratio से यही मु कहउती ना मोर मते कनेक्शन पाउनी बुझी होउती ना बुझी होनी सी इमीडिएट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन उडा ना तुमको इमीडिएटली देखियार अछि फॉर एग्जांपल एठी निया जळुची देन मु संगे संगे एठी ही जदि मु किछि रोसई करिया पई रखिबी देन एठी तातिबो एठी निया जळुची एमिति न कि रोसई करिया पई मु एठी रखि ततेबी देन एठी बाबू एटा पहुंचबो ना नै एठी पहुंचबो ना नै एठी पहुंचबो ना नै एमिति सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रे मु चालिबिनी ठीक अछि लास्ट को कोठी ना कोठी तो कनेक्ट हबो सिए किंतु कथा होची इमीडिएटली मु चेक करी कि देखि कि जदि मते इमीडिएटली रीजन गोटे मिलुची देन फाइन अदरवाइज आई वोंट गो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the present year system कौन है ये डॉट 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 है present system dash 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 product gdp calculation in india okay ठीक अछि gdp calculation in india which of the following statement is correct the national statistical office releases the official estimate of gdp in india the official gdp estimates in india are released at factor cost in india industry wise estimates are presented as gross value added at basic price what do you think nso release the official estimate then say the official gdp estimates in india are released at factor cost and industry wise estimates are presented as gross value added at a basic price तीन टा को जदि मु काटिबा को ट्राई करबी ताले मते 1 and 2 मिलिबो लेट्स सी but answer is 1 and 3 1 and 3 the official gdp estimates in india are released at factor cost gdp at factor cost means gba let's see
In India, the method of calculating GDP has evolved significantly over the time. The current practices, if you see, it's saying reflects global base standard recommendation. Unlike UN system of national SNA, statement 1 is correct. The Central Statistics Office, mone rakhita bhai, straightforward, single, direct good as they CSO handles GDP data. But after the formation of NSO, aguru CSO korudila, but jitale NSO asigala, which is merged with CSO and NSSO under Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, the responsibility shifted towards entirely to NSO. The NSO now publishes quarterly and annual GDP estimates and follows an advanced statistical framework for national income account. किए करूची बर्तन ना एनएसओ करूची आगुरु किए करूला ना सीएसओ और एनएसएसओ ए दिना को मिसी के गले एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहां अंडर ने ना मोस्पी अंडर एति मन रहबो. ओके, statement 2 is incorrect. कौन ना India earlier followed GDP at factor cost. India earlier followed GDP at factor cost model. However, 2015 कहला market price को follow करिया पे GDP at market, which is more consistent with international practices. The factor cost method excluded indirect taxes and includes subsidies, making it less suitable for policy level economic compromise. Currently, India does not use GDP at factor cost report handling GDP numbers. Instead, GBA at base prices and GDP at market prices are the two metrics used. Very important. GBA at basic prices, GDP at market prices are the one which are being used. Mone rahibo. GDP at market price यूज करा होची because इतरे टैक्स और सब्सिडी पूरा डाटा मु पाई जिबी एंड जीबीए जेतले मु कहूची जीबीए at market factor cost कहूची त माने इंडस्ट्री रिलेटेड जोड़ा जीबीए at factor cost. So industrial estimates are presented as gross value added at basic prices जोटा जीबीए at basic price कहूचे. Include as basic price include कौन ना production taxes, include production subsidies but does not include product taxes or subsidies. It helps capture the real value added by each sector. See, production is different and product taxes are different. Product taxes is related to जो road or transport charge वगैरह है वाला, then तुम्हारा GST वगैरह से गुड़ा होती product taxes ऐसे. Production रो concept रे चलिए होती से factor of production मिला land, labor, capital, entrepreneur से सब रे concept रे production रासी हो. ताले production सॉरी ला पारे factory सामने रे ठिया ले जो price रासी हो सेटा होती GBA at factor price और basic price. Is that clear? Production price वाला concept. So next question. With reference to the national income accounting, it is country's gross national product (GNP) is higher than its gross domestic product. What does it indicate? If a country's GNP is higher than its gross domestic product, see formula कौन थी ना? GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. ये ना? Then what does it mean? The country receive more net factor income from abroad than it pays abroad. Yes. B or C देखो, the country has a trade surplus in goods and services. Doesn't matter. The country has a higher depreciation. Depreciation that will be related to NNP वाला concept. होंगे नहीं? GNP, NNP. Depreciation is related to net वाला concept. Gross रू जब depreciation काढ़ी भी ताले net मिलेगा. तो depreciation आड़ो को मुझे भी नहीं. Then answer B or C भीतर थी वो कहेंगे नहीं गुड़ा similar statement but contradict to each other. The country receives more net income, lesser net income. ताले answer कौन है जो? B, everyone. ठीक ना? Next question. Which of the following best describe the concept of potential gross domestic product? देखो भाई, potential gross domestic product, potential GDP, the highest level of output an economy can produce without causing upward pressure on inflation. Okay, highest level of output economy can produce when all factor of production operates at full capacity despite. Okay, question that is then the total value of final goods and services produced in an economy at current market price in a given year. The level of GDP measured in purchasing power parity in rather than in domestic currency at market. Potential. Yes. The highest level of output on an economy produced without causing upward pressure on inflation. Let's see. GDP potential जेतले मु कहउतली मन पकाओ जेतले मु कहउतली फॉर एग्जांपल मु 10 घंटा पढी परिबी बट जदी एग्जाम प्रेशर आसीबो
एग्जाम प्रेशर आसो सेतिक बेले मु एक्स्ट्रा प्रेशर देकी 12 घंटा भी पढ़ी पारे हां कि नहीं तो सेटा होची इन्फ्लेशनरी गैप तो मोर पोटेंशियल 12 घंटा रो मोर पोटेंशियल 10 घंटा रो दैट मींस मु जदी प्रेशर न पके की जदी पढिली ताले सी होची 10 घंटा रो कांसेप्ट यस तो कांसेप्ट कोन कहूची ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर व्हाई द पोटेंशियल जीडीपी आल्सो कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी is the level of output that an economy can sustainably produce when all its productive resources such as labor, capital, technology are fully employed without generating upward inflationary pressure. It represents its economic maximum sustainable capacity under the stable price condition and it is a key benchmark for macroeconomic policy. When actual GDP is below the potential GDP, it indicates unused resources in the economy, jota recessionary gap hoje, such as an unemployment and underutilized capital, often leading to recessionary condition. When actual GDP exceeds potential GDP, it can cause demand pull inflations as the economy is producing beyond its sustainable capacity. Demand pull inflation as the economy is producing beyond its sustainable capacity. That means potential GDP is determined by the structural factor like labor force growth, capital stock, and technology progress rather than the short-term fluctuations of demand. Option B is incorrect because potential GDP is the level of output of an economy can produce when operating at full employment of resources without creating inflationary pressure. The presence of inflationary pressure lead to a barrier in the realization of potential GDP. Option C is incorrect. This is determined nominal GDP. Okay. तो concept होची कि option A और B को टिके भलसे देखो confusion थिला ना सेतरे the highest level of output that can produce when all factor of production operate at full capacity. एठी जो despite दिला तापर किछि किछि गोटे लेखा आइथिबो जोथि ପାଇଁ कि सेटा रॉन्ग हे जायछि किंतु आंसर होची मन पका मु पढिथिली ना सी मु को कहिथिली दिस इज पोटेंशियल जीडीपी देन आ ऊपर को जदि मु एग्जाम प्रेशर नै कि पढिली देन मु तो पढि देबी 12 घंटा एठी मु पढुथिली 10 आवर्स एठी मु पढुथिली 12 आवर्स करेक्ट नो बट दिस इज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो कि नहीं डिमांड अछि एग्जाम रो बोली मु अधिक पढुची नले मोर पोटेंशियल तो एठी मो पोटेंशियल होची 10 घंटा कैपेबिलिटी मोर 10 घंटा अधिक समय मु एटा रखि कि पढि भी परिबिनी हैरान हे जीवी 12 घंटा सब दिन मु पढि परिबिनी 2 घंटा एक्स्ट्रा देला बेलको मो देह भी खराब हे जाय पारे एग्जाम टाइम रो स्ट्रेस देखिथियो करेक्ट सो दिस इज व्हाट वी कॉल पोटेंशियल जीडीपी जोथरे आराम से विदाउट एनी इन्फ्लेशन आराम से जति की रिसोर्स अछि से रिसोर्स at its full capacity they are working. Yes. Next question. Consider the following statement regarding the GDP of an economy. Nominal GDP is measured at current price, while real GDP is measured using constant price at a base year. होंगे नहीं? एक ठीक है one ठीक है GDP deflator value greater than 1 indicates that nominal GDP is higher than real GDP. GDP deflator nominal minus real by real होंगे नहीं? सेही तो जाना पड़िबो एथर नॉमिनल जीडीपी केते अछि माइनस रियल जीडीपी केते थिला डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी केते इनटू 100 ग्रेटर देन 1 जदी पळे आइला ग्रेटर देन 1 ताले कोन होबो indicates that nominal GDP is higher than the real GDP correct I'll go with both 1 and 2 yes nominal GDP is measured at current price while real GDP is measured using constant price at base level एक एटा तो डेफिनेटली करेक्ट अछि जदि एक करेक्ट अछि बी कटिला एंड डी कटिला आंसर आइदर 1 ओनली और बोथ 1 and 2 देन से कहू जीडीपी डिफ्लेटर वैल्यू ग्रेटर देन 1 जीडीपी डिफ्लेटर रे हमें कोन मापुतले जीडीपी डिफ्लेटर रे हमें मापी दे परबा कि मार्केट रे इन्फ्लेशन केते है करेक्ट नो तो से कहू इंडिकेट्स दैट नॉमिनल जीडीपी इज हायर देन तो जीडीपी डिफ्लेटर ग्रेटर देन 1 माने मार्केट रे इन्फ्लेशन है जदि इन्फ्लेशन है ताले नॉमिनल जीडीपी डेफिनेटली ग्रेटर देन द रियल जीडीपी होंगे नहीं नॉन इन्फ्लेशन केमती कहबो तबे यस मन पकाओ देखिए option 2 statement 2 is incorrect see statement 2 is incorrect the GDP deflator is the ratio of nominal GDP to real GDP and it shows change in price between the base year and the current year for example the deflator if it is 1.5 indicating that the price of the current year nominal GDP is 1.5 times is 1.5 times the base year price this means that nominal GDP is higher than the real GDP so nominal GDP sorry formula टिके बोलथिला तो कांसेप्ट थिला कोन
ना nominal GDP by real into 100, it's nothing but deflator formula. मन रहेगा GDP deflator greater than 1, nominal जदि 1.5 अछि, that means inflation है जाइए. Yes. Next question. Consider the following. Economic inequality among the people. How many of the above are not counted for the calculation of gross domestic product? हाँ पता है हमको. GDP calculate कला पाई कौन कौन count होउनी. Economic inequalities among the people. सेटा GDP रे calculate वाले आसुची. आसुनी. तो 1 to 3 अछि. Environment damage due to developmental activities. जदि एटा green GDP को होता ताले एटा को मु यूज करते. एटा भी calculate हो. But now it is not also accounted. Non-monetary exchanges in the form of unpaid work. Production of goods and services in an economy. चारिटा काट दियो. Living standard of the population. Total 4टा हबो. होंगी नहीं. केवल 4टा जीडीपी रे काउंट होती. होंगी नहीं. आउ तो किछि काउंट होनी. ग्रीन जीडीपी लिखिथिले मु इवन 2टा को भी कंसीडर करंदी. एनवायरमेंटल डैमेज सेटा ग्रीन जीडीपी रे आसो. टोटल जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल डैमेज जति केछि ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटी सेटा ग्रीन जीडीपी रे आसो. बट एटा खाली जीडीपी बचाछि. हबो. Okay, next question. Now number. Consider the following statement. The United Nations Development Program UNDP uses gross GNP gross national income per capita rather than gross domestic product per capita to compute the Human Development Index. Okay, the United Nations Development Program UNDP uses gross national income per capita rather than gross domestic product per capita to compute its Human Development Index. Unlike GNI per capita, the GDP of a country inflates the value of economic growth by including the income of residents from abroad. हाँ, सी भल से देखो. Unlike GNI per capita, GDP of the country, भल से देखो, GDP of the country inflates the value of economic growth by including the income of residents from abroad. GDP रे resident रो abroad रो residents रो जो पैसे सेटा भी इश्यू है के नहीं ना. तो अब भाई यार तो आंसर यहाँ देखिए दरकार भी नहीं. स्टेटमेंट 2 डायरेक्ट इनकरेक्ट होंगे नहीं. तो इथरो सिखिला कोन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से यूज करू जे ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा रेदर देन जीडीपी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेशन. मन रहबो काहे ना जीडीपी रे तमर केवल देशर टेरिटरी ता व्यतीत तो देश को पैसा भी आसुची ना रिमिटेंस रे. होंगे नहीं. लोक बाहर काम करके आसले भी सेटा भी तो देश को आसुची. सेटा भी तो से लोकर इनकम रे जीवो नेशनल इनकम रे काउंट हे जीवो. तो नेशनल इनकम काउंट करियार अछि नॉट की डोमेस्टिक प्रोडक्ट रो अमाउंट काउंट करियार अछि. सेतले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काउंट करूची के ना यूएनडीपी. मन रहबो. See, statement 1 is a fact. Statement 2 is a static core concept. होंगे नहीं. I will solve the last question. In the context of national income accounting, the gap between GDP, market price, and GBA at basic price indicates what? GDP at market price, GBA at base price. Yes. Gross value product at factor price is equal to GDP at market price plus tax minus subsidy थिला से पड़े minus tax plus subsidy जो. When both subsidies and indirect taxes decline in the same amount, when both subsidies and indirect taxes rise in the same amount, when product subsidies are increased, subsidies, see formula देखो ना. GBA generally हमें कौन कैलकुलेट करते फैक्टर प्राइस. तो फैक्टर प्राइस प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू जीबीए एट मार्केट प्राइस. तो जीबीए मार्केट प्राइस को नहीं जाओ जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ताले एपट को आसले कोन हबो माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी. तो सब्सिडी आर इंक्रीज्ड while tax direct tax decreased. The gap between GDP and GBA माइनस कर देले टैक्स माइनस सब्सिडी ये रहइबे जीबीए माइनस जीडीपी. जदि मु करली ताले टैक्स माइनस सब्सिडी तो टैक्स बढ़ुची सब्सिडी कमुची. The product subsidies are reduced while indirect tax are increased. Yes, मते तो बी देखा होते. I don't know. Answer is B. सी बुझी होची ना बुझी होनी मु कोन करली. Am I audible? Yes.
सी सेम कांसेप्ट ना एठी भी से यही कहूची सी देखो से कोन कहूची जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीबी एट बेसिक प्राइस प्लस नेट टैक्सेस मींस टैक्स माइनस सब्सिडी एया ना नेट टैक्सेस होची टैक्स माइनस सब्सिडी तो मु से या कली जीबीए एट फैक्टर प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस एपटे प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी थिला एपटे गले माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी देन से कहूची जीडीपी माइनस जीबीए रो गैप ताले जीडीपी माइनस जीबीए रो गैप ये होची कोन ना टैक्स माइनस सब्सिडी टैक्स माइनस सब्सिडी तो टैक्स बढ़ुची सब्सिडी कमुची टैक्स बढ़ुची सब्सिडी कमुची when product of subsidies are reduced and indirect taxes are increased सेटा ही तार गैप को देखेबो गैपटा जते बढ़िबो टैक्सेस सेते बढ़ुथो सब्सिडी सेते कमुथो हां कि नहीं यस एनी डाउट चलो मनी मैथ फास्ट होची मनी जतले मनी कथा कहूचे बाटर सिस्टम रो कांसेप्ट आछे बाटर सिस्टम रे कांसेप्ट कोन थिला ना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हवा दरकार बाटर सिस्टम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हवा दरकार सर्च कॉस्ट बढ़िबो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़िबो स्टोरेज ऑफ पेरिसेबल कमोडिटी इट इज वेरी डिफिकल्ट लॉस इन वैल्यू लाइक टमाटो वगैरह रखिथिबो देन सेगुडा नष्ट भी हेजिबो जेतले नष्ट हेजिबो तार वैल्यू भी लॉस होबो एंड इट डजंट इनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन की डॉक्टर इंजीनियर ए सब रो कांसेप्ट आसीबो ही नै जदी बाटर सिस्टम चलथांदा काहे आसीबो ए सब कांसेप्ट समस्त भाई मते आंब दरकार देन आंब पाई के कहबो कि मते चावल दरकार से सब कांसेप्ट रे चलीबे ओके डन वी ऑलरेडी नो दिस प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी मनी रो प्राइमरी फंक्शन इट कैन मेजर द वैल्यू इट विल बी बिहेविंग एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी एसटीडी इट विल स्टोर द वैल्यू ट्रांसफर द वैल्यू एंड डिफॉल्ट पेमेंट जोटा कि होची ईएमआई रो कंटीजेंट फंक्शन कोन ना इट इज यूज्ड एज बेसिक ऑफ क्रेडिट सिस्टम जो तमे कहउछ कि पैसा दबा नबा बैंक रे थोइबा ए सब कांसेप्ट सो बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एथिरे भी एटा यूज हो मनी रो कंटीजेंट फंक्शन रे देन इवोल्यूशन ऑफ जदी मनी देखिबो तो इनिशियली कमोडिटी मनी थिला देन मेटालिक मनी थिला करेक्ट नो कमोडिटी मनी रे कोपा भी नस्तला होल रो टीथ सी होल राइट गोल्ड नगेट्स ओड आस्तला इश्यू होची पेरिसेबल से मना नॉट यूनिफॉर्म नॉट प्योर फॉरेनर्स कैन रिजेक्ट आल्सो जो थे मेटालिक मनी असला मेटालिक मनी रे ट्रेडर एंड किंग रहले से माने स्टैम्प करूले एंड मार्क एंड ओल्ड गोल्ड नगेट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रस्ट तो गोटे कांसेप्ट असला ए जो मेटालिक मनी एथिरे गोटे कांसेप्ट असला फुल बॉडीड कॉइन आ गोटे टोकन कॉइन व्हाट इज फुल बॉडीड कॉइन ना जहार इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी ग्रेटर देन फेस वैल्यू टोकन कॉइन होजी जहार इंट्रिंसिक वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू मन रहबो फुल बॉडीड कॉइन ओके match the type of what is it? Next is mock one. Okay. Match the type of currency with the current list one and list two. Standard one intrinsic value equals to. Oh, this is wrong. Question. Next question. Muhammad Tughlaq was the first Sultan of Delhi Sultanate who introduced token currency. Okay. There was a surplus of silver availability in India and throughout the world in the 14th century. Which of the following is correct in respect of the above statement? Which one of the following? Okay. Which of the following is correct in respect of the above statement? Muhammad bin Tughlaq was the first Sultan of Delhi Sultanate who introduced token currency. And there was a surplus of silver availability in India throughout the world in the 14th century. Statement, if you don't know anything also, for example, I don't know anything, but still I know what is token currency. Token currency and full-bodied coin. See, jodi full-bodied coin dekhai janda na, was the first Sultan of Delhi who introduced full-bodied coin. And it is second statement goes there was a surplus. Silver jodi surplus achi taku mu token currency karibi.
बुझियो ना बुझियोनी मु कोन कहूची आमे राइट तो से पर्सपेक्टिव जदि मु देखिबी ताले स्टेटमेंट 1 टा रॉन्ग हिजिवो टोकन करेंसी ही नथिवो लेट्स सपोज स्टेटमेंट 2 is correct because there was a surplus of silver availability in India throughout the world and throughout the world in the 14th century throughout the world in the 14th century let's suppose this is an extreme statement but still I consider that okay India रे भी available अछि throughout world रे भी 14th century रे लगभग बहुत सारा सिल्वर थियो बहुत सिल्वर थिले ताले टोकन करेंसी होनी फुल बॉडीड करेंसी होबा कथा बट से टोकन करेंसी दे देछि तो 1 टा को मु जदि रॉन्ग मारिबी I don't know incorrect but answer is statement 1 is correct but statement 2 is incorrect let's see ता माने रिवर्स हे जिवो स्टेटमेंट 1 टा ठीक अछि बट एतिकी सिल्वर अमाउंट नथिला ओके लेट्स सी दीटा को तो साइमल्टेनियसली केबे ठीक होबनी सेतिकी तो मु जानि पारिथिली concept होची तुगलक was the first sultan of Delhi Sultanate who introduced token currency in 1330 AD fine statement 1 is correct he kept the value of token currency equal to silver tanka the inscriptions on these token coins were in both Arabic as well as Persian language there was a shortage of silver throughout the world in the 14th currency Kublai Khan issued paper money in China. In the same manner, Muhammad bin Tughlaq issued copper coins at par with the value of the silver tanka coins, but he was not able to prevent forging the new coins. So statement 2 is not correct. Why? Because Muhammad bin Tughlaq didn't establish proper control over the issuance of currency. The goldsmith began to forge the token coins on a large scale. Soon the new coins were not accepted in the markets. Finally, Muhammad bin Tughlaq stopped the circulation of token currency and promised to exchange silver coins for the copper coins. Many people exchange the new coins, but treasury becomes empty. According to Barani, the heap of copper coins remained lying on the roadside in Tughlaqabad. So statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Is सेतेबेले नथिला जोथि बेगी. See, either of them, A, B तो केबे होबनी because these two are contradict to each other. होंगे नहीं? These two are contradict to each other. जेहेतु एई दिटा को contradict करूचंदी तो एई थिरे आइदर एटा जदि ठीक होबो एटा होबनी या फिर एटा ठीक हेले एटा हो होंगे नहीं सरप्लस जदि रहबो ताले टोकन करेंसी दरकार नहीं जदि टोकन करेंसी अछि ताले सरप्लस दरकार नहीं ट्रू तो आमे माने कि चलले कि अच्छा से ताले मोहम्मद बिन तुगलक से गोटे टोकन करेंसी यूज करथिले नॉट कि काहेकि ना से ताले सिल्वर रो अवेलेबिलिटी कमी चलतिला जेतु से कॉपर स्टार्ट करूथिले यूज करिया पे देन लोक कॉपर भी नबा एक्सचेंज करिया भी बहुत टफ हैला तेणु कॉपर कॉइन गुड़ा भी हिंदी पढ़ी रहा तार भी फायदा है ना एनीवे तो बुझीला ना गोटे हिस्ट्री भी क्वेश्चन सॉल्व कले मन रहबो ठीक अछि नेक्स्ट पेपर टोकन एंड फिएट मनी तो लीगल टेंडर कोन इट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड फिएट मनी कोन इन फॉर्म्स ऑफ कॉइन करेंसी नोट्स और वर्चुअल करेंसी बेसिकली सी मनी मींस इट हैज टू हैव टू कंडीशन इट शुड बी मेजर द वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज Fiat money means the first condition it has to be a money. The second condition it has to be authorized or issued by a competent authority like king, queen, government or central bank. That is fiat money. Then legal tender means it should be a fiat money. If it is a fiat money, then the person should not deny to accept it. There is a compulsion. Refuse kar paribani. Bujhela. So November 2016 India Finance Ministry Department of Economic Affairs notifies to ban 500 and 2000 notes. 2016 इंडिया रे कहला फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये कहला कि हमें भाई 500 और 2000 टंका नोट ओडा को हमें बैन करूछु जदी बैन करूछु देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन दैट मींस वी आर रिमूविंग इफ गवर्नमेंट प्रिंट्स न्यू मनी और आरबीआई मोनेटाइजेशन माने कोन जदी गवर्नमेंट नुवा मनी प्रिंट कला तो गवर्नमेंट तो प्रिंट करे नहीं प्रिंट किया करे आरबीआई प्रिंट करे गवर्नमेंट कोन कर परिबो कॉइन रो मिंटिंग कर परिबो सो मोनेटाइजेशन मींस मार्केट को पैसा छाड़ीबा डिमोनेटाइजेशन मींस मार्केट रो पैसा विथड्रॉ करबा इज दैट क्लियर विथड्रॉ करबा इन द सेंस सर्कुलेशन ही न रखबा कंप्लीटली बैन करबा दैट इज डिमोनेटाइजेशन मनी मार्केट एनी डाउट हियर ओके द नेक्स्ट वन एटा भी ठीक इंटरेस्टिंग बहुत जल्दी सार दवा तो मनी मार्केट रे कोन ना इंडस्ट्री गोटे इंडस्ट्री को भाबिनो दरकार लाख टका ताले से कोन करबो ताको पैसा दरकार होजी से कोन करबो इशू सिक्युरिटीज इशू करिवो रेज मनी केमिति पैसा से आनिवो ना सिक्युरिटीज इशू करिवो फॉर एग्जांपल तमे सिंपली भाबो ना गोटे लोक को पैसा दरकार मते ना पैसा दरकार मु कोन कर परिबी मो घरे जहा আছে कागज पत्र बंधा रखी पैसा आनि परिबी होंगे नहीं यस जदी मु बंधा रखिली ताहले आई व्हाट आई इशूड सम बॉन्ड्स
मु बंधा रखी एंड हेतरे मु कहूची कि भाई ए कागजटा तुम बंधा रख एंड मते 100 टका दियो मु तुमको नेक्स्ट मास रे 108 टका सुध सहित सुझिबी सो दैट इज बॉन्ड और मु कहबी कि भाई मो घर रो शेयर नै जाओ जदि मु गोटे कंपनी चलाउथिबी मु कहबी मो कंपनी रो किछि शेयर नै जाओ मु शेयर दे दोची जेतले मो प्रॉफिट कमेबी हेई प्रॉफिट रे जेति परसेंट तमरो शेयर थिबो तमे हेति परसेंट नै जिवो सो इश्यू शेयर्स देन द पर्सन कैन बिकम ओनर तो शेयर रो कांसेप्ट रे चले ओनर रो कांसेप्ट शेयर रो कांसेप्ट को हमें कहू इक्विटी मार्केट बुझियाला इक्विटी हाउ मच इक्विटी यू हैव मींस हाउ मच शेयर यू आर हैविंग इन सम कंपनीज व्हेन वी से इश्यू bonds means you are creditor to the company creditor means मु ताकू पैसा धार देइची जदि मु धार देइची देन आकू कहा जाय डिबेंचर और डेब्ट तो आकू कहा जाय डेब्ट मार्केट गोटा इक्विटी मार्केट आ गोटा डेब्ट कैन आई से बोथ आर सिक्योरिटीज यस बुझियाला तो सिक्योरिटीज अंडर रे दीटा जिंस गोटा इक्विटी मार्केट जोटा शेयर रो कांसेप्ट गोटा डेब्ट मार्केट जोटा बॉन्ड रो कांसेप्ट कार डाउट अछि क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जितला हमें एति कहि देले नेक्स्ट होची कोन ना फाइनेंशियल मार्केट होची सिक्योरिटी टाइम पीरियड गोटे थाए फाइनेंशियल मार्केट रे गोटे सिक्योरिटी टाइम पीरियड थाए ये जो सिक्योरिटी टाइम टा एटा वर्षे ना वर्षे रु अधिक ना वर्षे रु कम तो गोटे कांसेप्ट है जदी टाइम पीरियड नेली वर्षे रु कम दैट विल बी कॉल्ड मनी मार्केट जदी मु कहली वर्षे रु अधिक दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी कैपिटल मार्केट जनरली वर्षे रु कम जोटा थाए वर्षे रु कम जोटा थाए सेटा को आरबीआई पर्सनली हैंडल करे फॉर एग्जांपल कॉल मनी नोटिस मनी ए सब कांसेप्ट ना आरबीआई हैंडल करे पर्सनली जदि वर्षे रु अधिक होला तार सेटा कैपिटल मार्केट रे पड़ेबो ताकू सेबी चेक करे लॉन्ग टर्म सेबी चेक करे ठीक अछि तो इक्विटी बका मनी मार्केट को की हैंडल करे आरबीआई जनरली हैंडल करे कैपिटल मार्केट को जनरली सेबी हैंडल करे ओके नेक्स्ट कांसेप्ट देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ बोरोयर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट फॉर एग्जांपल बोरोयर शॉर्ट टर्म लोन निया होची लेस देन 1 ईयर जदि 1 ईयर रु कम ताले गवर्नमेंट रो जदि बॉन्ड को हाला जो बॉन्ड ता लेस देन 1 ईयर मींस टाइम पीरियड जदि लेस देन 1 ईयर रहला गवर्नमेंट रो बॉन्ड को कहा जाउ ट्रेजरी बिल और सीएमबी कैश मैनेजमेंट बिल मन रहबो कैश मैनेजमेंट बिल जदि कॉर्पोरेट रो बॉन्ड ता तमे कहूचो लेस देन 1 ईयर ताल ताको तमे कहूचो बिल ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल पेपर और प्रोमिसरी नोट जहां तमे पकड़ खाली तमे सीएमबी मन रखो जेमति ट्रेजरी बिल थिला सेमति लास्ट को गोटे बिल जदि आसिला सीएमबी कैश मैनेजमेंट बिल सेटा होची गवर्नमेंट आ बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट्स कमर्शियल पेपर ए सब होची कहार ना कॉर्पोरेट रो कांसेप्ट लॉन्ग टर्म ग्रेटर देन 1 ईयर ताको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहउछो या फिर सोवरेन बॉन्ड कहउछो एंड कॉर्पोरेट रे सेटा सिंपल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर कहउछो इंटरेस्ट रेट जनरली जदि तमे कहबो कि गवर्नमेंट रो इंटरेस्ट रेट जनरली लोअर देन द कॉर्पोरेट रिस्क काहे ना गवर्नमेंट कहबो कि भाई गवर्नमेंट रिस्क कम ना जेतु रिस्क कम इंटरेस्ट रेट भी कम रहबो जहार रिस्क अधिक तार इंटरेस्ट रेट भी अधिक दबो से काहे ना इंटरेस्ट रेट एना दे देथियो 10% जना पइला कि 2 वर्ष पर आ से सुझी भी पारुनी किंतु तुमको इंटरेस्ट अधिक देथियो सो कॉर्पोरेट रो जनरली डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स बट जनरली कॉर्पोरेट रो इंटरेस्ट रेट जनरली इट विल बी मोर देन द गवर्नमेंट इंटरेस्ट Similarly, on the freshness of the security can be primary market and secondary market. Primary market कौन ना जोटी नुआ आउ फ्रेश सिक्योरिटी इशू हितिबो फिक्स्ड प्राइस थिबो नो नेगोशिएशन ता को जाय इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ करेक्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तो इनिशियल पब्लिक ऑफर जोतरे मु कहबी भाई फॉर एग्जांपल मु कहू कि परीक्षा सभा ना ए परीक्षा सभा को इन फ्यूचर रे मु गोटे एडा को बड़ा ब्रांडिंग करी कि देन मु कहू कि एडा को मोर बड़ा कंपनी बने कि प्रति कोण अनुकरण गोटे गोटे सेंटर थिबो एंड मु कहबी कि भाई आर बर्तन मते शेयर दरकार देन मु आकु बर्तन सेबी सहित रजिस्टर करबी भाई मु कहबी कि भाई मु इनिशियल पब्लिक ऑफर दोची एंड मोर गोटे शेयर रो दाम बिकॉज़ मते पैसा दरकार पैसा देले ही मु मोर सेंटर गोडा को एक्सपांड करेबी तो जे शेयर नेबो मोर गोटे शेयर रो दाम होची भाबिना 100 टका तो दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर सेतले फ्रेश अछि एंड ए फ्रेश टाकू जे किनिला फॉर एग्जांपल रिंकी किन देले रिंकी कोन करिवे बर्तन सेकेंडरी मार्केट को जिवे रिंकी तो बर्तन 100 टका मते दे देले तेन तांगु लागो भाई मोर काली पैसाटा दरकार एंड आजी भाबिना परीक्षा सभारू बहुत सारा पिला पाइले एक्सरसाइज जहां भी हला प्रमोशन बढ़िया हला मार्केट बहुत भलो चलची देन परीक्षा सभारू इनकम भी जनरेट हो ठीक अछि देन इनकम जनरेट हला पर प्रॉफिट भी होबो तो रिंकी जो अनुसार जो जति शेयर नै थिबे से अनुसार प्रॉफिट रो सेति परसेंट से प्रॉफिट रु पाई जिवे देन तांको लागला कि मोर पैसा दरकार मते ना बिकी दवार अछि देन बर्तन शेयर मार्केट रे जोटा 100 टका से किनिथिले बर्तन शेयर चलती गोटे शेयर रो दाम 140 टका
से जदी संग संग बिकी देबे त 40 टका प्रॉफिट भी पाइथिबे तेनु ताको लागला कि मु बिकी देबे बट बिकीबे काहाकू दैट इज व्हाट वी कॉल सेकेंडरी मार्केट दैट मींस वर्तमान शेयर मार्केट तुम जो खेल खेला होची ना कि भाई इंटरडे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग सेगुडा सब सेकेंडरी मार्केट रो कांसेप्ट किना बिका चलची किना बिका दैट मींस तुम आईपीओ जदी किनुचो दैट इज कॉल्ड सी सेम प्लेटफॉर्म रे तुम आईपीओ भी किनिबो सेम प्लेटफॉर्म रे तुम इंट्राडे ट्रेडिंग भी करिवो तो ट्रेडिंग रो कांसेप्ट होची सेकेंडरी मार्केट रो कांसेप्ट बुझियला जो थरे तुम बार्गेनिंग भी रहबो नेगोशिएशन रहबो सेकंड हैंड भी रहबो क्लियर नेक्स्ट कांसेप्ट गवर्नमेंट जदी गवर्नमेंट सिक्योरिटी देला ठीक अछि ताहाले फॉर एग्जांपल ज्योति जे प्राइमरी फास्ट जदी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्योति किनिला देन ज्योति को जतले पैसा दरकार हला ज्योति कोन कला सेकेंडरी मार्केट रे बिकी देला नाउ देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ बॉन्ड यील्ड कोन ना फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ज्योति को देतिला 100 टंका रे ठीक अछि ज्योति गवर्नमेंट कहूची 100 टंका नै तू मते किछि पैसा दे सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्योति को देला ज्योति 100 टंका गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखिला एंड 100 टंका काहा को देला गवर्नमेंट कहूची वर्षे परे मु तते 108 टंका देबी बुझियला वर्षे पर केते टंका देबो 108 टंका किंतु से गवर्नमेंट सिक्योरिटी रे कोठी ज्योति रो ना लेखा हबनी ज्योति कोन कहला देखिला 6 मास परे भाई मोर पैसा दरकार हलानी मैरिज गोटे अछि मु से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बिकिबा को चाहूची वर्तमान मु जते गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बिकिबा को चाहूची बिकिबी कोठी सेकेंडरी मार्केट रे होंगी नहीं ना तो कांसेप्ट इज जदी से गवर्नमेंट सिक्योरिटी रो डिमांड नाही ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी रो जदी डिमांड नाही ताहाले मते लोक मिलिबेनी जदी लोक मिलिबेनी मोर किंतु पैसा दरकार मु 100 टका खर्च करिछि मु जानि छी वर्षे रखि देले मते 108 टका मिलिबो बट मते वर्तमान इमीडिएटली पैसा दरकार मते से पैसाटा लॉक हे गला ना वर्षे तो मु कहूची कि भाई जो लोक भी मिलिबो जदी से 90 टका दबो भी मु राजी अछि एंड भाबिनी जदी डिमांड नाही ताले प्राइस कमिबो होंगी नहीं डिमांड नथले वैल्यू कमिबो डिमांड थिले वैल्यू बढ़िबो जेहेतु डिमांड नहीं मते गोटिए लोक मिलला से कहला भाई रखि छु गवर्नमेंट सिक्योरिटी मु कहले हां ना एरा तो कि नहु नाहंदी ठीक अछि तो दबा मु तो 90 टका अधिक दे परिबे मु कहले 90 टका आ देखु ना 5 टका खंडे दबो ना नाही भाई हबनी और ठीक अछि नै जाओ मोर पैसा तो इमीडिएटली दरकार 10 टका लॉस हो बचे नै जाओ मते दियो 90 टका देन सी मते कोन गला 90 टका दे दिला भाबिनियो आशीष मते आशीष नै गले एंड आशीष नै कि मते 90 टका दे दिले बर्तन आशीष 90 टका नेले बट 6-7 मास परे वर्षे जतले कंप्लीट हो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आशीष को केते टका मिलियो 108 टका ताले 18 टका से कमौ जदी 90 टका रे ताले यील्ड केते हला 18 5 20% जोटी मु जदी रखि दे गवर्नमेंट को 8% इंटरेस्ट बट सेकेंडरी मार्केट रे बिकी की यील्ड केते मिलिला 20% बर्तन तो मते ए जो 20% ए जो बॉन्ड यील्ड काहे की अधिक हैला बिकॉज़ डिमांड बढ़िला होंगी नहीं सॉरी डिमांड नथिला जदी डिमांड कमिबो बॉन्ड यील्ड बढ़िबो जदी डिमांड बढ़िबो बॉन्ड यील्ड कमिबो इज दैट क्लियर भाबिनियो ना ए सेकेंडरी मार्केट रे मु बिकिला बेलको 100 टका रो डिमांड प्रबल थांदा जने कहता भाई सी 90 टका कहूची ए छाड़ मु तते 95 टका दउची आउ जने कहूची भाई मु तते 100 टका दउची आउ जने कहूची भाई मु तते 104 टका देबी दिनु हां 104 टका आउ के 104 ऊपर जाउना ताले जहा को मु बिकिली से 104 टका मते देला देन से पाइबो केते टका 108 टका ताले प्रॉफिट केते देला 4 टका ताले 4 टका केते प्रॉफिट देला 108 टका इनटू 100 करो 4 टका 4 दूने 8 है 2 8 428 ये तो 4% भी कमी जिवो होंगी नहीं 25 चौक 100 दैट मींस 3.8 कि 3.7 भलिया परसेंटेज मिलियो जोठी 8% गवर्नमेंट इंटरेस्ट होदला यील्ड केते हला 3.7 काहे गेला बिकॉज़ मार्केट रे डिमांड छिला बुझियला तो मार्केट रे जदी डिमांड हबो बॉन्ड यील्ड बढ़िबो ना कमिबो डिमांड इंक्रीज हेले बॉन्ड यील्ड कमिबो डिमांड कमिले बॉन्ड यील्ड बढ़िबो बुझियला let's see with reference to the bond yields in an economic concept the following statement when inflation in the market economy is rising see market रे inflation अछि the bond yield may increases भाई ए क्वेश्चन टाको टिके होल्ड करि रखो may लिखाइ जाय ना तो हेई पारे न होई पारे ताकू तणु बेसी भाबनी कहिना ऑप्शन भी देखि दियो ऑप्शन टा एलिमिनेशन टाइप रो सेकंड when interest rate in the economy are decreasing the bond yield increases straight forward अछि एतरे may फेलाई interest rate in the economy are decreasing okay इकोनॉमी रे इंटरेस्ट रेट जदी डिक्रीज करूची दैट मींस लोन ऊपर इंटरेस्ट रेट जनरली टॉक्स अबाउट लोन और इंटरेस्ट रेट जदी डिक्रीज करूची
ताले लोक कोन करिवे प्रिफर करिवे लोन नवा पई होंगे नहीं प्रिफर करिवे लोन नवा पई फाइन ताले बॉन्ड यील्ड कोन हबो बर्तमान लोन जदि लोक नौचन लोक बाहरे पैसा अछि लोकଙ୍କ ପାଖରେ पैसा अछि गवर्नमेंट चाहूची बॉन्ड टा बिकिवा पई या फिर बॉन्ड यील्ड को लोक जदि बर्तमान बॉन्ड टा बिकिया पई चाहूची लोकଙ୍କ पाखरे जदि पैसा अछि ताले डिमांड भी बढ़िबो डिपेंड करे होल्ड करो एटा बहुत कॉम्प्लिकेट होची when total government borrowings is increasing the bond yield may increase when total government borrowings is increasing government ro jodi borrowing increase hela the bond yield may increase also देखो government ro jodi borrowing increase hela did it mention whether internal borrowing or external borrowing no it clearly says when total government borrowing is increasing the bond yield may increase what do you think 1 and 2 1 3 3 2 माइंड लगा एटा टिके टाइम लागिवो डेफिनेटली टाइम लागिवो बिकॉज़ बॉन्ड यील्ड रो कांसेप्ट when total government borrowing is increasing government borrow कला means government पाखरे पैसा नहीं government जदी borrow करूची ताहले काहाटू इंटरनल बोरोइंग कले गवर्नमेंट सिक्युरिटी से दबो जदी गवर्नमेंट सिक्युरिटी देला 100 टका 8 टका जदी से दावा करूची देन गवर्नमेंट रो तमु कोन लागुची तार डिमांड बढ़िबो ना कमिबो बढ़िबो गवर्नमेंट वर्तमान कहूची कि मु गवर्नमेंट सिक्युरिटी देबी गवर्नमेंट सिक्युरिटी बिकिबी डिमांड बढ़ी पारे जदी बहुत अधिक गवर्नमेंट सिक्युरिटी से बिकिया को चाह माने दबा को चाहूची मार्केट को देन कमी भी जाई पारे करेक्ट नो द बॉन्ड यील्ड मे इंक्रीज we cannot say when inflation in the economy is rising the bond yield may increase market रे जदी inflation अछि means market रे पैसा अछि then demand कमी वो bond yield रो लोक बॉन्ड रे खर्च करिवे पैसा मार्केट रे जदी पैसा अछि सी एगुडा कॉम्प्लिकेट एथि भाई होची कहार क्वेश्चन एटा एसएफजी लेवल 12 market रे पैसा अछि when inflation in the economy is rising the bond yield may increase market रे inflation अछि माने market रे पैसा अछि जदी market रे पैसा अछि लोक बॉन्ड रे पैसा टा यूटिलाइज करिवे ना से माने ट्राई करिवे अधिक रु अधिक जिंस किनिया पे जदी से माने अधिक रु अधिक जिंस किनिया पे ट्राई करिवे बॉन्ड रे पैसा लगेबेनी या फिर इंटरेस्ट रेट जेहेतु मार्केट रे अधिक पैसा अछि माने लोन सस्ता हो जायछि होंगी नहीं लोन सस्ता हो जायछि तो 1 and 2 जदि तमे देखियो सेटा दीटा को मिसा मिसी के अछि इन्फ्लेशन मार्केट रे अछि एंड इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी डिक्रीज अछि मार्केट रे इन्फ्लेशन सेति केला हो जेतले लोन चीप थिवो एंड लोन चीप ए तळे भी से कहू कि लोन चीप अछि होंगी नहीं करेक्ट बॉन्ड यील्ड इंक्रीजेस लोन जदि चीप अछि लोक माना बाहर पैसा अछि लोक माने आसी कि खाता रे थू नांदी कि बॉन्ड रे नबा पई चाहू नांदी ताले लोक चाहू जदि कोन जदि बॉन्ड रो डिमांड कमी गला बॉन्ड यील्ड बढ़ी जिवो लोक जदि बॉन्ड किनिया को चाहिबनी बॉन्ड यील्ड बढ़ी जिवो होंगी नहीं यस से पर्सपेक्टिव रे दुईटा तो ठीक अछि दुईटा ठीक अछि एंड एकटा तो ता सहित कॉम्प्लीमेंटरी अछि ट्रू yes because से मे दे दीजिए ना inflation in the तो से perspective रे I will go with A but answer is 1 and 3 let's see से तीन एटा कहू कि the total government borrowing is increasing the bond yield may increase okay when interest rate in the economy are decreasing the bond yield increases ठीक है माने टिके पढ़े पढ़ अछि एक्चुअली बट देखि नबा कोन लिखुची से कहू bond yield is the rate of return realized on a bond definitely bond yield does not include the principal amount ठीक अछि bond yield रे तामे interest rate divided by total amount कहू छै हंग नहीं it is nothing but the rate of return is not fixed it changes with the price of the bond option 1 is correct if inflation is rising or is expected to rise investor demand higher returns to product their real income since bonds generally offer fixed interest payment their attractiveness decline in the inflationary environment consequently the demand for bonds falls leading to a decline in the bond prices correct
कि जदि मो पाखे बहुत पैसा अच्छी मुझे बिजनेस लगेबी रादर देन बॉन्ड किणवे कहीं बिजनेस लगे मत लगुच इनफ्लेशन तो होची मार्केट रे मत अधिक इंटरेस्ट रेट मिलिबो प्रॉफिट अधिक हो जो थी कि से मुठी लगेबी ठीक अच्छे तो से परस्पेक्टिव ताले जदि मोर डिमांड टा न रहइबो मु कांसेप्ट एति पढितली भाई डिमांड कमिले बॉन्ड यील्ड बढ़िबो हो कि नहीं सो बॉन्ड्स जनरली ऑफर फिक्स्ड इंटरेस्ट तो जेहेतु वर्तमान मु कहूची कि डिमांड मोर जदि कमी गला देन द बॉन्ड यील्ड मे इंक्रीज करेक्ट तो एक एटा तो ठीक अछि ऑप्शन 2 से कहला कि इनकरेक्ट इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी और बॉन्ड प्राइसेस शेयर an inverse relationship why when interest rate falls investors seek instruments offering higher returns since existing bonds carry fixed coupon rates they become more attractive compared to newly issued bonds with lower interest rates बहुत से देखो interest rate in an economy or bond price shares an inverse relationship केमिति जदि इंटरेस्ट रेट से कहूची फॉल होची इन्वेस्टर सिक्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफरिंग हायर रिटर्न तो इन्वेस्टर देखुछंती किए से टाइम रे मते अधिक रिटर्न दोउची existing bond carry fixed coupon rate they become more attractive compared to newly issued bond with lower interest rate see this is a new concept eta jana nai eta को extra add करा होची compared to newly issued bond with a lower interest rate as a result the demand of bond increases demand for the bond see ये कहूची कि somewhat एवाने गोटा concept को रे जाउछंती कि bond increase हेबरे leading to a raise in price and fall in bond yields okay concept होची simple एठी मे आ एठी मे अछि बोली ये concept 100% होची बुझी होची 2 रे मे जदी थांदा ताले 2 टा भी आंसर हेता बट एठी concept मे रे नहीं एठी से straight forward कहूची बोली interest rate in the economy are decreasing the bond yield increases definitely तो concept होची bond yield रो concept when interest rate in an economy decreases जदि लोन कमी गला लोन रो इंटरेस्ट रेट कमी गला तामाने लोकन पाखरे लोन ना पाई सफिशिएंट पैसा जे लोक लोन नै गले से पैसा टाकू से माने बॉन्ड रे लगेबे कि लगेबे तमे एटा 100% कहि परिबो बुझियो जना बुझियोनी सी एठी से कोन ओडे नला स्टेटमेंट एठी से स्टेटमेंट ओडे नउची कि लोक बारे अधिक पैसा गला तेनु लोक देखिबे कि अच्छा एक्जिस्टिंग बॉन्ड रो फिक्स्ड प्राइस थिला किंतु जो नुवा बॉन्ड रेट ओडा आसु तार डेफिनेटली कम अछि आई थिंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कहू ना ना जनरल इंटरेस्ट रेट जतले तुमको लिखा बना इकोनॉमी रे सेटा होची लोन रो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट रो इंटरेस्ट रेट केबे लिखाई हो ठीक अछि सब बेले इंटरेस्ट रेट टाको लोन रो ही नबो when interest rate in the economy are decreasing whenever there is a interest rate mentioned if it is not mentioned in saving account interest rate or deposit interest rate you consider it as a loan interest rate fine तो concept होची कि भाबिने हम लोन रो इंटरेस्ट रेट देली तो जदि लोन रो इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी आर डिक्रीजिंग सी 100 टंका रे जोठु आगुरु 7 टंका मिलुथिला बर्तमान 100 टंका रे जदि मते 5 टंका मिलुची मु अधिक रो अधिक लोन नै जिबी एंड भाबो ना जदि एथिरे भी 5 टंका मिलियो ताल डिपॉजिट रे भी लोन इंटरेस्ट रेट कमी भी जिवो लोन रो इंटरेस्ट रेट कमुची माने डिपॉजिट रो भी इंटरेस्ट रेट कमिवो होंगी नै यस सो व्हेनेवर इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी डिक्रीजेस तो जदि ये अधिक रो अधिक पैसा देला या फिर डिपॉजिट करले भी मते कम पैसा मिलुची ताले बेटर मु डिपॉजिट काहे करबी मु कोठी अदर जगह रे इन्वेस्ट करबी जोथिरे हमें फर्स्ट ऑप्शन टाकू तो सेथिरे क्लिक कराई देले कि जदि मु अदर जगह रे इन्वेस्ट करैली ताले मोर बॉन्ड ऊपर डिमांड नहीं जोथि बॉन्ड रेट बढ़ी गला किंतु देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मु देखिबी कि जो गवर्नमेंट रो बॉन्ड थिला सेटा तो फिक्स्ड इंटरेस्ट थिला किंतु एबे जो बॉन्ड मिलिबो जदि इंटरेस्ट रेट कमी जाईची ताले नेक्स्ट जो बॉन्ड ओडा आसीबो से बॉन्ड रे भी तो इंटरेस्ट रेट कम मिलिबो बैंक रे जदि 3% इंटरेस्ट मिलुची ताले बॉन्ड रे भी से 4% नहीं दबो नुवा बॉन्ड रे होंगी नहीं तो से कांसेप्ट रे मु दरकार पड़ले मु बॉन्ड को भी डिमांड करिवि जोटा एक्जिस्टिंग बॉन्ड थिला गवर्नमेंट बॉन्ड ओडा तो जदि मु डिमांड अधिक कली ताले बॉन्ड रेट कोन हो बॉन्ड यील्ड कोन हो डिक्रीज हिजो डिमांड जदि मु बॉन्ड पुराना बॉन्ड ओडा कर डिमांड जदि अधिक कली बॉन्ड रेट डिक्रीज हिजो एठी जेतु मे लेखा हैनी ये जेतु डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूची कि बॉन्ड यील्ड इंक्रीजेस सेहि में एटा को मु रॉन्ग कर बुझियरा नेक्स्ट क्वेश्चन एटिकेट ट्रिकी दिला बट ठीक अछि the context of Indian economy consider the following statement the bond yield is likely to decrease when the price of the bond falls bond रो जदी प्राइस कमिला bond yield decrease करि जे
भाव भाव बॉन्ड रो प्राइस कमी गला तो डिमांड फॉर बॉन्ड इंक्रीजेस बॉन्ड रो जदी डिमांड इंक्रीज हबो बॉन्ड यील्ड कमी जिवो टूटा तो डेफिनेटली जदी टूटा डेफिनेटली आंसर ए बी सी भीतर थिबो डीटा तो कटि गला तो इंडियन रुपी वीकेंस अगेंस्ट द डॉलर इंडियन रुपी वीकेंस अगेंस्ट द डॉलर हाउ डज इट मैटर इंडियन रुपी वीकेंस अगेंस्ट द डॉलर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रे बॉन्ड यील्ड गवर्नमेंट कहिछि 100 टका तीनटा तो मते कोठी देखा भी जाउनी जदी भी होउछि तीनटा द इंडियन रुपी वीकेंस अगेंस्ट द डॉलर आकु तबे बॉन्ड यील्ड सहित केमति जोड़ियो भाबो these are little tricky questions okay एकटा मते को आगो एकटा सी एक रो पॉसिबिलिटी होछि 50% मात्र प्राइस ऑफ द बॉन्ड फेल्स जदी बॉन्ड रो प्राइस कमी गला व्हाट डज दैट मीन बाय प्राइस ऑफ द बॉन्ड फेल्स कोन तो मोला बॉन्ड रो प्राइस कमीला जो बॉन्ड ता 100 टका थिला से बॉन्ड ता बर्तन 90 टका आला यील्ड बढ़ियो यस वन टा कटि गला 90 टका हबो माने यील्ड बढ़ी जिवो तो ए डी कटि गला और रहला 2 3 एंड 3 2 ओनली तो तीन टा भी बची 75% टू टा भी अछि 75% तो बर्तन जदी मु ब्रह्मास्त्र रे मार देबी तो बी मार देबी आंसर 2 3 आई डोंट नो बट 3 टा को आउथर टिके फॉल्स हबो तो इंडियन रुपी वीकेंस अगेंस्ट द डॉलर इंडियन रुपी जदी डॉलर अगेंस्ट रे वीक होछि तो कोन हबो आगुरु ठीक अछि लेट्स सी आगुरु $1 इक्वल टू 100 टका थिला सॉरी 90 टका थिला लेट्स सपोज बर्तन $1 इक्वल टू 100 टका होछि बट जदी बॉन्ड आसुची बॉन्ड मार्केट रे सी भाबिनियो से कहूँ 100 टका देले बर्तन मु 8 टका इंटरेस्ट रेट देबी ये तो किसी इफेक्ट ही कोनी and likely to decrease there is a possibility somewhat there is a possibility that likely to decrease decrease एतिके हबो जेतले माने कहबे कि हमें अधिक रु अधिक बॉन्ड नबु अधिक रु अधिक बॉन्ड नबु तो मार्केट अनसर्टेनिटी अछि एंड लोक जदी डिमांड करिवे बॉन्ड ऊपर हां कि नहीं भाबो याकू मु मानि कि चलछु कि देयर इज ए मार्केट अनसर्टेनिटी करेक्ट प्रेजेंट केस रे भाबो ना देयर इज ए मार्केट अनसर्टेनिटी मु शेयर रे इन्वेस्ट कर परिबिनी बिकॉज़ मते डर लागुची ट्रू एंड जदी मु शेयर रे इन्वेस्ट करबिनी जोटा कि मते इनसिक्योर लागुची तो सिक्योरिटी रे मु कोथरे रिस्क कोथरे कम अछि बॉन्ड रे जदी मु बॉन्ड रो डिमांड बढ़े देबी देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट इट विल बी लाइकली टू डिक्रीज एम आई राइट तो से पर्सपेक्टिव रे जदी मु देखबी मु 2 3 मारुची आई डोंट नो द आंसर बट आंसर इज only 2 3 is not there let's see statement 3 option 3 is incorrect why when the Indian rupee weakens against the dollar foreign investors may withdraw capital due to exchange rate risk okay foreign investor तांको लागिबो कि exchange rate risk अछि which reduce foreign demand for bonds foreign demand जदी bonds रो कमी गला ताले bond price बढ़ी जरो ओके से सेपट साइड रो भाबुची ठीक अछि सी एक क्वेश्चन उडा तमे किछु कर परबेनी बिकॉज़ आमे भी जो पर्सपेक्टिव रे भाबु जे दैट इज आल्सो नॉट एमिति नो कि लाइकली टू डिक्रीज ना तो से पर्सपेक्टिव रे लाइकली टू बी डिक्रीज हे पारे फॉर एग्जांपल वीकेंड होची एंड मते लागुची भाई मु शेयर मार्केट रे इन्वेस्ट करबिनी मु गोटे सिक्योर मीडियम देखिबी जोटा कि बॉन्ड वाला चाहे बॉन्ड यील्ड भी कम मिलू एथिरे तो लॉस होवार चांसेस अधिक अछि जदी शेयर रे मु परे तो बॉन्ड रो मु डिमांड जदी बढ़े देबी ताले बॉन्ड प्राइस कमी जिवो बट सी आंसर कहूची 2 ओनली बट वी प्रिफरेबली आंसर 3 2 एंड 3 होबा कथा because likely अछि जदी डेफिनेटली थांता डिक्रीज होबा फॉरेन प्रॉब्लम कांसेप्ट फॉरेन यस से या तो कहले से आंसर भी सेटा देथिला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कांसेप्ट रु से सेटा को निकल जाउछ कि से माने पैसा उठेकी नै जिवे जेतु पैसा उठेकी नै जिवे डिमांड कमी जिवो सॉरी डिमांड बढ़ी जिवो पैसा उठेया पई तेनु बॉन्ड रेट कम जिवो which one of the following best describe the phases marking the close which was recently seen in the news okay marking the close okay there is a phase called marking the close current affair question moving towards contractionary monetary policy after long term accommodating stance manipulating the exchange rate of domestic currency through rapid sale order selling of long term bonds and purchasing short term bonds to reduce the bond yields
manipulating the closing price of stock through its purchase near the end of trading day. What do you think? Marking the close. Is moving towards contractionary monetary policy after long-term accommodating stance, marking the close, or is it selling of long-term bonds and purchasing short-term bonds to reduce the bond yields, or manipulating the closing price of a stock through its purchase near the end of trading day? I'm going with D. Is kahingi mu koji mu D ethi pai choose kali because it is kohutila ki marking the close तो मु प्रिफर कली क्लोज वाला ऑप्शन को चूज करिया पे कीवर्ड को ब्रेक डाउन करिके ठीक अछि एटी से कहूची मैनिपुलेटिंग द क्लोजिंग प्राइस ऑफ ए स्टॉक मार्किंग द क्लोज and manipulating the closing price of a stock through its purchase near the end of the trading day मते सेटा बेटर लागला तार आंसर होची marking the close refers to the market manipulation tactics where traders buy or sell securities near the end of the trading day, especially during the last few minutes before the market closes, to artificially inflate or deflate the closing price of a stock. It is a market abuse practice that involves manipulating the closing price of a security or financial asset to make a profit or avoid a loss. This practice typically involves executing large trades in a security just before the market closes in order to drive the closing price up or down. Therefore, option D is the correct answer. Relevance: marking the close strategy was allegedly used by trading firm Jane Street to influence stock price in their favor. Okay. तो एटा होची स्टॉक मार्केट रो गोटे कांसेप्ट मने रखि द जदी भी आसी गला ताले जणा আছে 4 नंबर क्वेश्चन with reference to the government bond yield consider the following: upgrade in sovereign credit rating of India, upgrade in sovereign credit rating of India, rise in public debt, reduction in repo rate by Reserve Bank of India, rise in inflation. Which of the above factors can affect the bond yields in the long term? এটা ট্রাই করো, এটা বড় ভালো কোশ্চেন টা বাজিরাম ব্লক গভর্নমেন্ট র বন্ড yield affect କରି পারে सी पॉजिटिव affect କରି परिबो नेगेटिव भी କରି परिबो हो कि नहीं एटी आ कोठी लिखा है कि भाई पॉजिटिवली affect करिवो कि नेगेटिवली affect which of the above factors can affect upgrade the sovereign credit ratings of India करिवो नहीं रेटिंग जदी कमी गला भाई गवर्नमेंट सिक्युरिटी रो लोकंकर डिमांड सी इट्स नाउ ऑल अबाउट गवर्नमेंट यील्ड केतले वेरी करिवो जतले डिमांड विषय रे तो डिमांड विपर मते पढियार अछि हां 1 2 3 4 मो हिसाब रे राइज इन पब्लिक डेब्ट जदी अधिक डेब्ट नेला ताले गवर्नमेंट बोधे रिस्क रे अछि से अनुसार डिमांड पड़ पड़ हिजो रिडक्शन इन द रेपो रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट कमी गला बैंक पाखरे सफिशिएंट पैसा अछि लोकंकु दवा पई लोक नेले देन डिमांड बढ़ाई देबे कमे देबे राइज इन इन्फ्लेशन किछि भी पारे आई विल गो विथ आंसर डी सी एटा तो पढि परबी नथिला हो कि नहीं ये माइंडसेट रही जो गेम बिकॉज़ कौन भी परिस्थिति जदि इट पॉजिटिवली अफेक्ट और नेगेटिवली अफेक्ट सेटा लिखि दांदा देन आई विल चूज अदरवाइज इट इज सेइंग व्हाट व्हिच ऑफ द अबव फैक्टर्स कैन अफेक्ट यस ऑल किछि भी पारे Anand, consider the following in respect of inflation and the bond market. Okay. A rise in inflation, whatever, okay, can lead to increase in bond yield. बताओ मार्केट रे इन्फ्लेशन अछि बॉन्ड यील्ड कोन होबो increase market borrowings by state governments, sale of government securities by the Reserve Bank of India. Government security जदि Reserve Bank of India सेल करिवो जदि किणंदा ताले डिमांड बढ़ी जांदा किंतु जदि सेल करिवो एवढा टिकेट की इन्फ्लेशन ऑफ बॉन्ड यील्ड जतले कहतो ना can lead to can this can possibly there is a possibility that it can lead to increase in bond yields भाबो बॉन्ड यील्ड सेति कोले बढ़िबो जतले डिमांड नथिबो
ହଁ କି ନାହିଁ? ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଅଧିକ ଇନଫ୍ଲେସନ ହବ, ଲୋକ ଯଦି ବଣ୍ଡ ନ କିଣିବେ ଦେନ୍ ଫସିଯିବେ। डिमांड न कले बॉन्ड यील्ड बढ़ी जाय पारे। यस, इंक्रीज मार्केट बोरोइंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लोको मार्केट बोरोइंग, स्टेट गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग करूची, लोकों को लागुची रिस्क अछि, देन यस तो रिस्क हेले मु काहे गवर्नमेंट रो बॉन्ड नेबी, काहे ना से गवर्नमेंट ही बहुत बोरो करूची। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेठी डर लागुची। आई विल गो विथ डी, आई डोंट नो, आंसर इज डी। ओके, ए राइज इन इन्फ्लेशन किसी एटी कैन पचारिची, कोनोसी भी केस रे पारे। राइज इन इन्फ्लेशन भाबो मार्केट रे पैसा अधिक अछि, तो लोक देखिए कि बॉन्ड रे कहीं पैसा यूज करबी, मते 8% मिल मिलियो, ताठो वाला मु कहीं निजे बिजनेस करबी। तो जदी से कांसेप्ट रे पळे आसिले, बिकॉज़ मार्केट रे पैसा अछि ना, इंटरेस्ट रेट सेमिति भी कम चारिआडे, तो से पर्सपेक्टिव रे से माने कोन करिवे, डिमांड करिवे ही नहीं। जदी डिमांड करिवे नहीं, ताले बॉन्ड रेट बढ़िबो। इंक्रीज मार्केट बोरोइंग बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जदी अधिक मार्केट बोरोइंग कला, लोक कोन भाबे, अरे भाई स्टेट पाखरे पैसा नहीं कि, जदी मु बॉन्ड टाकनी मते भी से सुझी परिबोनी, काहे स्टेट पाखरे तो पैसा नहीं। जदी भी सुझियो ताले से लोक को पैसा नेले सुझियो, ता माने रिस्की अछि, ताले डिमांड कमी जिवो, डिमांड कम बॉन्ड रेट पड़िबो। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जदी परचेस करंदा ना, गोटे ओपन मार्केट ट्विस्ट ऑपरेशन ट्विस्ट अछि, हो कि नहीं? ऑपरेशन ट्विस्ट रे सी बॉन्ड मार्केट रो बॉन्ड को परचेस करिया पई लागे, सो इथि से माने कोन, ए भाई बॉन्ड परचेस कला, गोटे काम कर, किनि दियो, नॉन मार्केट से विथड्रॉ करके नहीं जीवो, से टाइम रे अधिक डिमांड क्रिएट हो जाए। एठी तो सी जदी निजे बॉन्ड सिक्योरिटी गोटा परदान मार्केट को बिकुची, लोक मारे पैसा दिले लोक नेबे, जदी डिमांड नथिबो ताले बॉन्ड रेट बढ़िबो। से पर्सपेक्टिव 1 2 3 करेक्ट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following: how many of the above factors contribute to higher bond yield? इति कहले हायर बॉन्ड यील्ड बढ़िबो, फैक्टर को फैक्टर टू हायर बॉन्ड यील्ड हो। लोअर इन्फ्लेशन रेट, मार्केट रे इन्फ्लेशन रेट कम अछि, लोक मारे पैसा नहीं, जहाँ भी लोक मारे पैसा थिबो, लोकों पाखरे जदी पैसा नहीं, का माने कांसेप्ट कोन, लोअर इन्फ्लेशन रेट, जहाँ पाखरे भी पैसा थिबो से डिमांड करिवो। हायर फिस्कल डेफिसिट, लोअर इंटरेस्ट रेट, only one, only two, all three, but mate ko okay, why Susmita ma'am you are saying only one, which one you are saying? Yes, one, kahin ki seita hi higher bond yield ko dabo। हायर बॉन्ड यील्ड मींस डिमांड नहीं, इन्फ्लेशन जदी रेट कमी थिबो डिमांड रहइबोनी। मार्केट रे इन्फ्लेशन रेट कम अछि, दैट मींस मार्केट रे ही पैसा नहीं, पैसा सब सिस्टम रे अछि, लोक मारे पैसा नहीं। जदी पैसा सिस्टम रे अछि, इंटरेस्ट रेट ताले सेते कोन हेतिबो, लोन ऊपर इंटरेस्ट रेट अधिक थिबो, जोदि कि मार्केट को लोक लोन नौ ही नांती, करेक्ट। तो से पर्सपेक्टिव इन्फ्लेशन जहां पाखरे बर्तन पैसा थिबो, से चाहूथिबो कोन कि मु बॉन्ड रे यूज करिवि ना शेयर रे। जदि पैसा अधिक था से शेयर कथा भाबि पारंदा, बर्तन पैसा नाही, जहां पैसा अछि सिस्टम रे, इन्फ्लेशन रेट कमी जाइछि। या फिर आउ को एंगल रो जदि भाबि पारतो मते को, लोअर इन्फ्लेशन रेट, मार्केट रे पैसा नहीं, या फिर डिमांड साइड रो सेटा सप्लाई साइड रो कोन ना, सप्लाई साइड रो अधिक प्रोडक्शन हो, अधिक जदि प्रोडक्शन हो तो ताले भी मु कंपनी पर केमिति लगै भाई, तार अधिक प्रोडक्शन पैसा तार भी कम, माने बाबा जोटा आलू किलो 20 टका थिला, आज आलू किलो 10 टका हो, तो आलू कंपनी रे मु थोड़ी शेयर रे लगे परबी। इन्फ्लेशन लो अछि, बॉन्ड डिमांड विल इंक्रीज, बॉन्ड रो डिमांड जदि बढ़ियो बॉन्ड यील्ड कमी जिवो, करेक्ट नो, यील्ड विल बी लो, करेक्ट। सेकंड, टू, हायर फिस्कल डेफिसिट, जदि हायर फिस्कल डेफिसिट रहला मींस गवर्नमेंट रो बोरोइंग बहुत अधिक, लोकों को डर लागिवो, डिमांड कमी जिवो, बॉन्ड यील्ड बढ़ी जाय पारे, ट्रू, यील्ड विल इंक्रीज, टू, ठीक अछि। लोअर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट जदि लो हैला, लोकों पारे अधिक पैसा थिबो, डिमांड कम हेले,
yield will increase 2, 3. So only 2 I go for. Answer is only 1. Let's see. A bond yield is return of capital investor by an investor. Okay, the yield matches the bond's coupon rate when the bond is issued. Though the yield often changes while a bond is outstanding, bond low. Inflation rate. When the inflation rate is high, the purchasing power of money fails. As a result, investors demand higher returns to compensate for the loss in the value, which increase the bond yield. Correct? Inflation जदि अधिक अच्छी market रे, most important. When the inflation rate is high, inflation rate high अच्छी, the purchasing power of the money fail. Correct? तो इनफ्लेशन जदि अधिक अच्छी ताले पर्चेसिंग पावर तमर कमी जाउची आगुरु 20 टका रे जदि तमको किले मिलुथिला आलू एबे 20 टका रे आ किले मिलिबो भी नहीं बिकॉज़ 20 टका रे बर्तन अध किलो आलू मिलिबो आलू किलो 40 टका हे जायछि ताहले एज ए रिजल्ट इन्वेस्टर डिमांड हायर रिटर्न टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस इन वैल्यू तो इन्वेस्टर कहबे कि भाई हमको अधिक रिटर्न दरकार तो जदि अधिक रिटर्न दरकार ताने से बॉन्ड किनिबे कि नहीं हां कि नहीं बॉन्ड रो तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ना तो बॉन्ड रो डिमांड कमे देबे जदि बॉन्ड रो डिमांड कमे देबे बॉन्ड रेट बढ़ि जिवो ट्रू हां कि नहीं तो सेटा आंसर हबनी सो से कहूची कि लोअर इन्फ्लेशन रेट हायर इन्फ्लेशन रेट हेले बॉन्ड यील्ड बढ़िबो लोअर इन्फ्लेशन रेट हेले बॉन्ड यील्ड बढ़िबोनी जोटा हमें अलग कहले स्टेटमेंट 2 when the inflation rate is low bond yields tends to decrease लोको डिमांड करिवे हां से या तो हमें कहउतले ना करेक्ट नो सेटा भी ठीक अछि when the inflation rate is low bond yields tends to decrease the inversely relationship stems from the fact that bond yields are influenced by expectation of inflation and interest rate. Lower inflation generally leads to lower interest rate and consequently lower bond yields. So point 1 is not correct. That is fine. Fiscal deficit. A high fiscal deficit means the government needs to borrow more money. This increases the supply of bonds in the market. Higher supply can reduce the bond prices and raises bond yield. So point 2 is correct. What is this? Point 2 is correct. Then lower interest rate, lower inflation rate. Third ta lower interest rate. Point 3 is not correct. Oh, what is this? Interest rates set by the central bank. If central bank increase interest rate, newly issued bond offer better returns. To match those, existing bond must offer higher yields, so their price falls and yields rise. A lower interest rate set by a central bank typically leads to decrease in bond yields. Because लोको अधिक डिमांड करिया को लागिबे सेटा को when the central bank lowers interest rate the price of existing bonds tend to increase making them more attractive to investors. These increase the bond prices cause to bond yield to fall. So point 3 is also not correct. Point 3 lower interest rate जदि lower interest rate हबो lower interest rate कम अछि डिमांड बढ़िबो कंट्रीब्यूट टू हां या ना ताले 2 काहे हमें दीटा काहे मारले ओनली वन हवा कथा हायर बॉन्ड यील्ड केबे मिलबो लोअर इंटरेस्ट रेट हेले डिमांड बढ़िबो माने बॉन्ड यील्ड कमिबो करेक्ट डिमांड बढ़िबो माने बॉन्ड यील्ड कमिबो ताले गोटी केवल 2 टा next consider the following weakening of the rupee increase in export crowd out private investment rise in bond yields which of the above are most likely short term effects of monetization of deficit in India please explain 3 again okay see lower interest rate कम अछि लोकों पाखरे अधिक पैसा थिबो सी जेतले सी मु तो स्टार्टिंग को कहि भाई जेते बेले इकोनॉमी रे इंटरेस्ट रेट मानिबो इट इज ए इंटरेस्ट रेट ऑन लोन सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कमे देला बुझियला ता माने कोन लोन रे इंटरेस्ट रेट कमी जिवो ट्रू लोन रे इंटरेस्ट रेट जदी कमी गला ता माने लोक अधिक लोन नेबे जदी लोक अधिक लोन नेले से माने बॉन्ड को काहे डिमांड करिवे से माने ता निज बिजनेस रो लगेबे ना जदी डिमांड कमी गला बॉन्ड रो जदि बॉन्ड रो डिमांड कमी गला it will contribute to higher bond yield yes तो तीन टा ठीक लागछि लोअर इंटरेस्ट रेट एबव द फैक्टर्स कंट्रोल जदि बॉन्ड रो डिमांड कमी गला
लोअर इंटरेस्ट रेट ताले से माने डिमांड करिवे हायर contribute to higher bond yield. How many of the above factors contribute to higher bond yield? Okay. Lower interest rate लोकंकर पाखरे अधिक पैसा आप जदि लोकंकर पाखरे अधिक पैसा अछि ताहाले से माने डिमांड करिवे अधिक जिनस अलग जिनस बॉन्ड ऊपर हेते डिमांड करिवे बट एठी से कहूची कि एक्जिस्टिंग बॉन्ड सहित कांसेप्ट से नेकी लिंक करिवे कहूची कि एक्जिस्टिंग बॉन्ड आ न्यू बॉन्ड तो न्यू बॉन्ड रो जदि न्यू लोकन को न्यू बॉन्ड किनिया गले लोकंकर न्यू बॉन्ड ऊपर इंटरेस्ट रेट अधिक दबाक पड़िबो गवर्नमेंट को जदि अधिक दबो ताले जो ओल्ड बॉन्ड गुडा को से कहूची तार भी यील्ड टाको से पड़ेबो जदि यील्ड टाको पड़े माने ता ऊपर अधिक इंटरेस्ट रेट से दबो जदि अधिक इंटरेस्ट रेट दबो ताले लोक नेबे जदि अधिक इंटरेस्ट दबो ताले तार डिमांड बढ़िबो जदि डिमांड बढ़िबो ताले बॉन्ड रेट कमिबो बोली एटा एक्सप्लेनेशन दउ सी आई एम नॉट सैटिस्फाइड विथ दैट एक्सप्लेनेशन मो हिसाब रे कि जदि लोकन बाहर अधिक पैसा अछि से माने बॉन्ड ऊपर पैसा खर्च करिवे ही नै से माने अदर परचेज कमोडिटी किनिया ऊपर परचेज रे से खर्च करदे प्रिफरेबल तो जो थिरे कि बॉन्ड रो डिमांड ता कमिबो एंड बॉन्ड रेट बढ़िया कथा सो मो हिसाब रे दीटा ऑप्शन होता कथा ऑप्शन 2 एज वेल एज ऑप्शन 3 बट ठीक अछि ए केस रे मु भी एना किछ कहि पारुनी से तारा आउट एक्सप्लेनेशन दे ठीक अछि तो ताको साइड करके रखि था बट ए क्वेश्चन सॉल्व करो सी बट आमे माने के चलिबा कि लोअर इंटरेस्ट माने बॉन्ड रेट बढ़िया कथा माने जदि कैन वगैरह रे देछि ना देन इट इज ए पॉसिबिलिटी दैट बढ़िबो consider the following weakening of the rupee increase in export crowding out of private investment crowding out एथरो यूपीएससी रे क्वेश्चन भी बतला rise in bond yield which of the above are most likely short term effects of monetization of deficit इंडिया रे डेफिसिट है जाई एंड शॉर्ट टर्म रे मते पैसा मार्केट को छाड़ दवार अछि कोन लागो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डेफिनेटली गोटे आंसर हे पारे बट एक्सपोर्ट टा को इंक्रीज संगे संगे तुम शॉर्ट टर्म रे करि परिबो की likely short term effects of monetization ऑप्शन देखो 1 1 1 2 2 मात्र अछि 50% 3 3 3 4 4 4 1 3 4 75% अछि weakening of the rupee तो रुपी को जदि मु weakening कर देली जो जिनसटा 100 टंका दिला सॉरी $1 इक्वल टू जदि 50 थिला आज $1 इक्वल टू 100 कर देबी रुपी को सफिशिएंटली weakening कर दे short term effect of the short term effect of monetizing of the debt oh monetizing deficit means the deficit already ହେଇची मु पैसा मार्केट को छाड़ी देली मार्केट रे अधिक पैसा हेगला हो कि नहीं ये रिवर्स क्वेश्चन which of the above are most likely short term effects of monetization of deficit deficit को monetization करिया पई मार्केट को अधिक पैसा छाड़ देली वर्तमान मार्केट रे अधिक पैसा अछि जदि मार्केट रे अधिक पैसा थिबो ताहले रुपी वीकेनिंग हबो हो कि नहीं डेफिनेटली जहार सप्लाई अधिक बढ़ियो से तार वैल्यू कमिवो आमे राइट वन टा तो करेक्ट अछि जदि वन करेक्ट अछि आंसर बी टा तो कटि गला देन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट मनी जदि मार्केट रे अधिक एक्सपोर्ट अधिक हो बोली कोन गारंटी अछि कि शॉर्ट टर्म रे गारंटी नहीं क्राउड आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड क्राउड आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट आसी कि क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट राइज इन बॉन्ड yield राइज इन बॉन्ड yield मार्केट रे जदि अधिक पैसा रहिबो बॉन्ड रो डिमांड बढ़िबो कि करबो लोक बाहर अधिक पैसा अछि लोक बॉन्ड रो डिमांड कहीं करबे राइज इन बॉन्ड yield बॉन्ड लोक नेबे जेहेतु बॉन्ड लोक नेबेनी ताले गवर्नमेंट कहबो कि नुवा बॉन्ड छाड़ीबी जहार प्राइस कमे की छाड़ीबी देयर इज ए पॉसिबिलिटी से पर्सपेक्टिव मु कहू जेहेतु आर पूर्व स्टेटमेंट मु पढी दिली सेही भलिया तो चारिटा को जदि मु ठीक कहबी क्राउड आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट केते बेले होंदी जेतेले गवर्नमेंट आसी कि बैंक गुडा को पैसा न भाई ट्राई होंगी नहीं पर लोगों बाहर पैसा अछि जदि मार्केट रे लोगों बाहर पैसा अछि मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट या फिर लोग बैंक रे रखिले क्राउड आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देयर इज ए पॉसिबिलिटी यस एई बारे गवर्नमेंट आसी जदि पैसा में गया पई ताले बैंक गुडा करू कहीं ना बैंक बाहर पैसा अछि देयर इज ए पॉसिबिलिटी तीनटा भी हे पारे सो 1 3 4 तो नहीं कोठी तो 1 4 अछि आई विल गो विथ सी आंसर इज 1 2 3 4 ऑल मोस्ट likely it is short term effects of monetization सब ही पर
एक 3 4 मते लागुला बट दुईटा मते लागु नथला काइना शॉर्ट टर्म पैसे कहतिला संगे संगे एक्सपोर्ट करियो बोले मते किछ लागु नथला monetization of deficit refers to the central bank financing government spending by directly printing money. The process has broad economic effects, including the implications for currency value, export, inflation, and bonding. Weakening of rupee definitely have a monetization increase the money supply, which can lead to the loss of confidence in the currency. In short term, this can cause the rupee to depreciate against other currency. Fine. A weaker rupee makes import more expensive. Correct? କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆଗରୁ ତେଲ ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଲ କୁ $1 ଦଉଥିଲ ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜି ତମେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ତ ହବନି ତାହେଲେ ଯାହା କରିବ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ ସୋ ପଏଣ୍ଟ 1 ଇଜ କରେକ୍ଟ increase in export kona na a weaker rupee makes import more expensive and can exacerbate inflationary pressure. So point 1 is correct. Increase in export, a weaker rupee enhance the competitiveness of Indian goods in international market by making them cheaper in the short term. Correct. This can potentially boost exports, provided global demand and favorable domestic currency industries are competitive enough. जोटा कि China का. So point 2 is correct. Crowd out private investor printing more money without a corresponding increase in the production of goods and services result in higher inflation. It initially provides liquidity, but its inflationary impact, higher interest rate, and reduce real savings and crowd out private investors. Over the time, it can stifle economic growth and reduce long-term capital formation. So point 3 is also correct. Point 3, point 4 is A. तो तीन तो मत ठीक लगला क्राउड आउट हो प्राइवेट इन्वेस्टर्स बट से जो कहूँ कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट सेटा मत शॉर्ट टर्म पाई लागु नथला लॉन्ग टर्म पाई लागुला बट से कहूँ शॉर्ट टर्म पाई भी सेया ही होगा तो ठीक अछि द लास्ट क्वेश्चन इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट एक्शन ऑफ द यूनाइटेड इट्स हां एटा भाई एटा सीएससी प्रीलिम्स 2021 रो आकु ट्राई करो Indian government yields are influenced by what? 0% influence will be influence, 1% will be influence, 0.001 will be 1. Correct? No. The answer कौन होगा? I will actually बुझी कि मुझे D मारी भी D ही होगा ना? होंगे किसी भी करो ताले bond yield influence ही होगा. Inflation and short term interest rate. Positive negative को तो पता नहीं. Action of the Reserve Bank of India, action of the United States Federal Reserve. से माने जब बॉन्ड नहीं की पढ़े आप ट्राई करें तारे बॉन्ड यील्ड इन्फ्लुएंस होगा एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जति से पैसा पत्र कोटा कोटी कला ताले जो माने बॉन्ड किनि दिए से माने फटाफट करिवे इन्फ्लेशन जति मार्केट रे या फिर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जति चेंज होला ताले भी प्रॉब्लम होबो तो ठीक अछि तो बॉन्ड यील्ड रो जति क्वेश्चन आसे एई भले किंतु एक्सपेक्टेड की एते टॉप रो क्वेश्चन ओपीएस रे तो न दबार चांसेस बट कांसेप्ट होछि बॉन्ड यील्ड इज रिलेटेड टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड बढ़िबो बॉन्ड यील्ड कमिबो डिमांड कमिबो बॉन्ड यील्ड बढ़िबो बुझियरा bond price is directly proportional to 1 by bond yield means bond price is indirectly proportional to bond yield मन रहबो बात देखो bond price is directly proportional to demand तो bond price जति कमिबो डिमांड भी कमिबो bond price बढ़िले डिमांड भी बढ़िबो बॉन्ड प्राइस मींस 100 टका से 108 टका दबो बोली बोलती 108 टका से जदी 110 टका मु देबे डिमांड भी बढ़ियो यस नेक्स्ट कंपनी रो कांसेप्ट विल टेक ए ब्रेक मुंडो टिके ठंडा करिया में कहीं नहीं बॉन्ड फंड रे फस जाइतलो चलो सो विल मीट इन इवनिंग देन इवनिंग अराउंड 8 मीन टाइम यू कैन रिवाइज योर अदर स्टॉक्स ओके चलो 8 रे देन हमें बढ़िया कंपनी टा को रिवाइज करबा देन बैंक्स गुडा बैंक रो जति की जहा कांसेप्ट अछि कि ये कोन केते परसेंट कहारो केते एसएलआर कोटा ए सब से सब सरीबो देन सेटा सरदला परे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल रेपो रिवर्स रेपो एगुडा सब सरदवा ठीक अछि सो विल मीट एट 8 फाइन चलियो ना चलो थैंक यू एवरीवन So we discussed till different sectors, primary sector, secondary sector, tertiary sector, and activities also. So the next part is companies.
So what are companies? So there are two types of companies. One is government and one is non-government. So government company कौन and non-government company कौन? ना government company माने जो थी greater than 50% रो share थीबो. जदि greater than 50% share अछि जोटा कि government रो, then that will be considered to be government company. There can be two types. One is private limited, one is public limited. So whenever you will see public limited, that means this public limited can be also two types. One is listed and one is unlisted. See, government company means greater than 50% shareholding. Now, government company private limited ही पारे right? Yes, government company even private भी ही पारे, जोटा कि PSU वाला concept, private limited company वाला भी concept रे भी रही पारे, but important होची greater than 50% shareholding जदि थिबो government रो, then सेटा government company बोली कुहा जिवो. जदि private रो ताले 51% भाबिनियो government रो shareholding अछि, that means government company. Public company, public limited means if any company which has having more than 51% or 50% of government shareholding, then it will be considered to be public company. But concept होची ए public limited रे भी listed अछि and unlisted भी अछि. Listed हेले जोटा से बी listed registered हेतिबो and listed हेतिबो means share issue करे परिबो. Unlisted माने जो माने public रे बर्तन share बांटी परिबे नै. Similarly non government रे भी जो थरे government रो shareholding less than 50% अछि सेटा प्राइवेट लिमिटेड भी पारे, पब्लिक लिमिटेड भी पारे, पब्लिक लिमिटेड टा लिस्टेड भी पारे, अनलिस्टेड भी पारे. सो सिंपल कांसेप्ट, आइदर गवर्नमेंट रो शेयर अछि या फिर नाही, से लिस्टेड हे पारे या फिर प्राइवेट हे पारे, सॉरी प्राइवेट हे पारे या फिर पब्लिक हे पारे. प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जोडा जनरली से माने लिस्टिंग फिस्टिंग को जानि से माने जस्ट 4-5 जण मिसी की ही से माने काम करछथि. बट पब्लिक लिमिटेड जदि दैट मींस पब्लिक रे से माने शेयर इश्यू करिसथि या फिर करिना. दिस इज द ट्रुथ. ओके, means करी नाहंदी माने आगु फ्यूचर रे करि पारंती. तो कांसेप्ट कोन, व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड? ना प्राइवेट लिमिटेड मींस लेस देन 200 people. It restrictions of transfer of shares not available to general public, that is what we call private limited companies. Okay, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट रो आउ गोटे कांसेप्ट होजी, जदि गवर्नमेंट इनिशियली 100% थिला, गवर्नमेंट 26% बिकी देला, लेट्स सपोज, then that we call it as disinvestment. Still government majority is sharing holder. बिल्स 100 रु जदि 26 बिकी देला, आहुरी स्टिल अछि तापर गवर्नमेंट पाखरे केते 74%. एबे भी गवर्नमेंट पाखरे मेजॉरिटी शेयर होल्डर अछि बिकॉज़ गवर्नमेंट हैज मोर देन 50%. जदि 74% रु फर्दर आ 25% बिकी देकी 49% को पळे आसला, एठी जोटा वर्ड टको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहउले, एठी हम कहउचे स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और वी कॉल इट एज प्राइवेटाइजेशन. So private company now has the majority shareholder, that's what we call as privatization. तो 100% रु जदि 10% बिकी देला private company को, it doesn't mean that it is a privatization. What it says, it is called disinvestment. But जदि 49% को गवर्नमेंट पळे आसला and private company पाखरे 51% हे गला, आगुरु गवर्नमेंट पाखरे 100% दिला, then it is called strategic disinvestment or we call it as privatization. Is that clear? Is that clear? Fine. Next concept, financial intermediaries. तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज रे हमें कहउचे गोटे होची बैंक आ गोटे नॉन बैंक. सी मैक्सिमम क्वेश्चन जदि बनिबो 8 हुई बनिला भले मते फील होची, आ अदरवाइज ओपीएससी जनरली ए टॉपिक टा ठीक इंपोर्टेंट टॉपिक टा, ठीक अछि. कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन पचारि पारे न पचारि पारे, आई डोंट नो, बट जनरली दिस इज इंपोर्टेंट पिलर. दिस इज इंपोर्टेंट पिलर, फाइनेंशियल फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज. सी देयर आर टू वेज. Financial intermediaries can be formal and it can be informal also. So we are not talking about informal. Informal माने जोड़ा money lender कि एपटा अछि x एपटा अछि y, then आंको भीतर गोटे ट्रांजैक्शन होउची, then एठी मझिरे बसिची मनी लेंडर. तो ए मनी लेंडर आ पाखरे कोन अछि माने ये कोठी रजिस्टर्ड हे कि नाही, आकु कहि रेगुलेट करू ना. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज informal financial intermediaries. But we are not going to talk about them. We are going to talk about what? We are going to talk about formal financial intermediaries. When we are talking about formal, that means there has to be some regulator, correct? No, semane kichi rules regulation follow koruthe. So we are having banks and we are having non banks, though we are calling it as non banks, but still they are registered, ठीक अछि. So now if you see, bank under रे आछि हमर commercial bank आ गोटे आछि cooperative bank. कमर्शियल बैंक कथा कहूचे, we have public private and foreign, जोड़ा कि यूनिवर्सल बैंक भी कहूचे, यूसीबी यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक होंगे नहीं, यूसीबी, and we have differential bank also. So public private foreign companies, sorry foreign banks, those are universal bank. Universal bank रो निजर फीचर अछि, okay, and there are differential banks like RRB, LAB, SFB and PB. Regional rural bank, local area bank, small financial bank and post payment bank.
LAB not required, but at least RRB, SFB, PB you should be very clear. Cooperative bank भितर there is rural cooperative banks and urban cooperative bank. जेतले urban cooperative bank होचे सेतले urban cooperative रो single state भी अछि and multi state भी अछि. Means गोटे urban cooperative सी rural cooperative bank multi state हे परिबोनी काहे ना से माने तो rural रे कोलछन ना भाई सिटी को पर जाई भी परना. But urban cooperative bank they can be multi state also. But cooperative bank there is a possibility that they can ask because recently सब चेंज हेची cooperative merger भी हेची ओडिसा ग्राम्य बैंक वगैरह मिसिची राइट. तो टिके भलसे देखु था कोऑपरेटिव बैंक मो जतले कहूची. ओके तो कोऑपरेटिव बैंक अर्बन गोटे रूरल गोटे. तो अर्बन रे सिंगल स्टेट मल्टी स्टेट अछि, रूरल रे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस रे दीटा वे रे हम याको डिफाइन करूचे. शॉर्ट टर्म लोन वाला दबा एंड लॉन्ग टर्म लोन दबार कांसेप्ट रे दीटा जगह रे डिफाइन करूचे. शॉर्ट टर्म लोन रे कोन ना तमर पूरा तळे आसी गला पीएससीएस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ता पाखरे जतले टिके अधिक पैसा हबो सेटा जीवो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को ता पाखरे जतले टिके अधिक पैसा हबो सेटा जीवो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को. लॉन्ग टर्म रे हमें कहूचे प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक. सी लॉन्ग टर्म कथा छाडी दियो बट एटलीस्ट तमे शॉर्ट टर्म कथा देखो. तो हमर कांसेप्ट होची अर्बन गोटे अछि रूरल गोटे अछि कोऑपरेटिव बैंक भितर. हमें आगु फर्दर आर क्लासिफिकेशन रे डिटेल रे देखियो. नॉन बैंक रे एआई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो एआईएफआई एथिरे एग्जिम नाबार्ड एनएचबी सिडबी एंड एनएबीएफआईडी वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम पाई बिकॉज़ नाबार्ड ऊपर क्वेश्चन आसा छै. एग्जिम नाबार्ड एनएचबी सिडबी एंड एनएबीएफआईडी. देयर आर प्राइमरी डीलर्स आल्सो लाइक एचएसबीसी जो माने कोन करती म्यूचुअल फंड वगैरह से माने सब पळे आसे प्राइमरी डीलर्स रे. देन एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज सो वी विल टॉक अबाउट देम. ओके एनबीएफसीज. So now if you talk about bank रो हबो कोन ना ब्रांच थिबो. So we will start with universal bank. Universal bank को माने हेबे ना पब्लिक बैंक हे पारे प्राइवेट बैंक हे पारे या फिर फॉरेन बैंक हे पारे. ए है ना जेतला हम यूनिवर्सल बैंक कहूचे ए तीनटा यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक करेक्ट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस मेन इंपोर्टेंट पॉइंट होची एई तक देखो. ब्रांच कोठी भी खोली परिबे यस कोठी भी खोली परिबे इंडिया रो जे कोनोसी जगह रे चाहे ब्रांच खोली परिबे. There is no geographical restrictions बुझियला का पई यूनिवर्सल बैंक पे. बट जदी geographical restriction अछि कि भाई एई एरिया रे तमे खोलिबो then those are called differential bank like LAB local area bank regional rural bank. वर्ड ही लागि जाउ regional rural bank rural रे खोलिबो regional ई particular region रे then that means geographical restriction अछि then those are not universal bank. Is that clear? Okay. Next on the term of acceptance. Will universal bank accept demand and time deposit? Yes. Universal bank accept both demand as well as time deposit. What about others? Differential bank, not all differential bank accept unlimited deposits. There are post payment bank जे के अगरु लक्ष टका accept करूतला deposit एबे maximum 2 लाख टका जाय deposit accept कर करियो post payment bank. But SFB LAB RRB से माने अनलिमिटेड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करंदी. करेक्ट. केवल पोस्ट पेमेंट बैंक मैक्सिमम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर करूची केते 2 लाख. क्लियर. लोन केस रे यूनिवर्सल बैंक कहा को भी लोन दे परिबो 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रखियो पड़िबो. बट इन केस ऑफ एसएफबी और आरआरबी 75% ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. बहुत भल से मन रखो 75% पीएसएल कोटा ताको मानियो पड़िबो. बट पोस्ट पेमेंट बैंक दे कैन नॉट गिव लोन. They cannot give loan. Airtel Post Payment Bank they cannot able to give loan. Okay. Net interest margin is not required. Now RBI रो act आसिला 1934 रे. RBI established ହେଲା 1935 रे. तार जो सेकंड शेड्यूल अछि से सेकंड शेड्यूल रे से मेंशन करी रखुची. सी कॉन्स्टिट्यूशन रे भी शेड्यूल अछि करेक्ट नो होंगी नहीं. सिमिलरली RBI एक्ट रो भी शेड्यूल अछि. तो आरबीआई रो सेकंड शेड्यूल रे जो बैंक गुडा करो ना रखा हे गला से ना गुडा को हे गला से बैंक गुडा हे गला शेड्यूल कमर्शियल बैंक और शेड्यूल बैंक. इट कैन बी कमर्शियल बैंक और इट कैन बी शेड्यूल बैंक आल्सो. देन जो बैंक गुडा स्टिल बैंक भलिया काम करूची but their names are not mentioned in the second schedule of RBI Act 1934 they are considered to be non scheduled bank. Fine. Now scheduled bank जी definitely से डिपोजिटर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूथबो एंड मिनिमम 5 वर्ष से बैंक रे ऑपरेट करूथबो. करेक्ट. 5 वर्ष तो नुह से कांसेप्ट नहीं. 5 लाख रो पेड अप कैपिटल थिबो ताबा जदी 5 लाख रो पेड अप कैपिटल अछि एंड से डिपोजिटर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूची देन आरबीआई रो एडा होची निजो
डिस्टिंक्शन कि तार निजर पावर निज पावर रे से कोन करि परिबो से चाहिले देई परिबो से चाहिले न देई परिबो करेक्ट नो सो ताले डिपोजिटर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूची माने कोन सीआरआर विथ आरबीआई रखुथबो नॉन शेड्यूलर बैंक मेंटेन सीआरआर विथ देमसेल्फ से माने डिपोजिटर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करि परनांदी बिकॉज़ से माने निज पाखरे ही सीआरआर रखुछन आरबीआई पाखरे रखुनांदी तनो आरबीआई कहबो भाई मु तते कांगी तते देबी शेड्यूल बैंक रो दर्जा देबी नी जो माने शेड्यूल बैंक हिजिवे से माने एलिजिबल हेबे आरबीआई रो लाफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी करेक्ट नो तो सेथिरे से माने बोरोइंग एंड लेंडिंग जोटा रेपो रिवर्स रेपो कांसेप्ट से सबुरे को माने शेड्यूल बैंक माने काम करि परिबे बट नॉन शेड्यूल बैंक आरबीआई रो डिस्क्रिशनरी पावर अछि आरबीआई चाहिले दबो रेपो रेट रे न चाहिले न देले भी किछि कहि कर परिबे तार so all scheduled bank they protect the interest of depositor and abide by RBI norms where non scheduled bank they are mandatory to follow RBI guidelines otherwise RBI can shut down because they won't able to see still they are bank होवा पई परमिशन कोन दरकार मन पकाओ कि जदी फास्ट तबे कंपनी खोलिलो and जदी तमे बैंक हिसाब रे काम करिया को चाहो देन तमे RBI टू परमिशन दरकार although RBI तुमको परमिशन दे दो बैंक बोली तो that doesn't mean that कि तमे शेड्यूल बैंक हिजो होंगी नहीं तो जदी नॉन शेड्यूल बैंक जदी आरबीआई रो गाइडलाइंस को फॉलो न कला ताले आरबीआई कैन शट डाउन आल्सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अनुसार आरबीआई को शट डाउन भी कर दबो फॉरगेट अबाउट शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक सो शेड्यूल कमर्शियल बैंक पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख एंड दे शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर मन रहइबो ओके नेक्स्ट कांसेप्ट कि जेतला ना कहू वर्किंग ऑफ द बैंक जदी एटा बैंक रहिला ताले एपडे डिपोजिटर अछि एपडे बोरोयर अछि बोरो डिपोजिटर कोन करिवो बैंक को कोन दबो पैसा जदी बैंक को डिपोजिटर पैसा दोजी ताले से पैसाटा डिपोजिटर पई कोन ना एसेट काहे की ना डिपोजिट ता अगेंस्ट रे इंटरेस्ट भी पाइबो बैंक कोन करिवो एक्सक्यूज मी सर सॉरी सर नॉन शेड्यूल बैंक रो बते 5 लाख थिला मिनिमम कैपिटल प्लस रिजर्व टिके आउट के जोरे में शेड्यूल बैंक रो बते 5 करोड़ ना नॉन शेड्यूल बैंक रो बते 5 लाख थिला ना ओके सर फाइन सो शेड्यूल बैंक बनिया पई पेड अप कैपिटल ओनली 5 लाख and it requires to have protect the interest of the depositor आउ से जो गोटे कंपनी को जदि बैंक कंपनी मींस फॉर एग्जांपल रतन टाटा जदि चाहू जदि बैंक होवा पाई देन तांको पई केस लागि पारे से जो क्रोर रो कांसेप्ट प्लस 10 ईयर रो बैंकिंग एक्सपीरियंस जदि गोटे कॉर्पोरेट सेक्टर को बैंक बनिवार अछि बुझिला ना तो सेटा ता पई थिला आ पई न ओके नेक्स्ट कांसेप्ट सो जदि मु कहली कि बर्तन बैंक कोन कला बोरोयर को पैसा देला ताले बैंक कोन कला लोन देला एंड बोरोयर इंटरेस्ट दबो तो सेही पैसाटा बैंक पई हिजबा आसे ए केस रे बैंक पई डिपोजिटर रो पैसाटा बैंक पई लायबिलिटी बट बोरोयर को जो लोन टा दोची से पैसाटा बैंक पई एसेट हिजबो एंड बोरोयर पैसाटा लायबिलिटी हिजबो एति तो मन रखो निहारी ओके नेक्स्ट जदि डिपोजिटर ठू 100 टंका से नै कि आसिला डिपोजिटर को से 4 टका फेरौची 104 टका फेरौची तो डिपोजिटर को इंटरेस्ट रेट दोची 4 टका सेही 100 टंका डिपोजिटर टू आनी कि से आउ जण को बोरोयर को 100 टका दोची एंड ताठू से 9 टका इंटरेस्ट नोची ताले पाउची केते ना 109 टका तामे एपटू 109 टका पाई कि एपटे 104 टका फेरौची ताले बळीला केते टका ना 5 टका इंटरेस्ट तो 5 टका जोटा बळी गला नेट डिफरेंस सेही थिरे दिस इज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन ए नेट इंटरेस्ट मार्जिन रे तार निजर चलिया पई मैनेजर आउ से जो एम्प्लॉय मानकर तांको पैसा भी दबार अछि इलेक्ट्रिक बिल भी दबार अछि सब किछि बुझी कि सरला परे ता बिना और टंकाटे बळिला दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक सो एसेट होची मनी जोटा अर्न कला फॉर बैंक डिपॉजिट्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी लायबिलिटी तांका डिमांड डिपॉजिट हो या फिर टाइम डिपॉजिट हो देन जदि डिमांड डिपॉजिट होती दैट इज कॉल्ड डिमांड और एनी डिपॉजिट दैट इज कॉल्ड डिमांड टाइम लायबिलिटी डिमांड डिपॉजिट लायबिलिटी टाइम डिपॉजिट लायबिलिटी दोस आर कॉल्ड DTL so net demand time liability what is it na net mane that means something has to be subtracted so total demand time liability minus fixed deposit of the bank with other bank very important see बर्तमान भाबिनियो 100 टा लोक गोटे बैंक रे खाता थोइचोनी एंड से माने लाख टका दे दिचोनी ना टोटल डिमांड टाइम लायबिलिटी किछि सेविंग अकाउंट रे अछि किछि फिक्स्ड डिपॉजिट रे अछि एंड एमिते हेकी लाख टका अछि तो टोटल डिमांड टाइम लायबिलिटी केते अछि लाख टका ना एंड बाबा एई लखे रु
बर्तमान बैंक कौन करी बैंक लक्ष रु किसी जिन आसेट भी हो लक्ष रु 50,000 टका ए बैंक कौन करी नहीं आउ गोटे बैंक रे थोई देछि ता बदल तो ताको इंटरेस्ट मिलिबो हो कि नहीं जोटा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीना लोन देइथिले काहाकू हेडा हजि दिबार चांसेस अछि बट एठी तो 50,000 मिलिबो ताले फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द बैंक विथ अदर बैंक दैट इज व्हाट वी कॉल्ड NDTL net demand time liability. Is that clear? Okay, so in 2021 Airtel Payment Bank and Paytm Payment Bank they became scheduled bank. So payment bank गोटा scheduled bank हे परिबे ना नहीं हे परिबे 5 वर्ष नॉट 5 वर्ष 5 लाख रो पेड अप कैपिटल थिबा दरकार एंड सेमाना पाखरे डिपोजिटर रो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करथवा दरकार ए दिटा जदी आरबीआई सैटिस्फाइड हैला देन आरबीआई तांको scheduled bank बनै परिबो तो फर्स्ट आ गोटे कांसेप्ट होची कि पेमेंट बैंक कोना से माने एसएफबी हे परिबे ना नहीं हे परिबे एसएफबी यूसीबी हे परिबे ना नहीं हे परिबे वी विल सी दैट से क्वेश्चन भी पचरा जाए ओके आरबीआई रो कांसेप्ट टिके देखि देथिबा आरबीआई 1913 कमर्शियल बैंक गोडा थिला रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट फर्स्ट तो आगो तुमको कंपनी बनेया पड़िबो देन आरबीआई टू परमिशन नेले तुम बैंकिंग सेक्टर रे काम कर पड़िबो एज ए बैंक करेक्ट नो सो 1913 रे there are lot of commercial banks those are registered under company act no monitoring ताऊ मॉनिटर करनते 1926 रे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी हिल्टन यंग कमीशन आसिला जे कि रेकमेंड कला सेंट्रल बैंक जोटा कि आरबीआई एथर यूपीएससी रे हिल्टन यंग कमीशन रो गोटे क्वेश्चन भी पचारथला 1926 रे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी 1926 देखो मु काहे कि कहूची एंड 2026 Royal Commission on Indian Currency, Hilton Young Commission recommended Central Bank RBI. They recommended Central Bank RBI. तेनु जेबे भी जो डेट देखुछो ना से डेट गोडा जो देखुता जदी एनिवर्सरी डेट गोडा होची देन एट लीस्ट से टॉपिक गोडा इंपोर्टेंट ताको छाडी बोले ठीक अछि सो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी हिल्टन यंग कमीशन से रेकमेंड कला कि गोटे सेंट्रल बैंक होबा कथा दैट नेम हैज टू बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1929 रे देयर वाज अ ग्रेट डिप्रेशन इन यूएसए and there was collapse of 450 plus bank in India and British government कोन कला से टिके सीरीज कि हिल्टन यंग कमीशन जो कहितला कि आरबीआई रो कांसेप्ट से कांसेप्ट को मु बर्तन कांसेप्चुअलाइज करे सो 1934 रे आरबीआई एक्ट वाज इनैक्टेड 1934 रे कोन हला ना आरबीआई एक्ट पळे आसला 1935 रे आरबीआई बिकेम द ऑपरेशनल फ्रॉम 1st अप्रैल फर्स्ट गवर्नर वाज ऑसबोर्न स्मिथ अगेन 35 2025 2026 टिके देखुथिबो ठीक अछि RBI became operational from 1st April. First governor was Osborne Smith. India's viceroy से time रे थिले विलिंगटन. Government ownership was just only 4.4%. British पाखर मात्र 4.4% थिला. And initially कोठी थिला ना कलकत्ता रे थिला. Then 1937 रे RBI रा आउ गोटे ब्रांच बनिला कोठी ना बॉम्बे रे. Okay, next 1935 commercial bank fulfilling certain condition. Then सेही जो 34 रा एक्ट थिला जदि कमर्शियल बैंक किछि कंडीशन फुलफिल कले देन आरबीआई रो जो एक्ट रो सेकंड शेड्यूल रे से माने पुट कर देले एंड से माने कहला शेड्यूल कमर्शियल बैंक दैट्स इट सो कमर्शियल बैंक फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस दे विल बी कंसीडर्ड टू बी शेड्यूल कमर्शियल बैंक देन दे हैव टू कीप द सीआरआर विथ आरबीआई मींस दे हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर दैट्स इट 1943 रु 49 सीटी देशमुख ही बिकेम द सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बिकेम इंडियन गवर्नर आल्सो 48 49 रे आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट RBI governor answerable to parliament and they have to pay the dividend to government of India not profit dividend to the government of India को RBI रो जति की भी पैसा कमाइला सेथिरु डिविडेंड काहे ना RBI रो ओनरशिप बर्तन का पाखरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाखरे 100% सो जहां तार इनकम हैला सेथिरु निजर जति की खर्च काटी देला परे आ बाकी तक डिविडेंड से देई दबो काहा को जहां पाखरे शेयर थिबो काहा पाखरे शेयर अछि 100% गवर्नमेंट पाखरे तो गवर्नमेंट विल गेट ऑल द डिविडेंड सो 1949 रे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आसिला एम्पावर कला आरबीआई को कोन ना आरबीआई विल प्रोवाइड लाइसेंस टू कंपनीज टू ओपन बैंक परमिशन फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर फोर्स एलिमिनेशन और मर्जर ऑफ द वीक बैंक इवन एलिमिनेट भी करि परिबो वीक बैंक को मर्ज भी करि परिबो देन आरबीआई रो गवर्नर जने अछन एंड चारटा डेप्यूटी गवर्नर अछन तो आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा से पावर मिली छि ताको दैट वाज एन स्टैट्यूटरी एक्ट करेक्ट नो स्टैट्यूटरी बॉडी आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आसिला जोथरे आरबीआई को एम्पावर करा गला देयर वाज पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 अछि जोथरे के ट्रांजैक्शन सेटलमेंट ट्रांजैक्शन एनपीएस नॉट एनपीएस व्हाट इज दैट आईएमपीएस करेक्ट नो एनईएफटी ए सब पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 अंडर रे गला देन पीएमएलए एक्ट 2002 एंड फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो 25 वर्ष कंप्लीट सॉरी एटा सेते बेल 2024 वाला कांसेप्ट बट आराम से 1999 तो फेमार 1999
पीएमएलए जोटा कि 2002 रा करेक्ट नो तो आरबीआई जदि देखियो फंक्शन तार प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल वर्क प्रमोशनल कौन ना इंटरनेट बैंकिंग को प्रमोट कर परिबो फोन बैंकिंग को प्रमोट कर परिबो बिकॉज़ से एक्सेस दिए ना तो एनपीसीआई को कहूची भाई चलो तमे भी काम करो एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो एजेंट भी से माने सुपरवाइजरी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट बैंकर्स टू बैंक सीआरआर लेंडिंग मोरल एसोसिएशन बैंकर पाखरे जे आ किछि ऑप्शन नाही लास्ट को पैसा दरकार या पैसा अधिक हो जाय ताको थोइबार भी अछि कहा पाखु जीवो आरबीआई पाखु कि भाई हेल्प कर दे आरबीआई को ठीक अछि तते मो कहितली बट तू तो भूलभाल करजो दरकार पड़ले से जो एसडीएफ एमएसएफ वाला कांसेप्ट से सब लागि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को किए रखुची आरबीआई देन आरबीआई रो फॉरेक्स अछि तो आरबीआई रो फॉरेक्स रो कोन कोन रहउची ना फॉरेन करेंसी गोल्ड एसडीआर एंड रिवर्स ट्रांसपोजिशन ओपीएस रो क्वेश्चन ओपीएस रे आसी फॉरेन करेंसी रखुची गोल्ड रखुची एसडीआर रखुची एंड रिवर्स ट्रांसपोजिशन आरटीपी को जाय ठीक अछि एडा होची आरबीआई रो फॉरेक्स रे बैंकर टू गवर्नमेंट आल्सो तो आरबीआई हैंडल्स बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट वगैरह यूनियन रहो या फिर स्टेट रहो पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट कि यूनियन को पैसा दरकार या फिर स्टेट को पैसा दरकार से माने कोन करिवे गवर्नमेंट सिक्युरिटीज देबे काहा को देबे ना आरबीआई कोन करिवो तांको पई पैसा अरेंज करिवो मार्केट रो जदी मार्केट रो न होय पैला लास्ट मोमेंट रे से कोन करिवो प्रिंट करि परिवो न्यू करेंसी बट न्यू करेंसी जनरल से प्रिंट करन सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इशू ऑफ बैंक नोट्स करेंसी प्रिंटिंग ग्रेटर देन 2 रुपीस रो नै कि नोट अप टू 10000 जाय आरबीआई प्रिंट करिवो कॉइन रो मिंटिंग रो पावर का पाखरे अछि ना अप टू 1000 जाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो कॉइनेज एक्ट अनुसार 2011 अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाखरे पावर अछि कि कॉइन मिंटिंग कर परियो अप टू 1000 वेरी इंपोर्टेंट 1000 टाको मन रखता अप टू 1000 जाय कॉइन प्रिंटिंग कर परियो के ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट 50 पैसा up to maximum 10 rupees in one settlement that's why we call it as a limited legal tender section 6 of this act coinage act 2011 रो section 6 अनुसार गोटे ट्रांजैक्शन रे up to 10 टंका जाए तमे 50 पैसा दे परियो माने गोटे ट्रांजैक्शन रे मैक्सिमम 20 टा पैसा तमे देले जने केही तुमको फेरै परियोनी किंतु ताठु जदी तमे अधिक दबो देन द लेंडर कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट आल्सो and maximum 1000 coins in one transaction means 1000 coins not coin actually 1000 चिल्लर वाला कांसेप्ट कि 5 टंकिया है कि भी 1000 करो टंकी क्या है कि भी 1000 करो मैक्सिमम 1000 रो चेंज नहीं परिबे आ बाकी ता बदल रे कैश नेबे माने बेसिकली नोट्स नेबे सो नोट्स आर कंसीडर्ड टू बी अनलिमिटेड लीगल टेंडर while coins are considered to be limited legal tender is that clear okay next concept minimum reserve system what is minimum reserve system now adopted in 1986 that replaced proportional reserve system जो थरे को आगल कि रिप्लेस प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम कोन ना 2/5% ऑफ गोल्ड थिबो 3/5 ऑफ कॉइन थिबो जति एति की अछि ताहाले ही से माने कॉइन प्रिंट करबे न कर परबेनी बट मिनिमम रिजर्व सिस्टम होजी जदी आरबीआई पाखरे एति की कांसेप्ट अछि ताहाले ही कोन ना आरबीआई कैन इश्यू करेंसी विथ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 कोटी टंका रो रिजर्व थिबा दरकार आरबीआई पाखरे जो थरे की 115 कोटी गोल्ड रहबा दरकार एंड 85 करोड़ रो फॉरेन करेंसी थिबा दरकार ताहाले ही जाय की आरबीआई करेंसी प्रिंट करि परिबो नहले करि परिबो नाही इज दैट क्लियर 115 कोटी रो गोल्ड एंड 85 कोटी रो फॉरेन करेंसी ताहाले ही जाय की जदी एति की अछि मिनिमम दिस इज द मिनिमम स्टैंडर्ड एति की रखिला पर ही जाय की आरबीआई करेंसी प्रिंट करि परिबो नहले करि परिबो देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई यस आरबीआई ही होची मनी सप्लाई को कंट्रोल करिया पई जोटा की आरबीआई एक्ट 1934 रे अछि आरबीआई को ही पावर मिलि कि भाई पूरा देश रो मनी सप्लाई को आरबीआई ही कंट्रोल करिवो नो इशू तो बर्तन आरबीआई को जेतले कहला कि भाई तू ही मनी सप्लाई को कंट्रोल करिवो देन लॉ ऑफ डिमांड बिग कंज्यूमर सॉरी सो द राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी जति प्राइस रे किछि भी राइज हैला कमोडिटी रो हमें कोन ताऊ को इन्फ्लेशन हंगने आगुर आलू किलो 20 टका दिला एबे आलू किलो 40 टका हलानी तो धीरे धीरे नॉट ओनली इन वन प्रोडक्ट इन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इफ द प्राइस हैज बीन increased right then we call it as inflation so jati market re inflation hela ta mane market re money supply कोन अछि अधिक अछि that means demand कोन होची जदी supply of money रो अधिक हो समस्त रे पैसा अछि समस्त डिमांड करिवे डिमांड कले मार्केट रे inflation बढ़ी बढ़ी चलेबो demand of the product increases but supply is limited and constant so if demand increases money or liquidity in the market will also increase or if the money or liquidity in the market increases demand will also increase so this is demand side game. So RBI is the controller or credit created by a commercial bank of a country. It used to
two methods to control known as credit controllers. गोटे हूँ क्वालिटेटिव टूल आ गोटे हूँ क्वांटिटेटिव टूल. क्वांटिटेटिव मीन्स जो बैंक रेट सीआरआर एसएलआर रेपो रिवर्स रेपो एमएसएफ एसडीएफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. क्वांटिटेटिव इजी करेक्ट. Qualitative tool रे rationing of credits, regulation of loans for consumptions, variation in marginal requirements, moral suasion, direct action ये सब गुरुवार में ऑलरेडी पढ़ी छे तेनु आ भीतर मु बेसी पढ़ी पसिया चाहूनी जस्ट मु खाली कहि दउची. सीआरआर ऑल ऑफ यू नो राइट ना कार डाउट अछि सीआरआर रे. बैंक गोटे बैंक को 100 टका जदी मिलला से 100 टका रो 4% समथिंग सीआरआर रे दबाकू पड़िबो. काहाको से पैसाटा जाई आरबीआई रे रहइबो एंड जदी आरबीआई पाखरे रहिला आरबीआई ता एगेंस्ट कोनोसी इंटरेस्ट दबनी एंड सेटा ही डिपोजिटर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूची कि 4% रो सीआर. नेक्स्ट 100 टका 4 टका गला और होला 96 टका 96 टका रो 18 टका ताको एसएलआर रे रखिया पड़िबो. तो एसएलआर कोन ना निज पाखरे रखिबो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. सो एथिरे होउची कि निज पाखरे रखिबो पैसा 18 टका सेटा तमे गोल्ड आकार रे रखो कैश आकार रे रखो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करी रखो. जनरली के कैश आकार रे रखिबेनी काई ना सेतिर किछ टका मिलिबो तो से माने इधर गोल्ड रे इन्वेस्ट करी रखि देते या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह बॉन्ड वगैरह किछि किणी की रखि देते. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एसएल. बाकी रहला 22 पळेला आ रहला 78. बर्तन ए 78 होची टोटल लोनेबल इनकम लोनेबल अमाउंट. ए 78 रु भी 100 टंका रे केते डीआईसीजीसी इंश्योरेंस प्रोवाइड करिया पई ठीक अछि ना. 100 टंका रे एटलीस्ट 20 पैसा समथिंग किछि ओटे से माने को दबाव पड़े ताकि 5 लाख टंका रो इंश्योर्ड कहा को ही जे परियो जो माने जे डिपोजिटर देथिबो ताको डीआईसीजीसी से माने इंश्योर करके रखिथिबे कि भाई जदी भी बैंक रन हे गला जदी भी बैंक लुटी गला डूबी गला ताहाले एटलीस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो माने अछंती बैंक मान को जो माने इंश्योरेंस प्रोवाइड करछंती से माने एटलीस्ट 5 लाख टंका जाय रिकवर संगे संगे दे परिबे एंड बैंक जतले लिक्विडेशन ही पासरिबो बैंक रो जदी सब तक पैसा बाहरी सारला देन तापर 5 लाख बाद जदी आउ कहार थिबो भाबिनो मु 7 लाख टका रखछि आगो तो इंश्योरेंस रु मते 5 लाख संगे संगे मिल जिवो देन 90 डेज भीतर देन आउ बाकी तक 2 लाख टका सेटा परे बैंक रो लिक्विडेशन कंप्लीट होला परे से 2 लाख मिल. तेनु भाबिनो 78 इन एन अप्रोक्स 78 टका. ए 78 टका होची लोनेबल फंड. ए लोनेबल फंड रो अगेन कांसेप्ट होची 40% होची पीएसएल. ताले कोन से 78 टका समस्त को से लोन दे दी परिबो की आंसर इज नो. 40% सो 8 चौको 32 अराउंड 31 टका 50 पैसा समथिंग को ठीक तब ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को आउ बाकी जो तक रहिला अराउंड 50 48 समथिंग करेक्ट नो. तो 48 हो या फिर 47 हो से गुडा को से काहा को दबो ना से जहा को चाहू से ताको देई पारिबो. ओके तो रेपो सीआरआर बुझिले एसएलआर बुझिले रेपो कोन ना भाबिनियो लोन नवा पाई बहुत लोक अछंती बट डिपोजिटर पैसा थौ नाहंती आसी जदी डिपोजिटर पैसा थौ नाहंती ताले आरबीआई कहूची भाई लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट बैंक कहूची आरबीआई को देखि भाई यू आर द लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट बैंक मानकर सुख दुख बुझिया पई तमे अछो मते तमे पैसा दबो किछि देन ये कहूची पैसा देबी तते ठीक अछि कोन आनिचू देखा ना मो बाहर किछि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अछि. अच्छा सेटा कोन तो एसएलआर भीतर रो ना बाहर किछि किनि रखिछु फॉर एग्जांपल सी 78 टका लोन दे दो बोली किछि माने नाही 31 टका तो डेफिनेटली ताको पीएसएल रे दाव पड़ियो स्टील ता पाखरे आहुरी 47 रुपीस रहउची ए 47 रुपीस जदी लोन नवा को केही न रहिले फाइनली बाध्य हो कि से पुणी कोन किनिबो से पुणी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह किनि के रखिबो बुझी होउची ना बुझी होउनी से पुणी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह किनि के रखिबो जदी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किनि के रखला ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर दे कि से प्लेस करी पैसा उठे परिबो कोठू आरबीआई ठू दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रेपो बुझियाला दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रेपो. देन व्हाट इज रिवर्स रेपो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेपो सहित बुझिनियो एमएसएफ रो कांसेप्ट और जोटा कि बैंक रेट रो को होतला गुरु तो रेपो सहित से बर्तन कहूची कि भाई मोर ए जो 47 टका रो जो थिला ना सेथिरे मोर किछि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नै मोर बर्तन 18% रे एसएलआर एथिरे ही मोर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अछि. देन आरबीआई कहूची ठीक अछि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ता तुम दे बट जदी एटा तोर भितरु ना जदी एटा तोर रेपो भितरु देन भाई तते टिके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दाव पड़ियो जदी रेपो रे तू 6.5% इंटरेस्ट दबो ताले एठी 6.75% इंटरेस्ट दबो आ 25.25 और 25 बेसिक पॉइंट मु तते एक्स्ट्रा पेनाल्टी पई देबी कि काहे कि तू एसएलआर रो आनी कि दउतु एसएलआर रो जदी तू रहउतु ता माने तू डिपोजिटर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करू तू तोर बैंकिंग रो काम ओडा ठीक ठाक करू बुझी होउची सो डिपोजिटर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे नले मो पाखो आसे ना पैसा मागे पई काहे आसु तू तोर देखे अधिक लोक लगा ताकि लोक अधिक पैसा आनी कि तो बैंक रे थुंतु सेही पैसा गुडू खेले कि लोन रे दे मो पाखो आसे ना पैसा मागे पई करेक्ट नो. सो रेपो एमएसएफ कांसेप्ट क्लियर. नेक्स्ट कांसेप्ट इज रिवर्स रेपो.
पैसा सफिशिएंट बट लोक नबा पई केही ना लोक नबा पई के ना किंतु डिपोजिटर को तो इंटरेस्ट तो दाव पड़ियो 3% 4% जहाँ भी तो किंतु पैसाटा तो खाली कैश आकार रखिले किछ फायदा होनी कहा गुडे कि देबी लोक मार्केट को नवा पई नाहांती देन आरबीआई जाउची आरबीआई पाखु जाउची बैंक भाई केही ना आ तमे नै जाओ मते किछ पैसा दे जाओ आरबीआई कहूची ठीक अछि मु तो देबी पैसा किंतु अगेन दीटा कांसेप्ट आइदर मु तते गवर्नमेंट सिक्युरिटीज प्लेस करिक देबी जदि मु गवर्नमेंट सिक्युरिटीज भी देबी ताहाले मु तते 3 टंका और 3 टंका 50 पैसा देबी इंटरेस्ट 100 टंका तू थोइबू रिटर्न नेला बेले तते 103 टंका 50 पैसा देबी एंड मु तते गवर्नमेंट सिक्युरिटीज भी दे दोछु या फिर मु तते गवर्नमेंट सिक्युरिटीज देबी ही नहीं बट तते रिटर्न बेले जेति की रेपो रेट थिला 6.5 ताठू 0.25 बेसिक पॉइंट कमे की देबी मींस 6.25 that is what we call SDF. So there is a window what was the floor value what was the ceiling value and say window size होची 50 बेसिक पॉइंट जनरली जतले मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बसे से माने रेपो डिसाइड करथि लेट्स सपोज रेपो होची जदि 6% ताहाले एमएसएफ होबो 6.25% and SDF होबो 5.75%. तो ए जो विंडो ए विंडो रा वेट होची 50 बेसिक पॉइंट्स बुझियला मैक्सिमम एसडीएफ ऑलवेज रेपो ही डिसाइड हुए रेपो रेट ता ही डिसाइड हुए एंड फाइनली से रेपो रेट अनुसार ए माने कोन करथि एमएसएफ और एसडीएफ को एडजस्ट करि नि इज दैट क्लियर एंड देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव टूल क्रेडिट रेशनिंग ऑफ क्रेडिट की पैसाटा तमे जो दउचो काहा को दउचो केमिति दउचो सेटा ठीक रे दिया जाउची ना नहीं रेगुलेटिंग लोन्स फॉर कंजम्पशन ए माने पडे को हालानी कि भाई मोरल सुएशन भी हबो कि आमे तो इंटरेस्ट रेट कमे देलुनु तमे माने काहे कि लोन इंटरेस्ट रेट ता कमोनो लोकन काहे कि लुटुचो ए सब कांसेप्ट होची क्वालिटेटिव टूल रो कांसेप्ट बुझियला ओके नेक्स्ट कांसेप्ट लॉ ऑफ डिमांड एंड बिग कंज्यूमर वाला लॉ कांसेप्ट व्हाट होची कंज्यूमर रो पर्सपेक्टिव टॉक्स अबाउट अफोर्डेबिलिटी कंज्यूमर रो पर्सपेक्टिव प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जदी बढ़िला भल से सुनथो टिके माइक्रो वाला कांसेप्ट है ठीक अछि तो प्रोडक्ट रो प्राइस जदी बढ़िला डिमांड कोन हबो कमी जिवो जदी आईफोन रो दाम वर्तमान 60000 अछि काली आई सेम आईफोन को कहओ भाई 70000 लोको कहि ना मेनी करेक्ट किंतु प्राइस जदी कमिवो सेल रे टाइम रे बिग बिलियन डे प्रोडक्ट रो प्राइस जदी कमिला क्वांटिटी डिमांड बढ़ी जिवो एया ना कांसेप्ट होंगी नहीं ओके तो एपटे मु नेली प्राइस एपटे नेली मु क्वांटिटी भाबिनियो जदि गोटे केजी रो दाम 100 टंका अछि ताहले डिमांड कोन हबो कम थिबो जदि प्रोडक्ट रो प्राइस कमिला ताहले डिमांड बढ़िबो ताहले प्राइस आउ क्वांटिटी रो जो डिमांड आउ क्वांटिटी बेसिकली प्राइस आउ डिमांड तार जदि मु कर्व देखिबी मते गोटे नेगेटिव स्लोप वाला कर्व मिलिबो और वी कॉल इट एज डाउनवर्ड स्लोप टू द राइट. That means price is directly proportional to 1 by demand or price is inversely proportional to quantity demand. Price बढ़िले demand कम price कमिले demand बढ़ो. Is that clear? Okay. The next concept law of supply. एटा हो supplier perspective. Supplier रा perspective कोन गोटे होची seller रा माने किनिवार perspective थिला जोटा कि law of demand थिला. Demand किए करिवो जे किनिवो से demand करिवो. मु देखिबी आलू रो किलोटा जति रेट कमुची ताले मु अधिक डिमांड कर देबी आनी कि घर रखि देबी किंतु जदि अधिक प्राइस हो तार ताले मु नेबिनी बेसी सप्लायर कोन करिवो सप्लायर देखियो कि भाई जदि डिमांड बढ़ुची ताले प्राइस भी बढ़ाई देबी बुझी होची ना नहीं जदि प्राइस बढ़िला ताले भी मु क्वांटिटी को बढ़ेबी जदि प्राइस न बढ़ला मु क्वांटिटी को चापी देबी तो जदि ओनियन रा प्राइस अछि 10 केजी ताले सप्लायर से कहूची भाई मु मात्र केजी दे ही मार्केट को छाडीबी जदि ओनियन रा प्राइस हैला 100 केजी ताले मु 10 केजी छाडीबी परतन ए दीटांगो ग्राफ अपोजिट अछि गोटे पॉजिटिव स्लोप आ गोटे नेगेटिव स्लोप ताले एमाने जोठी ही मिसिबे दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट बुझियला दिस इज प्राइस वर्सेस क्वांटिटी दिस इज डिमांड मींस बायर पर्सपेक्टिव दिस इज सप्लायर रा पर्सपेक्टिव जोठी मिसिबे सेटा हे जीवो गोटे प्रोडक्ट रा प्राइस कोनोसी भी प्रोडक्ट रा प्राइस एमिति ही कैलकुलेट करा जाय सप्लायर सीए देखुची भाई मु केते टका हेले बिकी परिबी बायर कहूची भाई मु केते टका हेले किनि परिबी जोठी से माने इक्विलिब्रियम को आसीबे जोठी से माने राजी हेबे एई पॉइंट रे हम किनिया को चाहूचू देन सेठी जेतिकी सप्लाई थिबो सेई अनुसार से गोटे प्राइस टे धार्य करा जिवो तो सप्लाई फॉर एग्जांपल 50 टका पर केजी हेले 5 केजी सप्लाई रहबो ठीक रहबो आ ताठू अधिक हेले ताठू जदी अधिक प्राइस हबो ताहाले डिमांड हबोनी लोक किनिबेनी ताठू जदी कम हे गला ताहारे भी
बहुत डिमांड हम सप्लाई से नथिबो तामाने कोन जदि एपोर्ट साइड रे मु देखिबी ए पॉइंट आ ए पॉइंट 100 टंका रे गोटे लोक कहूची मात्र मु केजीटे नेबी किंतु सप्लायर कहूची भाई 100 टंका रे मु 10 केजी भी प्रोड्यूस कर परिबी ताले सरप्लस प्रोडक्शन किंतु से किना जाय परिबोनी तो से सरप्लस प्रोडक्शन हेले भी नष्ट हबो नष्ट होला पर अल्टीमेटली भिडी बाडी हेकी ए लाइन को आसीबे भाई मो पाखरे भाबिनी आलू अछि मु कहूची आलू किलोटा 100 टंका हेले मु 10 केजी देबी जदि 10 टंका अछि ताले मु मात्र केजीटे देबी बर्तमान मु कहूची 100 टंका हेले जे किनिबा लोक से कहूची 100 टंका हेले भाई मु भी 10 केजी नै परिबिनी मु केजीटे ही नेबी धरिक बइथा तू तोर 9 केजी जदि से ना 9 केजी धरिक बस प्रॉब्लम कोन हो दीज आर लाइक पेरिसेबल कमोडिटी आर वैल्यू कमी कमी चलिबो तो धीरे धीरे बाय डिफॉल्ट देयर विल बी पॉइंट तो ठीक अछि गोटे काम कर तू गोटे काम 50 टका करछ तू सब नै जो ना हां 50 टका करबो सब तो नै जो देन से कहूची सब तो माने केते से प्रोडक्शन कर पेरे 50 टका रे 10 केजी थोड़ी दबो 5 केजी ही दबो बुझी होची so गोटे इक्विलिब्रियम पॉइंट रेजिस्ट हुई एनीवे सिमिलरली देयर इज अ डिमांड फॉर मनी कौन कौन डिमांड ना तीन प्रकार डिमांड है आइदर ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन और स्पेकुलेटिव तो ट्रांजैक्शन डिमांड कौन ना मते दरकार मीडियम ऑफ एक्सचेंज पई डिपेंड्स अपन इनकम जदि मोर पाखरे अधिक इनकम अछि ताले मो अधिक खर्च करबी जोडा कि बेंगलोर रे कोन होय आईटी सेक्टर बिला को बहुत बहुत पैसा दिया जाए सेति सैटरडे टा छुट्टी भी दिया जाए ताकि संडे तो गोटे दिन छुट्टी ता पूर्व सैटरडे भी गोटे दिन छुट्टी रख ताकि जो पैसा गुडा से कमाउछंदी से गुडा से माने यूज भी करि देबे सैटरडे संडे जो थिरे इकोनॉमी बूस्ट हो मेट्रोपॉलिटन सिटी एमिति मेट्रोपॉलिटन सिटी नु जदि सेठी आसु ताले भाई छुट्टी दियो जदि न छुट्टी दबो देन भाई मनी रो सर्कुलेशन भी होबनी गोटे गोटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख एमिति मिलुची तांको से कैश गुडा को नै बैंक रे थोइ देबे अवश्य बैंक परे दबो किंतु डायरेक्ट जदि ट्रांजैक्शन दा हुआंदा करेक्ट नो तांका पाखरे न डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो सेटा मनी रो सर्कुलेशन बेटर हो मनी सप्लाई बढ़िबो करेक्ट सो ट्रांजैक्शन डिमांड मीडियम ऑफ एक्सचेंज देन प्रिकॉशनरी डिमांड ना प्रोटेक्ट अगेंस्ट सडन और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर निजु प्रोटेक्ट करियार अछि दैट इज प्रिकॉशनरी नबार अछि स्पेकुलेटिव डिमांड कोन ना स्पेकुलेट करछि युद्ध चली छी सोना किनि के रखि देबी कि काळे सोना आगु बढ़िबो बैंक रे पैसा थइबेनी दोज आर व्हाट वी कॉल्ड स्पेकुलेशन सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड नाउ दिस कांसेप्ट यू ऑलरेडी न्यू कि कंज्यूमर एंड बैंक एमाने रहउछन सिस्टम भितरे एंड बैंक बाहर को जे गला आरबीआई होची सिस्टम बाहर जितला हमें मनी सप्लाई कथा कहूजे देन सिस्टम भीतर कथा और सिस्टम बाहर कथा देखुचे हां कि नहीं तो मनी सप्लाई ए गेम भी मु आगु बुझै छी m1 m2 m3 m4 तारो इथरे डाउट अछि आई डोंट वांट टू गो इनसाइड अगेन फॉर द तारो डाउट अछि केथिरे m1 m2 m3 m4 if you want I have to explain or else it do not required right fine okay. We'll directly do some questions from this m1 m2 m3 m4 give me a minute it's loading okay. Try this question this is this question forum ro open mock test rehitla the Reserve Bank of India generally increase the repo rate to curb high retail inflation in the economy the RBI generally increase the repo rate जदि बढ़ाई दबो एमाने पैसा नवाको चाहउछथि यस रेपो रेट मु जदि बढ़ाई देबी इन्फ्लेशन कंट्रोल होबो इज दैट ट्रू बताओ ट्रू अछि ना ओके स्टेटमेंट 2 देखो an increase in the repo rate raises the cost of borrowing of commercial bank which leads to contraction in the money supply increase in repo rate जदि बढ़िला raises the cost of borrowing रो cost बढ़ी जिवो commercial bank पाई काहे ना से मानको अधिक इंटरेस्ट रेट दवा पड़ो which leads to contraction in the money supply that is also true statement 1 ठीक अछि only one of the statement 2 and 3 both statement 2 and 3 and it is 2 and 3 विषय बचत 1 विषय तो बचरा 1 is optional statement fine statement 3 by reducing the disposable income and aggregate demand of the economy reducing the disposable income and aggregate demand of the economy the RBI aims to bring price stability which one of the following is correct in the above paragraph
disposable income and aggregate demand in the economy एटा RBI कमे दे परिबो कि प्राइस स्टेबिलिटी रा मत को प्राइस स्टेबिलिटी RBI कंट्रोल करे को थ्रू रे मॉनेटरी पॉलिसी रे को थ्रे को आइ जे कि भाई जीडीपी को देशर कमे दे परिबो से या फिर डिस्पोजल इनकम जोटा फैक्टर सॉरी नेशनल इनकम वगैरह कांसेप्ट नेशनल इनकम रु जदी मु डेप्रिसिएशन वगैरह काट देबी सेटा डिस्पोजेबल इनकम देखे दबो तो डिस्पोजेबल इनकम को आरबीआई कंट्रोल करिवो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट हंगी नहीं ट्रू ऑप्शन ओडा प्रॉपर लिखा है नहीं बिकॉज़ आधा आधा अछि बट एटलीस्ट आई विल गो विथ सी बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर समथिंग व्हाटएवर इट इज मेंशन बट देखि रबा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर statement 1 is correct raising the repo rate done statement 2 is also correct statement 3 what about statement 3 statement 3 is also correct by reducing the disposable income and aggregate demand in the economy the RBI aims to bring price stability statement 3 I don't think so correct and explain statement 1 lower borrowing and higher interest rate on saving reduces the extra cash people have to spend which is aggregate demand when demand falls the upward okay तो सी माने रिवर्स रे कहूची कि बाय रिड्यूसिंग द डिस्पोजेबल इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी द आरबीआई एम्स टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग थ्रू व्हाट बेसिकली लोकों पाखु पैसा पहुंचा ही जाउनी कोन ना बिकॉज़ ऑफ रेपो रेट इंक्रीज करी कि आरबीआई पहुंचे सो दिस इज एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बट दिस इज अ लिटिल बिट ambiguity so I don't consider this question next question with reference to the economy the cantillon effect refers to idea of what cantillon effect what do you think about cantillon effect yes try this question what is the answer changes in the money supply in an economy cause redistribution of purchasing power among people inflation reduce the real value of the total government debts excessive government borrowing concept nahi excessive consumer spending in an economy leads to interest rate no changes in the money supply cantillon effect changes jodi money supply change कलो ना बढ़ाई देलो जदी इंक्रीज इन मनी सप्लाई कलो ताहले एटा समस्त को इक्वल अफेक्ट करबोनी धनी लोक पाखरे अधिक पैसा पहुंची जीवो गरीब लोक पाखरे पहुंची परिबोनी दैट इज cantillon effect okay option A is the correct answer see पढ़ी दे था ओटे तरह cantillon effect refers to the idea that changes the money supply in an economy causes redistribution of purchasing power among the people it disturbs the relative price of goods and services and leads to the misallocation of scarce resources. The Cantillon effect is named after 18th century French economist Richard Cantillon. Cantillon noted that when a money supply is expanded, the fresh money does not get evenly distributed across the economy at once. The fresh money is rather injected into a particular section of the economy first, and thus purchasing power of the people who receive this first freshly created money is enhanced at the cost of the rest of the society. Basically, simple concept होची Cantillon effect होची जितले money supply टा बढ़ा हबो ठीक अछि मनी सप्लाई जदी बढ़ुची ताले ए मनी माने मार्केट रे जदी मनी इंजेक्ट हैला ये धनी श्रेणी रो लोक पाखु आक पळेबो से मानकर परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ी जीवो बुझी होती ना नै परचेजिंग पावर किंतु गरीब लोक बाहर किछ पहुंची परिबोनी ताका पाखर खाता ही नै से माने कोन नेबे भाई लोन से माने के दबो बुझी होती ना नै सी मनी सप्लाई तमे केमती बढ़ेबो जदी इंटरेस्ट रेट टा कमे दबो होंगी नै ट्रू इंटरेस्ट रेट तमे कहउछो कमे दबो बट ताले लोन टा दबो काहको गोटे गरीब लोक से लोन नहीं परिबो कि ता पाखरे भाई किछि नै ताले जदी मनी सप्लाई मार्केट रे तमे बढ़ौछो ताले से पैसा टा जाउची काहको धनी लोक पाखो ताले धनी लोक पाखरे तो जेहेतु अधिक पैसा रहउची धनी लोक डिमांड क्रिएट करथो ओके दिस इज व्हाट वी कॉल्ड Cantillon effect मन रखता नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द अलोंग डिस्क्राइब्ड इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी which of the following best describes an inflationary gap in an economy gote economy re inflationary gap अछि a situation in which aggregate demands exceeds aggregate supply demand jodi exceed kari gala supply at full employment level in an economy demand bahut adhiko supply kam and employment level full अछि in an economy there is a possibility okay a situation where rising wages and input cost increases in general price level without any change in aggregate wage बढ़ी जाइछि
इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी जाई इनपुट कॉस्ट बढ़ी गले किछ फरक पड़िबो कि इनकम रे कोन फरक पड़िबो सी इनपुट कॉस्ट बढ़ला जोटा आगु 10 टका रे मिलुथला बर्तन सेठी खर्च भी होउची कि सेतिरे 15 टका ताले तार प्राइस बढ़ी कि केते हेजिबो 16 टका से अनुसार वेज भी बढ़ी जाई ताले इन्फ्लेशन कोन हबो जोटी आगु 10 टका रे गोटे वेज दरमा दिया होतला जनकू 11 टका से 10 टका रे जिंसटा को किनी पारुथला बर्तन जदी 15 टका होउची ताले दरमा बे दिया होउची 16 टका ताले भी से जिंसटा किनी पड़िबो एठी इन्फ्लेशनरी गैप रो कांसेप्ट नै बीटा तो हबनी a situation in which aggregate supply at the full employment level of output exceeds this is the reverse situation see answer a और c भीतर थिबो हो कि नहीं aggregate supply at the full employment level output exceeds demand to jodi supply अधिक होइबो inflation थोड़ी हो a situation where excessive money supply in the economy leads to rise in prices independent of the level of whatever is mentioned situation where excessive money supply in the economy leads to rise in prices independent of the level of employment maybe see d टा भी प्रॉपर देखा होची किंतु a आउ d भितरे जो तमे देखियो इन्फ्लेशनरी गैप कथा कहउची से गैप केतेले हबो डिमांड आउ सप्लाई मने पका मु जेतले पढौतली मु गोटे फोटो देखौतली सप्लाई एतिक अछि गोटे माप चिन्ह थिबो पीपीटी रे माप चिन्ह गोटे थिला से माप चिन्ह रो गोटे जगह सप्लाई थिला डिमांड ता आगु को थिला गोटे स्केल थिला तो से अनुसार मु तो ए मारिबी and answer is A because inflationary gap kotha ko gap not only inflation see d looks like more about inflation bujhi hoji na nahi d option out ke bolse a situation where excessive money supply in the economy leads to rise in prices where we will consider the concept of gap ithru gap kon bujhibo tebe bujhi hoji na nahi question ta बताओ inflationary gap पचार से gap डीटा मते ठीक लागुची इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव जति खली पचार जानते व्हाट इज इन्फ्लेशन ठीक अछि दिस इज आल्सो description of inflation this is also description of inflation but there is a gap because of it is a demand and for example supply एतिक अछि but demand एतिक अछि supply एथि अछि supply 80 demand होची 100 रो ताले there is a gap of 20 this is what we call inflationary gap बुझियला मन रहबो फाइन next question Dutch disease which of the following statement most appropriately refers to the Dutch disease see एगुडा सब current affair वाला concept in relation to the country's economy yes see correct yes पढ़ी दियो गोटे थरो with reference to the एडा गोटे को गोटे कहा गोटे पचरा भी हेतला गोटे YouTube रे मे भी देखथि गोटे मॉक इंटरव्यू सेतरे गोटे कैंडिडेट को रहला have you heard of Dutch disease तो Dutch disease रो कॉन्सेप्ट मेंस रे हां मेंस रे पचरथिला कि so with reference to the economy last year मेंस रे पचरथिला ना yes so Dutch disease originated in Netherlands कथा हो नेदरलैंड रे कोन ना गोटे पर्टिकुलर फिशिंग रे माने अधिक फिशिंग करबे देखला बेलू आउ किछ खाइया पिया को नथिवो गोटे रिसोर्स एते सफिशिएंट थिबो समस्त सब एम्प्लॉयमेंट जाके हेठी पसिक रहिबो देन माने चाष करिया के लोक नथिबे so Dutch disease originated in Netherlands after the discovery of there is a Groningen gas field in 1959 jodi gas media start hegala the Dutch disease in economy refers to a phenomenon where a country witness uneven growth across the sector due to discovery of natural resources especially large oil reserves according to the concept when a country discovers natural resources and starts exporting them to the rest of the world it causes the exchange rate of the currency to appreciate significantly and this in turn discourages the export from the other sector while encouraging the import of cheaper alternatives. Thus, Dutch disease refers to a situation where an increase in one form of net exports drives up a country's exchange rate. Such instances make other exports non-competitive in the world and market, impairs the ability to domestic products to compete with imports. Option A is incorrect. The ineffective तो एगुडा जणा अछि तो बस बुझियला ना ओडिसा को पर्सपेक्टिव रे डच डिजीज को जाय बिकॉज़ ओडिसा रे खणी अछि खणी थाई कि भी डेवलपमेंट कम होछि बिकॉज़ खणी को तो एक्सपोर्ट कर दो अलग जिंस गुडा को देखला चलो सब काम गुडा खणी रे यूज करो सब रिसोर्स को एंड अलग काम करो ही नहीं देन होय ना with reference to the following statement describe the best term of liquidity overhang see term गुडा एठू
भलो एक्चुअली क्वेश्चन गोडा जोडा कि करंट अफेयर गोडा कवर हे जो लिक्विडिटी ओवरहैंग भाबो 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 एग्जाम रे पड़ी जाय कोन करियो ए सिचुएशन तीनटा जगह रे सिचुएशन where bank faces a shortage of cash due to sudden increase in credit demand. A situation in which excess money supply in the banking system poses a potential risk of fueling inflation. A situation where commercial bank maintain higher statutory reserve. Adverse economic condition where expansionary monetary policy fails to stimulate credit growth and economy. B. I'll go C. Liquidity overhang ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଯେତେବେଳେ 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ वाला कॉन्सेप्ट थिला ना से टाइम रे ମୁଁ ପଢିଥିଲି 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ ओडा दिया हे गला बट सेटा नभा पई कि लोक रहिले बहुत मात्रा आसिकी रही गला. A situation in which excess money supply in the banking system possesses excess money supply in the banking. Adverse economic conditions where expansionary monetary policy fails to stimulate credit growth and economy. Correct. B also ठीक लागुची. एटा देखो a situation where bank faces a shortage of cash, liquidity overhang माने बुझी पर at shortage of cash देजी दीटा को contradict करूची होंगे नहीं. Am I right? Between B and C, between B and C. I'll go with C. Answer is C. A situation in which excess money supply in the banking system poses a potential risk of fueling inflation. It is a 2000 टका नोट बड़े मुझे जानते हैं liquidity overhang वाला concept में पढ़ते थे. Option C is the correct answer. Option C is the correct liquidity. Two ta concept liquidity trap and overhang. Liquidity trap, that is liquidity trap. So liquidity overhang refers to an excess supply of money and cash within an economy banking system that exceeds the current demand for it, often causing inflationary pressure or indicating a liquidity trap where monetary policy cannot easily spur further growth. It occurs when central bank pump in liquidity that remains stagnant rather than being spent or invested. Bank रे 2000 टका पड़ी की रहिला किंतु किसी फायदा नहीं. That is what we call liquidity overhang. Okay. 6 number question. What is this? Mock test one economic sectional test answer. Next is power of the yes. Bajra. Which of the following are most likely consequences of the reduction in repo rate? Most likely consequences of reduction of repo rate. 1 2 3 4 कोठी भी नहीं. चलो consequences of reduction of repo rate. Repo rate जदि कमी गला ताने कोन हबो सिस्टम को अधिक पैसा जीवो होंगे नहीं. Increase in money supply in the economy definitely. 4 टा तो definitely. तो ऑप्शन ए टा कटि गला. Okay. Then decrease interest rate for borrowers. Consequences of decrease interest rate of for the borrowers. Borrower पाई interest rate टा कमी जीवो. Yes. 3 टा भी ठीक अछि. तो 3 4 ताले 2 टा केवल देखियार अछि. 2 टा देखो 1 टा तो देखियार नहीं. 2 टा कोन reduction in inflation rates in the market. Reduction in inflation rates in the market. Money supply तो बढ़ो तो inflation rate टा कमी जीवो. मार्केट को आहुरी पैसा आसिलानी. 2 टा केते जण लागु हबो मते तो लागुनी. एंड 2 रा पॉसिबिलिटी भी देखो 50% अछि. करेक्ट. Yes. Increase of inflation. Okay. Next question. Consider the following. Which of the above forms form the money supply in the economy? Koutare money supply habo in the economy. Economy forms part of money supply. Or part of money supply. Cash in hands of the public. Checkable bank deposits, debit cards, certificate of deposit, deposits of bank with other banks. Money supply. Cash in the hand of public. Yes. Money supply M1, M2, M3, M4. से वाला concept रे पढ़ा है ठीक अछि. M1, M2 cash in public. M1, M2, M3, M4 रे पढ़ुचो ना होंगे नहीं भाई. 1 टा तो डेफिनेटली थिबो. तो 1 टा गले छाडी दियो सीटा को. चलो चेकेबल बैंक डिपॉजिट्स टिके रो. डेबिट कार्ड्स कार्ड कोन है concept मनी सप्लाई रा. 3 टा को जदि हम काट देबी आंसर 1 2 4. Yes.
सी बहुत स्पेसिफिक रुह जहाँ जानी 100% जहाँ तुम पढ़ी से अनुसार तुम आर्ग्यू भी कर भाई मुझे तो डेबिट कार्ड पढ़नी मनी सप्लाई रे बुझी हो ना बुझी होनी मुझे कौन कहूँ डेबिट कार्ड तुम पढ़ी कि मनी सप्लाई रे M1 M2 M3 M4 कोठी कहि परिबो कि भाई डेबिट कार्ड रो कांसेप्ट थिला क्रेडिट कार्ड रो कांसेप्ट थिला नाही ना तो से तीन टाको जदि मु काटि देली आंसर तो मिल गेला मते 1 2 4 काहे मु माथा गरम करबी कि भाई कोन हबो कोन नै 1 2 4 चेक करो 1 कोन थिला कैश इन द हैंड्स डेफिनेटली 2 चेकेबल बैंक डिपॉजिट चाहे से डिमांड डिपॉजिट हो या फिर टाइम डिपॉजिट हो सेटा मनी सप्लाई रे आसी जीवो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ बैंक विथ अदर बैंक्स सेटा केबे थोड़ी पड़ी जाओ बराबर नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी रो कांसेप्ट थिला डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होंगी नै एनडीटीएल रो कांसेप्ट रे भी थिला मनी सप्लाई रो कांसेप्ट सेटा नथला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मु करिछि बोली मो पाखर सर्टिफिकेट अछि सेविंग बैंक अकाउंट रे डिपॉजिट हो या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जनरली सेटा होछि फिक्स्ड डिपॉजिट वाला कांसेप्ट चले तो फिक्स्ड डिपॉजिट बेसिकली इनडायरेक्टली सर फिक्स्ड डिपॉजिट यस फिक्स्ड डिपॉजिट होछि कमर्शियल बैंक वाला रे फिक्स्ड डिपॉजिट कले सेटा मनी सप्लाई रो कांसेप्ट जिवो तो 4 5 करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following correct with reference to the reserve money M0 in India yes M0 Bajiramra question it includes odd deposit held by the commercial bank including saving and term deposits M0 an increase in M0 always leads to proportional increase in broad money M3 M0 जदि बढ़िला ताले M3 भी बढ़िबो से को the data on M0 is compiled on a weekly basis by the Reserve Bank of India it is the broadest measure of money supply in India what do you think M0 that is called reserve money RBI पाखरे जति पैसा अछि बैंकर्स माने जति पैसा RBI पाखरे डिपॉजिट करि रखछथि all deposits held by commercial bank including saving and term deposits that is M3 see M3 रे ताल तब कोन लिखिबो कमर्शियल बैंक रो सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट तो M3 ना आ पब्लिक पाखरे जति अछि प्लस कमर्शियल बैंक पाखरे जति अछि सब किछ डिपॉजिट that is M3 an increase in M0 always lead to proportional increase in broader money M3 केमिति कहि परिबो जदि M0 बढ़िला ताले M3 केमिति बढ़िबो M0 बढ़िला माने बैंकर रो डिपॉजिट जोडा RBI पाखरे अछि जदि सेटा बढ़ुची ताले बैंक पाखरे कम पैसा रहइबो the data on M0 is compiled on a weekly basis yes C और D भीतर मते D ही ठीक लागुची it is the broadest measure of money supply in India basically RBI जदि 100 टका प्रिंट कला सेही अनुसार broadest see M3 is the broader money definitely M3 M4 but broadest मु D ही मारुची but answer C अछि ठीक अछि त टिके पढि दबा reserve money M0 also known as high powered money or base money is the foundation of the monetary system it is the most liquidity form of money and serve as the base upon which commercial bank create money through lending reserve money is the sum of total currency in circulation along with bankers deposit with the Reserve Bank of India and other deposits with the apex bank बुझी होची बैंकर मानकर जेतिकी डिपॉजिट प्लस आउ किछि भी डिपॉजिट जोडा की आरबीआई पाखरे अछि आरबीआई पाखरे जो पैसा उडा अछि सेही पैसा ही कोआउची M0 but an increase in M0 does not always proportionally increase the broader money that is called M3 the relationship depends on the money multiplier which is influenced by factors like reserve ratio kete achi bank lending behavior kon achi public ro demand for cash kon achi the RBI implies or complies and publishes data on M0 weekly very important ए पॉइंट ता मन रखि थाओ टिके कोन ना M0 पर्सपेक्टिव रे RBI जो डाटा कंपोज करे सेटा वीकली कंपोज करे as part of its monetary policy statistical report framework M0 is the most liquid and fundamental measure of money but not the broadest measure of the money supply is in India is M3 captures the total liquidity in the economy including the bank created money making it broadest measure ठीक अछि तो broader money जो हा कहौ जे सेटा को M3 मानि के चलो and M0 is compiled on a weekly basis by the Reserve Bank of India this is correct अछि ठीक अछि this is the correct one weekly basis रे Reserve Bank of India M0 को publish कराए is that fine मन रेगो 10 नंबर क्वेश्चन which one of the following is the most likely outcome of a simultaneous decrease in personal income tax rates and an expansionary monetary policy बहुत बढ़िया क्वेश्चन बात which one of the following is the most likely outcome of simultaneous decrease in personal income tax तमे कमौछ that means कोन
मार्केट रे मनी सप्लाई तुम बढ़ाउछ सिस्टम को जाउछ सिस्टम रे पैसा रहउछ सिस्टम बाहर को जाउनी सिस्टम बाहर को गले आरबीआई था या फिर सिस्टम बाहर रे गवर्नमेंट अछि बर्तन एटा फिस्कल पॉलिसी रो कांसेप्ट मॉनेटरी पॉलिसी ले आरबीआई सिस्टम रो बाहर आरबीआई पाखरे जदी पैसा अधिक रहंता जदि तुम अधिक टैक्स दियंत ताले गवर्नमेंट पाखरे अधिक पैसा रहंता जोटा सिस्टम बाहर बट एबे सिस्टम भीतर पैसा अछि ताले मार्केट रे इन्फ्लेशन हबो an increase in aggregate demand and private investment db ही पारे a sharp contraction in aggregate contraction बोल से देखो ये डुअल पटे चलछि सिस्टम रे ही पैसा पूरा होछि सी फिस्कल पॉलिसी रे तमे इनकम टैक्स टा कमौछ इनकम टैक्स जदि तमे कमेइलो मु जोठी आगुरु 2 लाख टका गवर्नमेंट को दोउथली एबे मु आउ लाख टका दोउछि ताले मो पाखरे आहुरी 1 लाख टका रहला मो पाखरे जदि लाख टका रहला मु कोन करबी डिमांड को बढ़ेबी होंगी नहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रे मु पैसा यूज करबी तो बी टा मते ठीक लागुची सी मु पढिने पर्यंत डी भी पढिने किंतु ए टा पढिली ए शार्प कंट्रैक्शन इन एग्रीगेट डोमेस्टिक कंजम्पशन दिस इज रॉन्ग सडन राइज इन हाउसहोल्ड सेविंग करबी मु भाई लाख टका मोर हेमिति रे पळोदला सेविंग मु कोडी करबी मते इच्छा भाई लाख टका जाउदला दियो गोटे टीवी टा आनी किन दियो आगु लाख टका पळेदा एबे लाख टका तो अछि दियो टीवी रे किन दियो कि गाड़ी गोटे किन दियो सेहिथि में तो बर्तन देखो इकोनॉमी को बूस्ट करिया पई ही इनकम टैक्स को कमाई गला 12% जाय कहे गला 12% सॉरी 12 लाख जाय तो कौन सी इनकम टैक्स दवार नहीं ताले जो पैसा बळिबो से पैसा तमे कोन करिवो मार्केट रे डिमांड क्रिएट करिवो दैट्स हाउ आत्मनिर्भर भारत विल टेक्स प्लेस तारे को डिमांड बढ़िले प्रोडक्शन हबो सी देखो ए सिवियर रिडक्शन इन ओवरऑल मनी सप्लाई केमिति भाई सिवियर रिडक्शन हबो मनी सप्लाई तो अधिक लोक बाहर पैसा रहि जो सीटा तो कंप्लीटली रॉन्ग डी ए स्ट्रक्चरल डिक्रीज इन द करंट अकाउंट डेफिसिट ड्यू टू डीपली रिड्यूस्ड इंपोर्ट डिमांड हाउ कम रिड्यूस्ड इंपोर्ट डिमांड मो बाहर पैसा अछि मु डिमांड करूची दरकार पड़ले मु बाहर भी फॉरेन रू लैपटॉप टे मगे दे परबी डिड आई रॉन्ग सो आई विल गो फॉर बी एंड आंसर इज बी इज दैट क्लियर होप इट इज फाइन सी लॉजिक लगा एगुडा इजी क्वेश्चन ठीक अछि बट एटा गोटे भलो क्वेश्चन एटा बाजीराम नो क्वेश्चन गिव मी मिनिट ना check this question I'll be in 1 minute back. I'll be back in 1 minute. Okay, what is the answer? Which refers to the inflation in economy, consider the following statement. C. I don't want to read. Let me go to C, and that is correct. That's good. Everyone C is right? Okay, so we'll go to concept. So M1, M2, M3, M4. कहार डाउट अछि हो ऑलमोस्ट ठीक है देखिनो भाई एगुडा कोन आ कहबी M1 M2 दीटा क्लियरली देखा अछि M2 रे एपडा गोटे M3 रे केवल ए तीन नागो M4 रे सब पोस्टल बैंक एमिति भलिया गोटे सिंपल क्वेश्चन पचार देला ओपीएस रे करेंसी डिपॉजिट रेशियो करेंसी डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट जीडीपी डिफ्लेटर यस जीडीपी डिफ्लेटर रे कोन असुविधा अछि जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी
nominal GDP divided by real GDP. This is going to give me a deflator. एभला गोटे सकाळे तो क्वेश्चन रे करथिले से क्वेश्चन रे पडा वाला क्वेश्चन देखो the GDP deflator captures the price change in all domestically produced goods and services and does not rely on fixed basket of commodities. GDP deflator see GDP जेतल तुम कहूछ ये गोटे फिक्स्ड बास्केट ऑफ कमोडिटीज को जायनी GDP माने कोन whatever is being produced the final goods and services that has been produced in a domestic territory, correct? No. So GDP deflator ro concept hochi nominal GDP divided by real GDP into 100. So nominal GDP माने कोन ना GDP at constant price, GDP at base price into 100 ये है ना nominal माने GDP as माने common price जोटा market price not constant price. This is market price and it constant price नहीं GDP at constant price जोटा base year price. So demand pool inflation may arises when an increase in money supply cause aggregate demand to exceed the productive capacity of the economy. Demand pool inflation may happen. Demand अधिक होची जो थी कि supply हेती होनी. When an increase in money supply जदि अधिक हो ताले ही demand बढ़ियो किंतु supply बढ़ी नथिबो. Supply बढ़िनी माने GDP बढ़िनी production हेनी सेतिकी but money supply लगी demand होची. Yes, demand pool inflation may arise. Yes. होंगी नहीं. Fine. And it is the GDP CDS रे पता गोटे question which of the following statement is incorrect with respect to which of the following statement is correct. GDP deflator captures the average price of an unchanging basket of commodity that constitute the GDP of that country. Captures the average price of an unchanging. GDP deflator can be used to measure the real GDP of the economy but not the inflation rate. Real GDP केते अछि सेटा calculate करि जाय परिबो economy रो but not the inflation rate. What is the answer? 1 2 both 1 and 2. Okay, I want you people to do GDP deflator captures the average price of an unchanging basket commodity that constitute the GDP of the country. GDP deflator can be used to measure the real GDP but not the inflation rate. Inflation rate को GDP deflator calculate कर ही परिबोनी से. Answer is neither 1 and 2. Neither 1 nor 2. 1 कौन दिला GDP deflator captures the average price of an unchanging. Is it capturing the average price of an unchanging basket of commodities that constitute the GDP? See, मु कौन कहली GDP deflator कौन दिला GDP deflator होची GDP of market price divided by GDP of at constant price. एथिरु फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस अनुसार बर्तमान गोटे प्रोडक्ट रो कॉस्ट हो जाई माने भाबी न गुड्स ऑफ गोटे माने गोटे बास्केट रे बेसिकली हाट को गली हाट रे आगुरु आलू बैगण टमाटो पियाज चारटा प्रोडक्ट आनुथली ए चारटा प्रोडक्ट भाबी न देश रे केवल ए चारिटा ही प्रोड्यूस होची. बर्तमान प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रे से बैग रो कॉस्ट होची 500 टका. बेस ईयर रे से बैग रो कॉस्ट थिला 250 टका. 2 times increase होची. Can I say this is what we called the inflation has been there in the market? 100 गुना होंगी नहीं into 100 भी यूज होगा ना 200 टाइम्स मार्केट रे 200 टाइम्स इंक्रीमेंट है. GDP deflator can be used to measure real GDP but not the inflation. भाई inflation rate मत straight forward मिलु चेठी तो 2 टा तो wrong ही वाला. GDP deflator capture the average price of an unchanging basket of commodity that constitute the GDP of the country. No, it is capturing the inflation in the country not average price वगैरह. से प्राइस रू मते कोन मिलियो भाई GDP deflator मते 200 मिलुची 200 रू मो कोन प्राइस मिलियो किछि नहीं बुझियो ना बुझियो. Okay, so currency to deposit ratio, currency by deposit जदि 100 rupees जदि currency deposit होउची तारे नो with respect to public पाखरे केते currency रहउची and deposit केते होउची. 100 टंका रु जदि 50 टका पब्लिक रखि देला निज हाथ रे करेंसी आकार रे आउ 50 टका जदि डिपॉजिट कर देला ताले सीडीआर हे जाउची 1. रिजर्व डिपॉजिट रेशियो कोन with respect to bank
गोटे हूँ करेन्सी डिपोजिट रेशियो दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू पब्लिक माने तुम हिसाब रे मु तुमको 100 टका देली तुम निज पाखे 10 टका रखी 90 टका डिपोजिट कर दो ताले 10 टका बाई 90 टका करेक्ट नो 10 बाई 90 सॉरी 10 बाई 90 जदि मु कहबी कि रिजर्व डिपोजिट रेशियो तो रिजर्व केते रहूची एंड डिपोजिट केते हेतला रिजर्व बैंक रखुची 20 एंड डिपोजिट हेतला 100 दैट इज 0.2 that is what you call reserve deposit ratio. Now the next concept is if CDR decreases CDR decrease करूची that means CDR रो फॉर्मूला कोन ना currency divided by deposit एया ना डिक्रीज करूची माने लोक बाहर करेंसी कमउची am I right या फिर डिपोजिट जदि बढ़ुची ताले जदि जते बैंक रे डिपोजिट हबो जते करेंसी लोक हाथ रे कमिबो ताले बैंक पाखरे कोन हबो अधिक लोनेबल फंड रहबो से लोनेबल फंड जते अधिक रहइबो बैंक जिते अधिक लोन दे पारिबो मनी मल्टीप्लायर से बढ़िबो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी एगुडा ऑलरेडी तुम जानिछो फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट एगुडा सब ऑलरेडी जानिछो नेक्स्ट कांसेप्ट इज क्वांटिटेटिव मेथड्स जोथरे सीआरआर एसएलआर रेपो रिवर्स रेपो एगुडा भी तुम जानिछो एक्चुअली सी देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ सीआरआर शेड्यूल बैंक आरबीआई एक्ट 1934 पई नॉन शेड्यूल बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तक पई 1949 रहिबो ए जो सीआरआर सेगुडा केमिति रहिबो ना एवरेज डेली बैलेंस ऑफ नेट डिमांड लायबिलिटी एनडीटीएल रो डेली बैलेंस जति अछि which bank necessarily keep with the central bank in cash कोथि रखियो ता कैश रे all bank must keep CRR RBI may prescribe separate percentage of norms slabs for RRB differential bank गुडा पई RBI separate रखि पारे स्लैब कि से माने केते परसेंट CRR रखिबे बट जति कमर्शियल बैंक अछथि समस्त यूनिवर्सल बैंक गुडा समस्त CRR रखिबे सो करंट CRR से टाइम रे थिला 3% देन ताकू बढ़ा भी जाइतिला तेनु CRR बढ़ुची कमुची we don't have to remember we have to remember if CRR increases that means tight monetary policy if CRR decreases that means cheap monetary policy then there is a concept of in incremental CRR what is incremental CRR na withdrawn 2000 rupees जेतल 2000 rupees अधिक हे गला बैंक पाखरे 10% extra money to be deposited with RBI लोक मानु कहला कि भाई हमें 2000 टका विथड्रॉ करछु त देन बैंक पाखरे बहुत पैसा हे गला 2000 टका देन बैंक वाला कहला भाई तुम गोटे काम करो बैंक वाला बर्तन कहउछनी हमें बर्तन जो 2000 टका हम पाखरे हे गला ना बर्तन हे 2000 टका हमें तो काहू दे परिबुनु बुझी होछि ना नहीं लोक आनी कि बैंक रे दोछंदी देन बैंक जते लोक को दबा लोक नबा कि ने पेरी ना ताले से 2000 टका परिबो कोन बैंक पाखरे तो एक्स्ट्रा हला बर्तन से सी 2000 टका कांसेप्ट भल से बुझो इट हैज नॉट बीन डिमोनेटाइज्ड correct no it has been removed from the circulation how it has been removed from the circulation मो पाखरे 2000 टका नोट ताइला मु नै कि मो बैंक खाता रे डिपॉजिट कर देली तो मो बैंक खाता रे जते डिपॉजिट कर देली मो बैंक खाता रे 10000 टका थिला बर्तन हे गला 12000 टका ताने ए 2000 टका मते बैंक इंटरेस्ट दबो ना दबोनी दबो होंगी नहीं बैंक पाखरे किंतु 2000 टका रहला बर्तन बैंक ए 2000 टका को संगे संगे से खेलै परिबो कि लोन रे नहीं ना का को दबो भाई से लोक कहबे भाई मु नै कि 2000 टका कोन करबी पुनी काली आनी तो बैंक रे थोइबी मते 2000 टका दियो 500 टका दियो काहे ना 2000 टका पा सर्कुलेशन बारी गला ताने लोक नै पेरी ताने 2000 टका रो रुपीस गोडा बैंक पाखरे बहुत सारा अमाउंट डिपॉजिट हेजो बर्तन बैंक जदी एते अमाउंट डिपॉजिट हबा आन काहू से लोन दे पारुनी अल्टीमेटली बैंक करिवो कोन से 2000 जति टका 2000 टका डिपॉजिट हेजी बैंक माने सेति टका रो इंटरेस्ट रेट देबे ना नहीं बोरो डिपॉजिट देबे ताले बैंक पैसा को आनिबो that's why there is a concept of incremental CRR withdrawn 2000 10% extra money to be deposited with RBI liquidity overhang thila more money with bank people not taking loan बहुत बैंक पाखरे जदी बहुत पैसा गला लोक लोन नो ना तान लिक्विडिटी ओवरहैंग हो जो कोठी ना बैंक दिस इज द कांसेप्ट तो एसएलआर कांसेप्ट तो हमें ऑलरेडी जानि छे कि रेशियो ऑफ एनडीटीएल ऑफ द बैंक इन इंडिया माइनस बैंक हैज टू मेंटेन विथ इटसेल्फ जो एनडीटीएल जुति की तार अछि 18% की जहां भी सेटा तार बैंक निज पाखरे रखियो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी एसेट्स सच एज कैश रे रखबेरो गोल्ड रखबेरो गवर्नमेंट सिक्युरिटीज रे भी रखबेरो बट जनरली कैश रे प्रेफर करन बट लिक्विड रे रहिबा दरकार लिक्विडिटी दैट्स व्हाई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड प्रेजेंट 18% सेटल दिला एबे चेंज आ जाई कि होडा दरकार नै पर्पस गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम बैंक गवर्नमेंट पर बैंक रु बोरो करी परिबो काहे ना गवर्नमेंट सिक्युरिटीज किनि छी ना
नले गवर्नमेंट सिक्युरिटीज बैंक गवर्नमेंट बिकिबो किंतु बैंक पई मैंडेटरी नाही कि 18% रे ताकू रखियार अछि देन बैंक जति चाहिबो कोथरे पैसा सब कोन गोल्ड किनि रखि दबो देन गवर्नमेंट जतले गवर्नमेंट सिक्युरिटीज दबो ताकू पैसा के दबो सो पर्पस होची गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम बैंक by selling government securities जोटा कि 18% SLR रे भी रहि जिवो enough cash to run the daily operations yes and CRR SLR on fortnight basis banking regulation act 1949 हैला कि जदि नॉन मेंटेनेंस में रहिला CRR SLR जदि तमे मेंटेन न कलो ताहाले पेनाल्टी को अट्रैक्ट करिवो ताले CRR और SLR on fortnight 14 दिन रे थरे वाला कांसेप्ट रे CRR और SLR को काउंट करा जिवो NDTL को चेक करी इज दैट क्लियर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कथा कहली मु बैंक रेट वगैरह भी दिस इज नॉट दैट मच इंपोर्टेंट मार्जिनल स्टैंडिंग MSF ऑलरेडी कहली पेनाल्टी वाला लागि जिवो ओपन मार्केट ऑपरेशंस conducted by central bank from time to time keeps buying and selling of GSEC to and from banks and financial institutions open market operation is also simple operation twist and open market operations RBI sell kari dechi government securities sorry RBI buy kari government securities ताले market रे money inject हेजी then RBI को लागिला कि भाई market रो money को withdraw करियार अछि then RBI कोन करिवो withdraw करिवो केमिति जतले RBI पुणी financial institutions that is what we call open market operation generally during the time of inflation ताले inflation time रे open market operation कोन हबो market रो अधिक पैसा आसी RBI किनिबो ना बिकिबो what do you think RBI किनिबो ना बिकिबो RBI will purchase or RBI will sell inflation time रे inflation सेल करिवो यस सेल कले मार्केट रो पैसा आसीबो परचेज कले मार्केट को पैसा दबो देन आहुरी इन्फ्लेशन बढ़ियो करेक्ट नो यस से कांसेप्ट टिके देखु दियो ऑपरेशनल ट्विस्ट नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू स्टैंडिंग डिवाइस SDM ऊपर कर दिले क्वांटिटेटिव इजिंग भी हमको दरकार नहीं जिसा एक्विजिशन प्रोग्राम क्वांटिटेटिव टूल्स एगुडा ऑलरेडी तमे जानि छो क्वालिटेटिव टूल्स वगैरह ऑलरेडी जानि छो सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी this one monetary policy committee okay that will do tomorrow evening okay so with that economy will be completed then post economy will start with polity and geography these three are the major thing and environment jodi time hela to environment भी but economy polity and geography तो मु parallel करूथिले टिके एबे होल्ड करि रखिछि इकोनॉमी टा सार देकी देन आउट स्टार्ट करदा देन काली सकाळी ही बेटा होबा प्रिफरेबली सकाळी ही इकोनॉमिक्स टा करिवा संध्याळे ज्योग्राफी करिवा फाइन ओके आ बाकी दिनटा जाक भाई तमे तमर जहा अछि ना ताको रिवाइज करो फोकस ऑन योर करंट सॉरी फॉर स्टैटिक एंड ता सहित जदी करंट जहा भी मिलुछि टिके टिके देखि दियो जोडा न्यूज रे अछि बिकॉज़ से करंट जहा भी पतारिबो ना तमे जते पढिले भी सेठी माइंड लगे करियाडा होछि टफ एलिमिनेटर कांसेप्ट थिबो देन आराम से करिवो ठीक अछि चलो थैंक यू एवरीवन So yesterday we were discussing on quantitative tools, right? So quantitative tools. Today we'll also see a little bit of quantitative tools and qualitative tools, and we'll further continue. So quantitative tools. The quantitative tray हमें कहले कि that is related to that CRR, SLR, repo, reverse repo सहित concept of MSF or bank rate, reverse repo सहित concept of SDF. ये सब ऑलरेडी हमें कथा हेतले देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड ऑपरेशन ट्विस्ट ये सब कांसेप्ट थिला जोटा कि क्वांटिटेटिव रे चले देन देयर इज ए समथिंग कॉल्ड क्वालिटेटिव टूल तो क्वालिटेटिव टूल रे कोन होछि ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन टू ए पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी नोन एज सेक्शन सिलेक्टिव क्रेडिट टूल गोटे पर्टिकुलर सेक्शन को मते डिस्ट्रीब्यूट करियार अछि लोन टा दैट इज सिलेक्टिव क्रेडिट टूल कि क्रेडिट तो मु देबी किंतु सिलेक्टिवली देबी तो जोथरे फर्स्ट अछि कि डेवलपमेंट कांसेप्ट तो से डेवलपमेंट कांसेप्ट रे गोटे होछि कांसेप्ट कोन ना रेशनिंग ऑफ क्रेडिट एम होची इन्वेस्टमेंट बढ़ियार अछि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ियार अछि इनइक्वालिटी को डिक्रीज करियार अछि रेशनिंग ऑफ द क्रेडिट कि प्रॉपर्ली समस्त पाखरे इक्वालिटी वे रे लोन टाको दबाको पड़ियो एसबीआई कोन करछि आस्किंग मनी टू स्मॉल बिजनेसमैन 50 लाख जदी समान रतन टाटा मागुचंदी पैसा तो एसबीआई रतन टाटा को अधिक दबो काहे ना से जानि छि रतन टाटा को जो पैसा दबो सेटा बुडीबोनी किंतु जदी गोटे स्मॉल बिजनेसमैन को दबो मे बी एसबीआई को जना पड़ि भाई से पैसाटा रिटर्न आसी न पारे एनपीए ही जाय पारे जो बैंक से प्रिफर करियो स्मॉल बिजनेसमैन को न दवा पाई सो दैट्स व्हाई एसबीआई मे शट डाउन एंड वोंट रिसीव द मनी
small businessman or company टा may be shut down ହେଇଯାଇ ପାରେ, but ରତନ ଟାଟା as risk is lower due to larger company, but SBI को କୁହାଲା ତାହେଲେ is not SBI କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନେ ପ୍ରିଫର କରିବେ ଭଲ ଭଲ ବଡ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ଏଥିରେ ହବ କଣ ନା ଧନୀ ଲୋକ ଧନୀ ହବ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ବଟ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଗରିବ ଲୋକ କେବେ ଖୁସି, ଯଦି କ୍ରେଡିଟ ମୋ ପାଖରେ ଆସୁନି ତାହେଲେ obviously ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢି ବି ପାରିବିନି। ସୋ ଫାର୍ମର ଲୋନ୍ ୱେଭର କନସେପ୍ଟ, ତାହେଲେ ଫାର୍ମର କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ କଣ ଲୋନ୍ ୱେଭର କନସେପ୍ଟ, ଲେସ୍ କାପାସିଟି ଟୁ ରିପେ, फार्मर पाखे पैसा भी नथिबो रिपे करिया भी। जो कॉन्सेप्ट रे एमाने कहले कि भाई विल ब्रिंग समथिंग कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स, लोन शुड बी गिवन टू ऑल, लोन शुड बी गिवन टू वन। सो आरबीआई को आरबीआई कहला बैंक मानु कि भाई मिनिमम 40% तुमको दबाव पड़ो कोठी ना प्रायोरिटी सेक्टर। तो को सेक्टर को प्रायोरिटाइज कराला ना प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म में मिनिमम कोटा रहला सितंबर 2020 अनुसार। वीकर सेक्शन एससी एसटी फिजिकल हैंडिकैप वुमेन एंड माइनॉरिटी 10%, वीकर सेक्शन को तमे दो 10% लोन। एग्रीकल्चर ऑल स्मॉल एंड बिग फार्मर 10% एंड मिनिमम कोटा थिला सेप्टेम्बर 2020 रिवाइज हेकी वीकर सेक्शन टा हेगला 12%, एग्रीकल्चर स्मॉल एंड बिग फार्मर रहला 8% एंड एग्रीकल्चर अप टू 1 हेक्टर एंड मार्जिनल 1 to 2 हेक्टर स्मॉल जोटा आगु 8% थिला मीन स्मॉल फार्मर जोटा आगु 8% थिला सेटा हेगला 10%। एठी बिग फार्मर अछि बोली एटाको 10 रु 8 कराई देले कमे देले टिके काइना बिग फार्मर पाखरे तो पैसा दिबो भी, बट स्मॉल फार्मर पाखरे 8% थिला सेटा को बढ़ाई देकी 10% कर दे। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर केते 18% बुझियला 18%। 12% होची तमर वीकर सेक्शन एमिति रे 30 पळेला आ बाकी रहिला केते 18 12 30 पळेला आ रहिला 10%। माइक्रो एंटरप्राइज खदी विलेज इंडस्ट्री 7.5% एंड ऑल एबव आउ जदी भी बळिला आउ 2.5% तमे ए कैटेगरी रे काहाकू भी दियो या फिर एमएसएमई रे दियो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना लोन दियो या फिर एक्सपोर्टर को दियो और अदर स्टार्टअप वगैरह हे गला या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हेल्थ सेक्टर कोठी भी तमे आउ 2.5% देई परिबो। जदी स्टार्टअप को दोचो ताले अप टू 50 कोटी जाय तमे देई परिबो लोन, रिन्यूएबल एनर्जी को दोचो 15 रु 30 कोटी जाय देई परिबो, हेल्थ सेक्टर रे दोचो जदी 5 रु 10% देई परिबो। तो इंपोर्टेंट 12% एठी एग्रीकल्चर रे 18%, वीकर सेक्शन 12%, एग्रीकल्चर 18%, सी कवर अप होगला 30%, 7.5% इज रिलेटेड टू माइक्रो खदी विलेज इंडस्ट्री वाला एंड 4.5% 4.5 2.5% हेगला लाटरल 2.5% सेटा हे जाउची तमर कहा पई ना अदर्स जोथिरे तमर स्टार्टअप वगैरह रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह ए सब किछि तमर सेइथिरे ही पळे आसो। दिस इज इंपोर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ओके, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रे लैंड होल्डिंग कैटेगरी ऑफ फार्मर, तो लैंड होल्डिंग एंड कैटेगरी ऑफ फार्मर रे देखो जदी 2 हेक्टर जाए जने लैंड होल्ड करूची दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जोड़ा कि 86% अछने। 2 रु 10 हेक्टर मीडियम फार्मर 5.8% लगभग अछने इंडिया रो, ग्रेटर देन 10 हेक्टर लार्ज फार्मर 0.1%। सो पीएसएल इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन 1968 40% लोन दिया एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्टर मानकू। 2019 रे आरबीआई रो यूके सिन्हा कमिटी आसिला एमएसएमई लोन, यूपीएससी रे इथरो पचार दिला रिलेटेड हो सारा कमिटी आरबीआई रो कमिटी वगैरह। तो 2019 रे आरबीआई रो यूके सिन्हा कमिटी सी कहले कि भाई एमएसएमई लोन रिफॉर्म करा जाऊ। 2020 रे आरबीआई रिफॉर्म कला वेटेज टू पुअर डिस्ट्रिक्ट अनुसार वेटेज दियाला। पीएसएल रिफॉर्म 2020 अनुसार 40% को 40% रहला, आरआरबी 75% को 75% रहला, एसएबी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक 75% थिला, सीएबी 75% रहला, यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जे आगु 40% दियाला भाई अर्बन रे भी दाउ कहला भाई ना 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 तते भी भाई 75% दाउ पड़ो कोऑपरेटिव बैंक। इफ यू आर कोऑपरेटिव बैंक अर्बन रे हो या फिर रूरल रे हो कोऑपरेटिव बैंक जनरली तो तांकू जोटा 40% थिला सेटा को भी 75% कर दिया गला। इज दैट क्लियर? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। लेट्स सी सम क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। In the context of banking in India, consider the following. Any amount of bank loans given to the individual households for renewable energy projects qualify under the priority sector lending. भाई एबे ही मुतमो देखितली renewable energy up to 30 कोटी होंगे नहीं। Any amount of bank loans given to the individual household
Is that clear? One ta to kati jibo, any amount. Okay. Housing loans to bank's own employees on commercial terms applicable to other customers are eligible for classification under credit. Housing loans to bank's own employees on commercial term applicable to the customers are eligible for classification under private sector loan. Still, I am not sure. One ta jodi mu kati debi answer 3 and 3 4 re rahebo. Two ta to mate hemidire bi worried hobaro katha nahi. 3 पढ़ो. Loans to individual for educational purpose not exceeding 25 lakhs on qualify under the priority sector lending. 3 is by default correct अछि. A B भीतर जदि आंसर थिबो 3 by default correct अछि. 4 देखो. Loans that are given against gold as a collateral for undertaking agricultural activity automatically becomes ineligible for classification as priority sector lending. Automatically loans that are given against the gold जने जदि सुना देकी collateral देकी से जदि लोन टा नहीं जी ताहले सेटा ऑटोमेटिकली बिकम इनएलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंड एंड एग्रीकल्चर पाई नहीं छी चाहे से कोथि पे नो इनएलिजिबल नहीं जो कोथि से चारिटार ऑप्शन भी देखो केते परसेंट अछि 50% 4 4 50% बी आउ डी जदि मो देखिबी 50% बट 3 टा 75% 1 टा 50% 2 टा तो जमा नहीं सो कैन आई गो विथ 3 ए सी आई डोंट नो मच बट एतिकी एकटा को मु जानि छी एकटा जस्ट मु पढिली बोली जानि छी जदि आज एना न पढी ताने ताले भी एटा भी जानि न होंगे नहीं एनी अमाउंट ऑफ बैंक लोन्स गिवन टू द इंडिविजुअल हाउसहोल्ड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज दैट करेक्ट दैट इज रॉन्ग जदि सेटा रॉन्ग हे गला ताहले मते आंसर मिल जाउची ए आउ बी भितरे 4 टा को मु जतले पढौची से कोची ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड दैट इज रॉन्ग सो आई विल गो विथ ए and that is the correct one. See बुझी होची ना क्वेश्चन लागी पारे टफ लागिबो भाई मु किछि पढिनी तो पढिथिलो कि सब बुझी यार सब किछि पढिथिले कि पीएसएल रे भाई हमें कैटेगरी रे पढिथिले बट एते डिटेल रे भी पढाई नथला बट हां ताको अटेम्प्ट तो नबार अछि सी जदि तबे 50 50 एलिमिनेट कर दो मु भाई कहबे कि अटेम्प्ट तो जमे जेमिति नै कि आसो चाहे ए आउ बी भी मारो किछि नै आउ कोठी केबे ना केबे ए बी भीतर ए भी मारी के आसो जोटा ठीक भी हिजो 50 50 को जदि पळे आसो मु कहू कि अटेम्प्ट नो वन टा को जदि तबे 100% एलिमिनेट कर दो सी डी कटि गला आ बाकी ए बी भीतर मींस 50% प्रोबेबिलिटी रे तमे अछो आइदर ए आंसर हो नले बी आंसर हो तो डेफिनेटली मारी एमिति न कि छाडी देबी सेटा ठीक अछि सो आंसर होउची 3 लोन्स गिवन फॉर एजुकेशनल पर्पस not exceeding 25 lakh qualify under the priority sector lending. Okay, mone rakhibi bhai आउ बाकी जो तीन टा होतिला हाउसिंग लोन्स टू बैंक ओन्स एम्प्लॉय ऑन कमर्शियल टर्म एप्लीकेबल टू अदर कस्टमर्स आर एलिजिबल सेटा हबनी तो से कहि दोची कि ऑप्शन 1 टा जो देखियो पीएसएल ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट बैंक लोन्स अप टू ए लिमिट ऑफ 35 crore टू बोरोअर्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्रोग्राम बुझी होची देखो देखो भल से देखो बैंक लोन अप टू ए लिमिट ऑफ 35 crore फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एमिति न कि एनी अमाउंट that was wrong. Option 2 is incorrect. Housing loans to bank own employee are not eligible for classification under the priority sector lending, irrespective of whether they are extended to commercial term or subsidized rates. Jaha bhi ho. Option 3. Loans individual for educational purpose, including vocational courses, up to 25 lakh. Will be considered as eligible, not exceeding or up to 25 lakh. Loan जदि 25 लाख भितर होची एजुकेशन पर्पस एंड एजुकेशन पर्पस एटा कोठी आसीओ मैक्सिमम केते परसेंट अछि तार 2.5% मन पडुची 2020 रो रिफॉर्म अनुसार पर लास्ट अदर सेक्टर सेइथिरे ही एजुकेशन टा आसीओ डन ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस आर activity beneficiary specific and are not based on type of collateral very important it is are based on the activity and beneficiary specific कि से लोकोटा small marginal na big farmer and what type of activities they are doing whether they are MSME or weaker section beneficiary weaker section they are not related to collateral therefore bank loans given to individual business for undertaking agricultural activities do not automatically become ineligible for priority sector classification only on account of the fact that the underlying asset is gold jewelry or ornament से जहां भी हो collateral चाहे से किसी भी दो जदि से लोन दिया है एंड जदि से लोकोटा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर और बिग फार्मर व्हाटएवर इट इज जदि से फार्मर एंड जदि से फार्मर कैटेगरी भितर पीएसएल लाग जाउची देन इट विल बी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नॉट इट इज ऑटोमेटिकली एमिन नो कि से डिस्क्वालिफाइड हो करेक्ट नो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वाज अ गुड क्वेश्चन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ qualitative instruments of credit control used in the Reserve Bank of India? Credit rationing, moral suasion, direct action, consumer credit regulation. What is the answer?
Yes. Everyone, ebe hi to padhile. This is also correct. Next question. In the following in the context of priority sector lending, consider the following categories: bank, RRB, SFB, PB. How many of the above categories of the bank are required to extend at least 75% of their adjusted net bank credit towards priority sector lending? Payment bank, what is this? Loan hi dei pariboni, ha ki nahi? Only two. Super. Only one now. RRB, SFB. RRB dei paribo 75%, SFB bhi dei paribo. Why? Let's see. Okay. See, priority sector means those sector of government. RRB, okay. As per the Reserve Bank of India guidelines, priority sector lending, domestic scheduled commercial bank or foreign banks with 20 branches and above are mandated to allocate 40% of their adjusted net bank credit or the credit equivalent of balance sheet exposure. जहाँ भी आमको एते भीतर बुझी पार नहीं, which is higher. तो basically जदि कौनसी भी बैंक, जदि से not कौनसी भी बैंक, जदि शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक रे यूनिवर्सल बैंक रे तीनटा कैटेगरी अछि, गोटे पब्लिक, गोटे प्राइवेट आ गोटे तमरो फॉरेन बैंक. जदि फॉरेन बैंक भी अछि एंड तार ग्रेटर देन 20 ब्रांचेस अछि, फॉरेन बैंक विथ 20 ब्रांचेस एंड अबव अछि, ताले से माने 40% ऑफ देयर ANBC adjusted net bank credit से माने 40% से माने देबे, whichever is there. As per the preceding March 31 what change is towards priority sector, option 1 is correct. Regional rural bank are required to maintain a target of 75% of their outstanding advances for priority sector lending. Fine. Along with the subsector target. Option 2 is incorrect because initially small financial bank were required to extend 75% of their ANBC or credit rationing of balance exposure to sector eligible for classification on basis. However, in July 2025, there is a change. RBI relaxed the norm and reduced the PSL target to 60% of ANBC, whichever is higher. Option 3 is incorrect. Payment bank are not permitted to undertake lending activities. So, टिके modify करिबा 2020 ର रिफॉर्म रे एटा थिला 75%, बट ये फर्दर चेंज हो जाई कि ये 60% हो जाई छि. दिस इज द करंट अफेयर. मन रहबो एसएफबी 75% रो 60% हो जाई छि. एक्चुअली देयर आर द डॉक्यूमेंट जोटा मु पढी थिले, बट मु भूली गली कि 75% ता नाही हो. बट ठीक अछि सर, फुल पेज टा देखिबे, स्क्रीनशॉट नबे. ठीक अछि सर. क्वेश्चन भी दरकार की नोट देखो ये कौन आस पर या फिर ट्राई दिस. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following: greater flexibility in credit allocation, reducing risk from micro lending, improvable asset quality. How many of the above are most likely benefits of reduced priority sector lending target for small financial bank? SFB रो priority sector lending टा कमी दिया है. Again current affair. And कहारा बजराम रो SFB रो priority sector lending target टा कमी दिया है. कोउथि पे कमाई दो? Greater flexibility in credit allocation can be flexibility रो ताको credit allocation करिया पई कमे दियो ताकि आउट के अधिक दे. Reduce risk from micro lending, yes. Improved asset quality, reduce risk from micro lending जदि मन इच्छा करिवे से माने micro lending and improved asset quality. All the three, I am going with all the three, and that is the answer also. Okay, most likely benefit reduced. See, 75% आगु दिया होतला जोथरे कि MSME ओडा को भी ताको पैसा दवार थिला, तो माइक्रो लेंडिंग मन इच्छा करि परिबे. स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ताका पारे पावर भी नथिबो, लोक संख्या भी नथिबे, माने एम्प्लॉय जो माने जाय कि लेंडिंग जो ओडा हे जे ओडा उठी के आनी परिबे, तो एनपीए हबार चांसेस अधिक थिला. तेनो एमाने कहले ठीक 60% कर, आ बाकी 40% तमे तमरो जदि धनी लोक को दबार गछे दियो. ठीक अछि. सो दिस इज व्हाट 75% रु एटा हे जाय 60% भाई मन रखो. सी मु कहजना करंट अफेयर तो पढिबो एंड क्वेश्चन करिवो, क्वेश्चन कले अधिक टेंशन रहइबो. ठीक अछि. 75% रु 60% एडजस्टेड गला. इट इज एक्सपेक्टेड टू फ्रीड अप टू 41,000 crore. About 15% of their advances as of March 31, 2008. This freed capital can be redirected, lower risk
higher yield sector like secured retail loans, MSME financing, and house financing. The move provided SFB greater flexibility in credit allocation, reduced concentration of risk from micro lending. So point 1, 2, 3 all are correct. The relaxation in private sector lending target gives small financial bank. The flexibility would be the content. Okay, these are simple terms. Next question. 5 number question. Under the following statement with regard to urban cooperative banks, these are required to achieve a priority sector lending in PSL of 40%. 2020 रे भाई 40% सेटा तो कराई जायछि 75%. तीनटा देखो तो तीनटा तो रंग हेगला ताले आंसर 1 and 1 2 भितरे बर्तन 1 and 1 2 भितरे केवल मते 2 टा ही पढियार अछि. What is 2? The Reserve Bank of India has extended the prompt corrective actions PCA framework to UCB. PCA framework the Reserve Bank and 2 बर्तन भाबो तमे 2 टा किछि जानि न 2 रो पॉसिबिलिटी केते अछि 50%, 3 रो पॉसिबिलिटी केते अछि 50%, 1 रो पॉसिबिलिटी केते अछि 75%. Then Bhavino, whether Reserve Bank of India has extended the prompt PCA framework to UCB or not, if I am not sure, बर्तन मते A और B भितर आंसर बारे अछि. What do you think? What do you learn? See, जेमि देले तो मार्क करियो पड़े because 50%. 1 टा तो by default ठीक अछि. पढि दियो जदि 1 2 भितर लिंक थिबो किछि जणा भी पढि दियो. These are registered under the Cooperative Society Acts of the State and Multi-State Cooperative Society Act 2002. 1 टा तो by default ठीक अछि. 1 and 2. What you will go for 2? The Reserve Bank of India has extended the prompt corrective action PCA framework to urban cooperative banks. Urban cooperative banks. Shall I go with 1 and 2? Yes, I will go with 1 and 2. And answer is correct. See, एठी जदि see एठी भी कोन मु मारि परथांदी ना नहीं. First भाई मु कहू जे ब्रह्मास्त्र होची सबटु लास्ट अस्त्र. Correct no? जो थिरे पॉसिबिलिटी तमे चेक करी मारछो. First लॉजिक लगाओ. बर्तन तो मते को कोऑपरेटिव बैंक जदि रूरल रे थांदा ताहले आरबीआई हेते मुंडो पुराइनी से स्टेट ऊपर छाड़ दियो होंगी नहीं. बट एटा अर्बन रे अछि ये मल्टी स्टेट भी हे परिबो. अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी जोटा सेटा मल्टी स्टेट भी हे परिबो. जदि मल्टी स्टेट ऊपर हबो ताले आरआरबी सॉरी आरबीआई से कोन केवल स्टेट को छाड़ दबो. को स्टेट बुझियो सेटा जदि ओडिसा रे छत्तीसगढ़ रे एंड वेस्ट बंगाल रे अर्बन मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी अछि XYZ बैंक ताकू आरबीआई बुझियो ना स्टेट बुझियो. जदि स्टेट बुझला को स्टेट बुझियो छत्तीसगढ़ बुझियो से बैंक टाकू ना ओडिसा बुझियो ना बेंगल बुझियो. तो से पर्सपेक्टिव रे जदि मु देखिबी ताले आरबीआई बुझियो. जदि आरबीआई बुझियो ताले आरबीआई रो जो फ्रेमवर्क अछि से एक्सटेंड भी करबो किछ असुविधा नै. लेट्स सी ऑप्शन 2 इज करेक्ट. व्हाई ऑप्शन 2 इज करेक्ट? The RBI has extended prompt corrective actions PCA framework to UCB effective from April 1, 2025, replacing the earlier supervisory action framework to strengthen financial discipline based on the capital adequacy and asset quality and profitability parameters. So statement 2 is also correct. This is also current affair question. UCB buying urban cooperative, not universal commercial bank. This is urban cooperative bank buying. They are registered as a cooperative society under Cooperative Societies Act. See, cooperative society बहुत important. Okay, question पड़े इस पर of the respective state government urban cooperative bank respective state government रो cooperative society act रे भी अछि plus multi state cooperative bank रो society act रे भी अछि and administered by the government of India. तो state द्वारा भी administered हो and government of India द्वारा भी administered हो. तो ये तो ठीक अछि. Then UCBs are subject to dual regulation by state registrar of the cooperative society and Reserve Bank of India for banking functions under the Banking Regulation Act. RBI has extended PCA framework 2025 जो थिरे किसे कहबो कि भाई तमे केते लोन दे पारछो केते तमर एसेट अछि ठीक ठाक अछि ना नहीं ना एनपी हबार अधिक चांसेस अछि and PSL target for urban cooperative society has been revised downward to 60% from earlier 75% of their adjusted. Very important. Again this is also revised. जेमति SFB रो revised हिची अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रो 75% हमें पढ़िथिले 40 रु 75% को दिया इला अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी. दिस इज आल्सो बीन रिवाइज्ड टू 60%. मन रहबो एठी आ गोटे पॉइंट यूसीबी ये भी 60% को पळे आसी. एसएफबी भी 60%, यूसीबी भी आल्सो 60%. ताले केवल गोटिए ही अछि आरआरबी जे कि एफएबी 75%. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Adjusted net banking credit is a regulatory metric used by Reserve Bank of India primarily to determine what? ये तो सब इजी क्वेश्चन.
শুনি শুনি আসছো যদি সলিউশন করতে বাট ইন নট earlier it was 60%. Earlier it was 60%. Where it is? सर प्रीवियसली आपण नोट रू ही मो कॉपी करथिली 60% मो कॉपी रे अछि नोट्स रे अच्छा मे बी से तळे पढिला बेले जदी कहिदिबि बट इट तो मु लिखिछि कि 40% ए गोटी ही नोट पर मोर अलग नोट चेंज करनी 40 रु 40 75 75 75 रु एटा 75 हेतिला एसएफबी पई बट सेटा को चेंज कराई कि 60 कराई छि एंड यूसीबी पई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पई जोटा 40% दिला सेटा 75% एंड एबे एटा चेंज हेति 60% हेति दिस इज लेटेस्ट ठीक अछि ओके ए क्वेश्चन टा देखो adjusted net banking credit is a regulatory metric used for Reserve Bank of India primarily to determine which of the following PSL yes super next question recently the international conference on the urban cooperative credit तार क्वेश्चन एटा ओके vision ro test number 18 रे थिला the international conference on urban cooperative credit sector co-op कुंभ cooperative society रो कुंभ 2025 was held in new delhi फास्ट कथा होची भाई एगुडा तमे टिके मन रख दियो बिकॉज जदी भी आसीबो ई भलिया क्वेश्चन आसीबो कि co-op कुंभ 2025 कोठी हेतिला न्यू दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई देन आंसर होची न्यू दिल्ली ठीक अछि with respect to the consider the following statement they are registered as cooperative societies urban cooperative credit center conference on the urban cooperative credit center they are registered as cooperative society under the respective state government act as well as multi state cooperative bank एकटा तो ठीक अछि एबे ही पढिथिले भाई भलसे देखो क्वेश्चन आस जाई पारे ए भलिया हंग नै एकटा तो ठीक अछि they have allocate 75% of the loan to priority sector lending एटा तो 60% ही जाई ना yes taking time reveal answer so internet slow down why so much the answer is not coming but एक एटा ही ठीक अछि and they have allocated 75% of their loans to the priority sector lending that is wrong next question consider the following category agriculture education renewable housing loans export credit how many of them are included on the priority sector lending target as per RBI guideline agriculture अछि export credit housing loans renewable energy सब तो अछि होंगे नहीं आंसर इज ऑल 5 केतो लागु एटा रिवाइज न करथिले तुम कर देथांते गुडा आज जदि एटा रिवाइज न करथांते छाडी देथांते ए क्वेश्चन ओडा इजीली तुम टैकल कर देथो टफ कंफ्यूज देथांते करेक्ट नो which of the following best describes Pigovian tax this is legend tax छाडी दे and एटा टिके मते एडिट भी करिया अछि एते सॉल्यूशन भी पड़ आछि 10 नंबर क्वेश्चन रिगार्डिंग द PSL guideline 2025 banks are barred from co-lending with NBFCs to meet PSL PSL for SFB 60% of their adjusted net bank two तो definitely correct अछि two that definitely correct अछि जदी एक एटा भाई मु काट देबी banks are permitted to treat export credit extend to the agriculture sector as PSL loans export credit extended to agricultural sector extended export credit okay two टा ठीक अछि 222 banks are barred from co-lending with NBFC to meet PSL targets definitely हिरो काहे न मते भी लागु 75% भी अछि तो से केस रे सी बर्तन मु आउ किछि जानि नि भाई बर्तन मु केवल दुईटा ही जानि छि आउ आउ आ व्यतीत मु किछि जानि छि कि मतलब को आ व्यतीत मु किछि जानि छि किंतु ऑप्शन रू मु बर्तन मते लागु छि एकटा तो नियति थिबो जदि एकटा हेई थिबो बर्तन मु गेस करू छि आउ रहला 1 2 1 1 2 3 banks are permitted to treat export credit extend to the agriculture sector as PSL loans what do you think तीन रो पॉसिबिलिटी भी 50% अछि and agriculture sector रो ऑलरेडी 18% अछि एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सटेंडेड टू तो तीन टा को जदि काटि देबी 1 2 तो ब्रह्मास्त्र हिसाब रे जदि देखिबो ताले 1 2 ही होबो करेक्ट नो लेट्स ट्राई डी ही मो करछु and answer is 2 3 okay गलत हो किछ असुविधा नै 2 3 रो कांसेप्ट कोन 2 3 रो
2 टा तो डेफिनेटली करेक्ट सेटा हमें जानि छे बट 3 banks are permitted to treat export credit extended to agriculture sector PSL सेटा ठीक अछि बट आंसर हो banks are lending banks are bad from co-lending with NBFC to meet PSL targets सेटा भूल अछि ठीक अछि लेट्स सी PSL ensure that vulnerable done statement 1 statement 1 सेटा तो कला statement 1 कोडी देखाउ जे का होय statement 3 done. Statement 2 is correct. Okay, let's targets classification 2025 PSL ensure that vulnerable section society done RBL PSL guideline CAG impaled auditor for specific entities like in NCDC. These auditors are done. Revised targets. The PSL target for SFB has been adjusted from 75 to 60%. 2 is correct. NCDC for rural credit loans provided by the banks of National Cooperative Development Corporations for purpose of on lending cooperative society are now officially classified as PSL. Acha. So NCDC is like a NBFC. Okay. तो ता सहित मिसिकी जदि जने लोन भी दउची ताहाले banks are also permitted to enter into co-lending arrangements to meet PSL targets. भाई मन रखि थाओ एटा NBFC सहित मिसिकी भी से माने PSL टारगेट को फुलफिल करि परिबे. Reserve Bank of India actually encourages banks to co-lend with NBFC non-banking financial under the co-lending model to meet priority sector lending. Hence bank low cost funds with NBFC reach for underserved sector. Hence statement 1 is not correct. The banks are bad जोटा लिखा हैला सेटा bad होना दी से मानु को allow करि दिया जाउछ. And थर्ड टा देखो तो थर्ड टा थिला domestic commercial banks and foreign banks with 20 plus branches, foreign banks with less than 20 branches, regional bank 40% of ANBC and same as domestic 75% of ANBC. Where is higher commercial bank, whichever is higher, lending to medium enterprises, infrastructure, renewable energy is now capped at 15% of ANBC. बहुत important भाई गोटे डाटा चेंज होउची ठीक अछि आमे जो डाटा पढितली 2020 रो 2025 रो डाटा टिके चेंज अछि domestic commercial bank टिके भल से देखो allowed bank to treat export credit to agriculture and MSME as PSL loans एग्रीकल्चर को भी एक्सटेंड करि परिबो से जो 2.5% जोटा थिला सेटा एग्रीकल्चर को भी एक्सपोर्ट रो क्रेडिट ता एग्रीकल्चर को एक्सटेंड कर परिबो हेन स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट domestic commercial bank and foreign bank with 20 branches and above foreign banks with less than 20 branches regional rural bank RRB regional branches regional rural bank 40% of ANBC or same as domestic 75% of ANBC or okay whichever is higher fine तो सी सेम कहू कि RRB पाई 75% and other जो बैंक गोडा अछि ता पाई 40% that is fine whichever is higher commercial bank 32% can be from export credit and not less than 8% can be from any priority sector whichever is higher okay this is different lending by the medium enterprises social infrastructure renewable energy is now capped at 15% recent context researcher from Birwal Sana Institute of whatever it is India through sediment analysis and located okay this is a different question so मते टिके देखिवार अछि 2025 रो कोऑपरेटिव सोसाइटी give a second latest PSL targets एग्रीकल्चर 18% आमे ऑलरेडी जानि छे यूनिवर्सल बैंक पाई दीटा थिला ना गोटे 10% गोटे 8% वाला सेटा आमे पढी छे माइक्रो एंटरप्राइजेस पे 7.5% सेटा ही पढले वीकर सेक्शन पे 12% and 2.5% जोटा अदर सेक्शन में रहला होंगे नहीं एसएफबी पाई से को जे टोटल पीएसएल टारगेट जोटा 75% थिला सेटा 60% हे जाईची 18% 12% 7.5 सेटा सेम अछि आ बाकी से माने आ जोठी यूज कर परिबे रीजनल रूरल बैंक पाई देखो रीजनल रूरल बैंक पाई 75% जो 18% तो एग्रीकल्चर एमएसएमई पाई 7.5% जोटा 12% थिला वीकर सेक्शन पाई सेटा हे जाईची 15% मन रहइबो आरआरबी पाई 15% आ बाकी से जोठी चाइबो सेठी दे परिबो फॉरेन बैंक विथ लेस देन 20 ब्रांचेस टोटल पीएसएल टारगेट तांगर 40% एक्सपोर्ट क्रेडिट अप टू ताले फॉरेन बैंक्स कोडांकू
एक्सपोर्ट क्रेडिट रे 32% अछि तांकर ए सब कॉन्सेप्ट नै कि फॉरेन बैंक माने आसी एग्रीकल्चर देबे कोनटे बुझिबे से माने फार्मर मानू को जो एग्रीकल्चर रे पैसा देबे से कोनटे बुझिबे तो विथ लेस देन 20% 20 ब्रांचेस ताले से माने मैक्सिमम कोन करबे ना एक्सपोर्ट क्रेडिट को देबे अप टू 32% एंड अदर प्रायोरिटी सेक्टर नॉट लेस देन 8% जोटा कि 40% तांकर फुलफिल हिजो की ब्रॉड कैटेगरीज एग्रीकल्चर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्सपोर्ट क्रेडिट एजुकेशन हाउसिंग सोशल इंफ्रा रिन्यूएबल एनर्जी अदर रे आसी वीकर सेक्शंस डिस्ट्रिक्ट पर्सन और स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस मन रहइबो दैट इज द कैटेगराइजेशंस सो ऑलमोस्ट वी आर डन बेसिकली जस्ट गोटे थिला कि फॉरेन बैंक विथ लेस देन 20 ब्रांचेस से माने एग्रीकल्चर सेक्टर रे पैसा देबे 40% पीएसएल देबे 40% पीएसएल तो देबे बट से 40% रु 32% माने कोथरे देबे यस 32% माने कोथरे देबे एक्सपोर्ट क्रेडिट रे भाई एक्सपोर्ट तो कले पैसा सिबो ना यस नेक्स्ट क्वेश्चन in the context of SATAT scheme consider the following Satat the Satat initiative was launched to promote compressed biogas as an alternative the scheme aims to establish 5 lakh plants in rural compressed plants have been added to the list of priority sector lending renewable energy ता अंडर रे ऐड ही परिबो ना परिबोनी Satat scheme ऐड ही परिबो सो तीनटा मते ठीक लागुची बट बर्तन मु Satat scheme विषय लेट सपोज किछि जानबे Satat initiative was launched to promote compressed biogas as an alternative fuel. And because 1 out 3 देखो compressed biogas plants have been added to the list of priority sector lending PSL रे तो से जो compressed biogas लिखुची एठी भी compressed biogas लिखुची the scheme aims to establish 5 lakh plants in rural areas of India. Second टा बुझे देखिबी 5 lakh plants there can be a twist if it is UPSC exam but एटा UPSC रो तो एग्जाम नथिबो एटा विजन रो तो विजन रो मॉक टेस्ट रे दिमाग लागि न पारे 5 लाख प्लांट्स इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया मे बी यस तो आकू गेस छडाओ किछ नाही बिकॉज़ एथिरा ओला किछ एलिमिनेशन भी नहीं होंगे नहीं either you have to do it or you have to skip it if I'll go for all three answer is only 2 तो से कोन कहू छी 5000 प्लांट देखो से हम कहू छी दिमाग 5000 प्लांट 5 लाख हो तो कांसेप्ट कोन ना 1 is correct 1 is correct तो जानि दियो करंट अफेयर रो क्वेश्चन एटा तो करंट अफेयर रे कोन कहू छी ना द सत्ता स्कीम व्हिच stands for sustainable alternative towards affordable transportations sustainable alternative towards affordable transportations is an initiative led by government of India it is primarily objective to establish compressed biogas production facilities and make eco-friendly fuel available for automotive use okay the government aim to achieve this by inviting expression of interest from potential investors statement 1 is correct e satat okay sustainable alternative towards affordable transportation scheme on compressed biogas was launched by honorable minister of petroleum and natural gas on 2018 the scheme envisaged to target production of 15 MMT million tons of CBG by 2023 from 5000 plants not 5 lakh plant hence statement 2 is not correct to facilitate financing and across the funds to entrepreneurs CBG plants have been included under the priority sector lending of the Reserve Bank of India तो बुझियला same mindset this data can be changed okay data can be changed to make the question wrong yes 5 lakh plant is different correct no 5 lakh plant जदी दिमाग भी हेती गळे भी लगेता ना 5 lakh plant 5 lakh plant लालो को माने प्रति ओडिसा रो कोन कोन रे भी लगभग तो प्रति डिस्ट्रिक्ट रे गोटे गोटे प्लांट मिल जो होंगे नहीं से पर्सपेक्टिव रे जो देखिबो प्रति डिस्ट्रिक्ट रे गोटे कोन 3-4टा प्लांट देखैया पड़िबो the scheme aims to establish 5 lakh plants in rural area that to puni again rural urban re bhi hoboni that means this is difficult 5 lakh plant this is difficult next question last question priority sector lending by banks in eta preliminary thila 2013 re in India constitutes the lending to whom yes 2013 prelim simple all of them super now you are good with PSL karo doubt of PSL okay all good PSL okay next question next regulating loans for consumption purpose तो सिंपल कथा रेगुलेटिंग लोन्स एसबीआई से लोन दउची तो काहा को देई परिबो कपल गोइंग फॉर हनीमून टू मालदीव्स कंजम्पशन
तो लोन इंटरेस्ट रेट 15 ରୁ 18% हे पारे मालदीव जाउछन भाई किछि काम नै मालदीव को जाउछन हम देशर पैसा बाहर को जीवो तो सेठी भाई टिके अधिक पैसा एठी टिके अधिक इंटरेस्ट मागो ताकि ताको डिस्करेज करो कि भाई जाओ नहीं जहाज जाउछो तुम इंडिया भीतर रहो बट एमएसएमई लोअर इंटरेस्ट रेट कैपिटल फॉर्मेशन हो करेक्ट नो तो कंजम्पशन बेसिस रे लोन को भी रेगुलेट करा जाई पारियो बिकॉज़ दिस इज सिलेक्टिव कि दीज आर क्वालिटेटिव टूल्स करेक्ट नो सो यू हैव टू सिलेक्टिवली चूज where you want to increase the interest rate and where you want to decrease the interest rate बुझियला variation in margin required loan to value ratio कि loan to value ratio केते दउछो फॉर एग्जांपल गोटे फार्मर प्रोड्यूस 20 लाख राइस करेक्ट नो तो 20 लाख रो प्रोड्यूस कला बर्तन से 20 लाख लोन ताको दरकार तो 20% मार्जिन ओनली 16 लाख ताको दिया होते मार्केट रो 16 लाख रो राइस से प्रोडक्ट बिकी देला मार्केट को बिकिला and hold 36 lakhs like okay these are not required loan to value ratio just खाली simple term रे जानो कि भाई लोन टू वैल्यू रेशियो केते अछि लोन टू वैल्यू मींस मु जदी किछि गोटे कोलैटरल आनि कि देबी भाबिनो सोना दे देबी गोल्ड रो आज रो रेट केते अछि लेट सपोज 1.5 लाख एंड सीए कहबे बर्तन मार्केट रे पैसा अधिक अछि ना नहीं जदी मार्केट रे अधिक पैसा थिबो ताले मते को मार्केट रे जदी इन्फ्लेशन थिबो ताले लोन टू वैल्यू रेशियो मु कोन करी अधिक लोन दे देबी कि लोन कमे देबी से 1.5 लाख आनि मते दो ना 1.5 लाख रो कॉस्ट दो मु कहबी 60% अछि 90,000 टका देबी होंगी नहीं ताको मु 90,000 टका देबी जदी एटा को मु बढ़ाई देबी 70% कर देबी ताले लक्षे 5,000 टका ताको देबी ताले जदी मु मार्केट को अधिक पैसा दउची दैट मींस व्हाट आई एम क्रिएटिंग मोर इन्फ्लेशन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम लोन टू वैल्यू रेशियो शुड बी डिक्रीज्ड इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट is the statement correct yes loan to value ratio inflation time रे डिक्रीज करया कथा ताकि मार्केट को बेसी पैसा न जाओ ओके moral suasion and direct action combination of pressure of persuasions and pressure basically central bank कमे देजी करेक्ट सेंट्रल बैंक निजर इंटरेस्ट रेट कमे देजी बट बैंक माने कमु ना दी देन सेंट्रल बैंक कोन करिवो गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिवो एंड बैंक माने उसो देन बैंक माने कमेयो पड़िबो बिकॉज़ लोक जानते हे भाई सेंट्रल बैंक आरबीआई कमे देछि इंटरेस्ट रेट तमे काई कमे मन डायरेक्ट एक्शन कोन ना प्यूनिटिव एक्शन बाय आरबीआई अगेंस्ट दोज बैंक्स हु कंटिन्यू टू डिनाई मोरल एडवाइस ऑफ आरबीआई तो आरबीआई कोन करियो पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे दबो रिफ्यूजल टू रिफाइनेंस ताऊ पैसा भी न दे पारे अल्टीमेटली कैंसलिंग द बैंक लाइसेंस तो दीज आर प्यूनिटिव एक्शंस देन पीसीए फ्रेमवर्क एक्शन फ्रेमवर्क बाय आरबीआई structured early intervention mechanism for banks with records due to loss of profitability or poor asset quality जदि पुअर एसेट क्वालिटी अछि ताहाले प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आगुआ कि भूल आगु काले एनपीए हे जो बैंक गुडा भलो परफॉर्म करू नाहंती ता पई आरबीआई कोन करबा पीसीए एप्लीकेबल कर परबा तो पीसीए टा एप्लीकेबल इन अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी पई भी आरबीआई 2025 भी लागू कर देछि सी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी काहे कि ना से स्टेट रो रजिस्टर माने भी कंट्रोल कर दिले देन आरबीआई कंट्रोल करछि जेहेतु स्टेट रो रजिस्टर माने भी कंट्रोल कर दिले सेते से लगौ नतरा बट एबे से लगै सारिछि financial debt non financial debt these are not required financial debt माने कोन टेकिंग लोन टू प्रोवाइड लोन टू अदर मु बैंक रो लोन आनली 10% रे गोटे लोक मते पैसा मागुची ताकू मु 12% रे लोन दे देली दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल डेट कि मु फाइनेंसिंग करू रीफाइनेंसिंग नॉन फाइनेंशियल डेट आई टूक ए लोन एंड परचेज्ड ए बाइक ऑलरेडी कंज्यूम जो लोन आनी ताकू कंज्यूम ही कर देली देन दिस इज नॉन फाइनेंशियल डेट किंतु जो आनी ताकू जदी मु फर्दर फाइनेंसिंग रे यूज कली जो थरे कि मु इंटरेस्ट पाइली बुझी होची see I took the loan giving loan to my friend with higher interest rate means mu middleman ayol then that is what we call financial debt is question ache 2020 रे तो यूपीएससी रे क्वेश्चन लगा ना लेट्स सी गोटिए क्वेश्चन 2020 रे यूपीएससी रे which of the following Indian economy non financial debt includes non financial debt बता हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय हाउसहोल्ड्स पैसा आनली घर तैयारी कर देली नॉन फाइनेंशियल डेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड रे जो पैसा मु आनिली एटा को खर्च कर देली नॉन फाइनेंशियल डेट ट्रेजरी बिल्स बर्तन 1 2 तो डेफिनेटली करेक्ट ना बर्तन रहला थर्ड डेटा ट्रेजरी बिल्स विल ट्रेजरी बिल्स कम्स अंडर नॉन फाइनेंशियल डेट और फाइनेंशियल डेट ट्रेजरी बिल टारे यूज करे ट्रेजरी बिल कोन ना लेस देन 1 ईयर गवर्नमेंट रो बिल होंगी नहीं गवर्नमेंट रो सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मु आनी की ताकू कंजम्पशन रे करूची या फिर ताकू फाइनेंसिंग रे यूज करूची फाइनेंसिंग रे भी यूज करि करूची करेक्ट नो
तो से पर्सपेक्टिव में 1 2 जीबी एंड आंसर इज 1 2 3 ट्रेजरी बिल भी दोची यूपीएससी आंसर की सी यूपीएससी आंसर की इन इकोनॉमिक्स नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 टा को पढ़ाओ treasury bill these are short term debt instruments issued by government to meet fiscal requirement the government is a non fiscal borrower hence okay सी को पर्सपेक्टिव रे कहूची ट्रेजरी बिल सेटा टिके एम्बिग्यूटी थिला क्वेश्चन जेतले क्वेश्चन टा भी आस्तिला ए क्वेश्चन ऊपर एम्बिग्यूटी थिला एदी भाई ए जो ट्रेजरी बिल टा एटा काहा पर्सपेक्टिव रे बुझी होची ना बुझी होनी म कोन कहूची आमे जेतले 1 2 मारुचे आमे मारुचे एटा ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ बैंक बैंक जेतले ट्रेजरी बिल टा रखुची से ताको फाइनेंसिंग रे यूज करची होंगी नहीं किंतु ये कहूची ट्रेजरी बिल ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट जेतले ट्रेजरी बिल टा दोची से जो पैसा नउची गवर्नमेंट कोन हेटा करी फाइनेंसिंग करूची ट्रेजरी बिल टा भाबिने गोटे बैंक किनि देला बैंक रु से पैसा नेला पैसा टा नै कि आ गोटे बैंक दोची गवर्नमेंट और लोकन को दोची ताबरे लोकन को दोची किछ गोटे स्कीम रे चले दबो ना से पैसा टा तो सेथि रिफाइनेंसिंग थोड़ी हला तो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव रे दिस ट्रेजरी बिल इज कंसीडर्ड टू बी नॉन फाइनेंशियल डेब्ट इज दैट क्लियर बट यस सेठी डेब्ट ही थिला तेनु डेब्ट माने मते से पर्सपेक्टिव रे देखिया पड़िबो जहां पे एटा डेब्ट मु बैंक पर्सपेक्टिव रे देखले बैंक पर्सपेक्टिव रे ट्रेजरी बिल टा डेब्ट नो होंगी नहीं ट्रेजरी बिल टा तो बैंक पर्सपेक्टिव रे एसेट ना am I right तो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव रे मते देखियार अछि गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव रे ट्रेजरी बिल टा डेब्ट होबो गवर्नमेंट पाइन बिकॉज़ तार लायबिलिटी रहइबो तो लायबिलिटी जहां पर्सपेक्टिव रे अछि ता पर्सपेक्टिव रो तमे देखियो एंड से पर्सपेक्टिव रे देखले 1 2 3 करेक्ट अछि इज दैट क्लियर चलो now who will implement monetary policy तो बिफोर 2014 मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट प्लस टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी थिला बट आरबीआई रो मेन ऑब्जेक्टिव कंट्रोल इन्फ्लेशन जोटा कि रेपो रेट वगैरह चेंज आउट करके एंड ग्रोथ को कंट्रोल करियार अछि सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आरबीआई और गवर्नमेंट हला मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी तो 2014 पर स्टार्ट हला कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेंट रो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमिशन जो थरे रेकमेंड कराला कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रो 3 जण रहिबे आरबीआई रो 3 जण रहिबे गवर्नमेंट तो उर्जित पटेल कमिटी सी आरबीआई गवर्नर वीटो पावर गवर्नमेंट डिडंट लाइक आरबीआई रो गवर्नर पाकर वीटो पावर थिला बट 3 जण आरबीआई रो रहिबे 3 जण गवर्नमेंट रो रहिबे 2015-16 रे इंडियन फाइनेंस कोड आसिला एमपीसी विथ नो वीटो पावर से कहले भाई वीटो पावर हटाई दियो 2016 रे दिस लेड टू आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016 जोतरे की एमपीसी रे 3 जण आरबीआई रो रहिबे 3 जण गवर्नमेंट रो रहिबे 3 जण जो आरबीआई रो रहिबे जणे गवर्नर जणे डेप्यूटी गवर्नर एंड जणे आरबीआई रो ऑफिशियल decision will be taken in simple majority in case of tie there will be casting or secondary voting by the government by the governor not the government by the governor 4 times a year minimum that means every 2 months रे से माने बसवाडा थयो वर्ष को 4 थरो से माने भेट हबाटा थयो मिनिमम एंड जनरली से माने फॉलो करछनी प्रति 2 मास रे थरे बसिया मिनिट्स ऑफ मीटिंग 14th डे ऑफ मीट रे मिनिट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर हेथो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एवरी 6 मास रे फ्रॉम वेयर इन्फ्लेशन इज कमिंग what steps RBI has been taken or inflation target for 6 to 18 months RBI कोन नउची target present target if inflation is not in range for 3 consecutive quarters means 9 months MPC must send report to the government with reason and remedies monetary policy framework action 2021 ରୁ 26 4 plus or minus 2 जोटा कि CPI को चेक करके CPI consumer price index that is combined means rural और urban रो मिसै कि combined रे स्टांस तीनटा स्टांस गोटा होची कैलिब्रेटेड टाइटनिंग न्यूट्रल स्टांस एंड अकोमोडेटिव टाइटनिंग अकोमोडेटिव माने रेपो रेट को कमे पारे ताकि मार्केट रे अधिक पैसा चालू कैलिब्रेट टाइटनिंग कर दोची दैट मींस पैसा टा को टाइट करूची पैसा मार्केट को छाड़ीबनी दैट इज मींस रेपो रेट को बढ़ाई दबो न्यूट्रल मींस किछि भी करि पारे ठीक अछि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन तो जदी आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाई देला 8% रु 10% लेंडिंग रेट टा 10% रु 12% हो जाउची संगे संगे आरबीआई जदी रेपो रेट बढ़ौची मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कोन ना आरबीआई बढ़ेला बैंक केते स्पीड बढ़ौछ आरबीआई जदी आज बढ़ेला बैंक आज भीतर ही बढ़ाई दबो रेपो रेट किंतु आरबीआई जदी आज काटी देला बुझि परछो जदी आज काटी देला 8% रु 6% बैंक 2-3 दिन परे काटियो दैट मींस जदी आरबीआई बढ़ेला मींस कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इज वेल ट्रांसमिटेड बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होउची बट जदी आरबीआई एक्सपांशनरी गला नॉट ऑलवेज वेल ट्रांसमिटेड मन रहइबो बैंक माने निज हिसाब रे देखु छथि यस ना कार डाउट अछि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन ना बुझियला नै बता क्लियर 1969
बैंक्स nationalization, बैंक गुड़ा nationalize चले, administered instant rate, earlier 1991 रे गवर्नमेंट डिसाइडिंग करथला, 1991 पूर्व गवर्नमेंट डिसाइड करथला, 1991 रे नरसिम्हा गवर्नमेंट आसिला, से कहले कि भाई गवर्नमेंट को टिके डीरेगुलेट करो बैंक गुड़ा, काहे के रेगुलेट करछो, लिबरल जानो, गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर लेस, सो आरबीआई शुड गिव ओनली मेथोडोलॉजी टू बैंक्स कि से माने केमिति परफॉर्म करबे, किंतु तांको फोर्स करिवे. For effective monetary policy working in 2003, RBI launched BPLR, benchmark prime lending rate. 2010 रे base rate concept introduced. 2016 रे MCLR आसिला, marginal cost of fund based lending rate. 2019 रे external benchmark. तो benchmark prime lending rate, that is called BPLR. तो सी कथा तमे बुझिबाला ना, बर्तमान कथा होची कि इंटरेस्ट रेट ता RBI जो काटी दउची, जदि RBI काटुची बैंक माने इजिली काटु नांदी, से माने रहि जाउछन, ताले पॉलिसी ट्रांसमिशन टा प्रॉपर होउनी मॉनेटरी पॉलिसी. देन बैंक माने केते इंटरेस्ट रखि परिबे तार किछि कांसेप्ट अछि कि यस अछि, दैट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल बेंचमार्क. ओके, तो इनिशियली थिला BPLR, मिनिमम रेट एट व्हिच बैंक शुड गिव लोन्स, डिटरमाइंड बाय बैंक्स ओनली, डिफर्ड अक्रॉस बैंक ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड टू बैंक, डिटरमाइंड बाय डिपॉजिट रेट. BPLR का डिपॉजिट रेट ऊपर डिपेंड करतला. फॉर एग्जांपल गोटे बड़ बैंक अछि, ता पाखरे सफिशिएंट डिपॉजिट होछि, तार इंटरेस्ट रेट कमी जिवो, किंतु जदि जण पाखरे डिपॉजिट अधिक होउनी, से इंटरेस्ट रेट अधिक रखियो. देन जहार डिपॉजिट होउनी सेठु लोक लोन भी नेबेनी, ताले से बैंक प्रॉब्लम रे फसियो. सो BPLR देयर वाज एन इशू. देन देयर वाज ए बेस रेट, same as BPLR, but deposit rate on deposit less than 1 year, cost of fund calculation. Problem, update frequency on banks discussion. से कहले कि जति डिपॉजिट अछि लेस देन 1 ईयर रो, ता बेसिस रे चेक करो, सेही अनुसार तमे इंटरेस्ट रेट ता लगेबो. देन आसला MCLR, marginal cost of fund based on lending rate. Cost of fund should be marginal cost of fund, means calculated across different tenure, कि को डिपॉजिट ता अछि लेस देन 1 ईयर, को डिपॉजिट ता अछि ग्रेटर देन 1 ईयर, कि कोटा 3 मास, कोटा 6 मास, कोटा 9 मास. सो तार गोटे एवरेज कैलकुलेट करो एंड ता अनुसार तमे इंटरेस्ट रेट को चेक करो. सी जोटा डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल मो होची बैंक, मो पाखरे तुम जणे आसी डिपॉजिट करछि 5 वर्ष भाई, मु जानली भाई 5 वर्ष जाई ये पैसा उठिक नबार नै, ताकू मु 6% इंटरेस्ट रेट दोछि, ताले ही 5 वर्ष पई जो पैसाटा मु बर्तन लोन रे स्पेंड करबी, हेटा मु 7% देले भी चलिबो मोर, काइना मु जानछि से आसी संगे से मागिबोनी, हों कि नै. किंतु गोटे लोक अछि जे कि वर्षिकिया पई करछि, ताकू मु 4% इंटरेस्ट रेट देछि, तो मु जानि जे वर्षे जाई से मागिबोनी. किछि सेविंग अकाउंट रे अछि, सेविंग अकाउंट रे 2% इंटरेस्ट दोछि, काइना को मोमेंट रे से उठेकी नै, तेणु ताकू मु लोन दे परिबे. ताले मु लोन इंटरेस्ट रेट केते रखिबी ताकि मु भी ठीक ठाक रे चली पारुछि, कांसेप्ट होछि सेटा. तो MCLR रे सबुरो कांसेप्ट फर्स्ट आसिला BPLR रे आसिला कि डिपॉजिट रेट, डिपॉजिट जहा हेछि तार बर्तन सन जानि पले डिपॉजिट रो डिफरेंट टर्म अछि, के 6 मास पे डिपॉजिट करछि, के वर्षे पई, के 5 वर्ष पई, के 10 वर्ष पई. देन ए माने कहले कि तापर मध्यरे आसिला बेस रेट से माने कहले कि भाई लेस देन 1 ईयर रो केवल डिपॉजिट रो रेट टा कैलकुलेट करो. देन ए माने कहले कि नहीं MCLR आनो मार्जिनल कॉस्ट जोटा कि एवरेज वाला कैलकुलेट करो, एंड एथि रे जो डिपॉजिट कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस टेन्योर प्रीमियम ए सब को कैलकुलेट करो, जो थरे कि गोटे रिस्क भी रहबो. डिपॉजिट कॉस्ट केते होउची, मींस तमे केते टंका डिपॉजिट वाला को दबार अछि इंटरेस्ट रेट रे, प्लस तमर ऑपरेशनल कॉस्ट केते, एंड केते वर्ष रा टेन्योर अछि. जदि अधिक वर्ष रा टेन्योर अछि ताले रिस्क कम अछि, जदि कम वर्ष रा टेन्योर अछि ताले रिस्क अधिक अछि. करेक्ट, compensate for the risk associated with lending for longer time. Then MCLR ये 1 डे 1 2 मंथ 3 मंथ 1 ईयर एमती बहुत सारा कॉन्सेप्ट अछि. प्रॉब्लम कोन ना फ्रीक्वेंसी जतो अपडेट करिया डिफिकल्ट. देन लास्ट आसिला जोटा कि हमको मन रखियार अछि एक्सटर्नल बेंचमार्क MPT, मार्जिनल बेस रेट सेटा बिकम्स बेटर. फर्स्ट एक्ट 2019 रे आसिला एक्सटर्नल बेंच रेट प्लस स्प्रेड प्लस रिस्क प्रीमियम. एक्सटर्नल बेंचमार्क रे से माने कहले कि को गोटे तमे नै जाओ, RBI रो रेपो नै जाओ, RBI रो रेपो रेट को चूज कर दियो, या फिर 91 डेज रो ट्रेजरी बिल रे जो इंटरेस्ट रेट लागु सेटा नै जाओ, या फिर 182 दिन रो ट्रेजरी बिल और एनी अदर बेंचमार्क तमे को गोटे बेंचमार्क नै जाओ, दैट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क. प्लस स्प्रेड केते मींस प्रॉफिट मार्जिन तमे केते रखुछ, कि मु डिपॉजिटर जिए से जदि 5 टंका सुध मोठू नउची, जदि मु ताको 5 टंका सुध दउची 100 टंका रे, ताले मु जदि लोन टा दउची, लोन टा रे मु केते इंटरेस्ट नउची 9 टंका जदि नउची, ताले मोर स्प्रेड मार्जिन होची 4%. बुझि होची ना नै. एंड गोटे रिस्क को कैलकुलेट करो टाइम पीरियड अनुसार, जदि टाइम पीरियड बढ़िबो रिस्क भी बढ़िबो. जे 5 वर्ष रु अधिक पई लोन नबो मे भी से जदि चली गला जणा पडनी, ताले भाई रिस्क भी बढ़थिबो. जदि टाइम पीरियड कम अछि 6 दिन भीतर सुझी दबो, देन 6 दिन भीतर मु ताको संगे ए भाई पैसा दे 6 दिन हे गला, 6 दिन टे न देले 10 दिन रे दबो, किंतु 5 वर्ष जाय मु ताको मागिबिनी, बर्तन सीए भूली गला कि फेरार हे गला सरला रे बाबा. सो अपडेट एटलीस्ट इन एवरी 3 मंथ्स.
सो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट रे हमें कहूचे फॉर एग्जांपल रिवर्स रेपो को मना गला आरबीआई रेपो को 5.5% प्रॉफिट होची 3% रिस्क प्रीमियम होची 2% तो ओवरऑल से कहूची 10.5% जोटा कि एक्सटर्नल बेंचमार्क रहले लोकों को बेटर हबो बुझिया पाए कि भाई इंटरेस्ट रेट ता केमिति बैंक माने कैलकुलेट करूछन नले मते मन इच्छा काई दोछन देन बोरोयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स गोटा होची प्राइम बोरोयर कैपेसिटी टू पे subprime borrower doesn't have the capacity to pay. It is the individual subprime borrower. Over leveraged borrower company borrowed too much money than its liability. Debt to equity जब देखिए debt बहुत अधिक हो जाऊँ zombie lending weak bank माने giving loans to subprime borrower prime borrower subprime borrower over leveraged borrower and zombie lending मन रहेगा yes zombie lending consider the following statement CDS 1 2010 the current global economic crisis owes its genesis to the subprime crisis in the United States. Global economic crisis 2008 रो United States रो subprime borrower वाला concept थिला the Indian economy is showing a faster recovery from the economic crisis than its western counterparts. See some issue in internet. Yes, answer is C. CDS 2019 subprime crisis is term associated with which of the following event economic recession political instability structural adjustment program growing social inequality subprime crisis both may happen which associated with one of the following events economic recession jodi hela mane paka see subprime borrower mane kono mane inability to pay correct no prime borrowers means more ability dila for example mu ebe chakiri koruchi mu ena 20 lakh loan neji I have the ability to repay I am a prime borrower but economic recession he gala and more layoff he gala ठीक अछि will I have the ability to pay then I will be considered to be what subprime borrower hong nahi okay but answer is C structural adjustment program see I could have marked A only economic recession but suppose structural adjustment program what it is let's see the term subprime crisis refers to 2007-8 financial crisis that originated in the United States mortgage market it was triggered by the collapse of housing bubble and failure of subprime mortgage backed security which were high risk loans granted to borrowers with poor credit history the crisis led to bankruptcy major financial institutions and a severe global liquidity crunch. Consequently, it catalyzed the Great Recession, the deepest economic downturn since 1930, characterized by its high unemployment, negative economic growth, while factors like growing inequality and deregulations are debated as underlying cause. The term is mostly directly and fundamentally associated with the resulting economic recession that impacted global market. Okay. Answer is A actually, so I have to choose it. See somewhat answer is A but some issue okay जो तुम्हें answer C देखो but answer A ही ठीक है okay it is related to economic recession is that fine okay. Next question why the offering of teaser loans by commercial bank of cause of economic concern teaser loans what is teaser loans loan for a loan the teaser loans are concerned to be an aspect of subprime lending and banks may be exposed to the risk of defaulter in future yes in India teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing or export unit teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs what do you think UPSC 2011 question एक एटा तो ठीक अछि बर्तन टू टा देखो इन इंडिया द टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन से मोस्टली ऊपर हैंड ठीक है अंडरलाइन करो गिवन टू इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट्स भाई टीजर लोन ना जनरली सेही लोक को दिया जाए जो लोकर कनेक्शन भलो थाए सबप्राइम बोरोवर हेतिबो किंतु कनेक्शन भलो अछि ताकू ता लोन टाकू पुनी रिकवर करिया पे ताकू पैसा दिया होछि से लोन रे पुनी आउ थरे लोन करबो आउ थरे लोन आनी के से लोन टाकू पुनी रिकवरी करबो
फॉर एग्जांपल मु कोटी टका नै जायछि कोटी टका नै कि बर्तन मु सुझी परने बर्तन बैंक को कहे भाई मते आउ जोम्बी लेंडिंग टाइप रो टीचर लर्न इज समथिंग लाइक जोम्बी लेंडिंग तो इट इज नॉट रिलेटेड टू इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर भाई इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर को मु पैसा देबी कि नहीं ना सो आई विल गो विथ ए answer is both 1 and 2 let's see edit but answer here is also a okay cancel teacher loans characterized by initial low interest rate that increase significantly after a fixed period these are considered ago initially तुमको 5% दियो तापर धीरे धीरे जो चक्रवर्ती सुध टाइप these are considered as an aspect of subprime lending because they target borrowers who might not qualify for conventional prime mortgage the economic concern arises because bank face a high risk of default once the teaser period ends and interest rate to higher levels, especially if the borrower income has not increased or property value declined. In India, teaser loans were primarily introduced in the home loan. ठीक है generally कोठी India रे primarily na home loan segment by commercial bank like SBI to stimulate demand rather than being specially targeted at inexperienced entrepreneurs for manufacturing or export units. Loans for micro entrepreneurs in India are typically categorized under the scheme like Mudra, Shishu Kishore Tarun rather than teacher rate structure बुझियला तो होम लोन पाई दिया जाए जनरली टीचर लोन होगा ओके तो मन रहबो ओके फाइन लायबिलिटी एसेट तो ऑलरेडी यू नो खाली जस्ट देखि दियो सिंपलीफाइड बैलेंस शीट ऑफ बैंक रो बैलेंस शीट लायबिलिटी कोन आसे ना बैंक रो कैपिटल दैट इज द लायबिलिटी काहेकि कहीं ना जो पैसाटा से आनी से पैसा अगेंस्ट रे आइदर बॉन्ड रे कैपिटलटा इशू करथियो नले शेयर रे इक्विटी रे कैपिटलटा इशू करथियो तो ता ऊपर से तार पैसा एक्स्ट्रा दबो दैट इज द कैपिटल रिजर्व ता पाखरे जहा रिजर्व अछि सेटा भी तार लायबिलिटी रे जीवो रिजर्व इन द सेंस व्हाट कि फॉर एग्जांपल सी किछि गोल्ड वगैरह रिजर्व रे नियोनी रिजर्व माने रिजर्व बैंक पाखरे तो मानो कि जो तार पैसा उडा रखिछि सेटा बैंक रो कोन एथरे से इंटरेस्ट कम होछि किछि कम डिपॉजिट्स ता होछि तार लायबिलिटी बोरोइंग्स बाय बैंक्स बैंक जहां बोरो करिछि फ्रॉम अदर दैट इज आल्सो लायबिलिटी ताले एसेट रे देखो एसेट रे कोन ना डिपॉजिट विथ आरबीआई जोटा आरबीआई सहित सीआरआर दिस रिजर्व इज a liability this I have to see what exactly this reserve means okay डिपॉजिट विथ आरबीआई सीआरआर ता होछि तार एसेट ऑल्दो सेथरे से किछि गेन करूनी बट स्टिल इट इज कंसीडर्ड टू बी एसेट मने टिके रखो एसेट रे से मानि कि चलुछि कि आरबीआई सहित जो सीआरआर रे से जो पैसाटा होछि सेटा बैलेंस शीट रे बैंक भाई एसेट डिपॉजिट विथ अदर बैंक ताको पैसा मिलियो एसेट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉरेन गवर्नमेंट शेयर्स वगैरह एसेट लोन्स टू पब्लिक एसेट फिक्स्ड एसेट्स और अदर एसेट जो बड़ा अछि एसेट तो एसेट ही द रिजर्व व्हाट इज दिस रिजर्व मींस आई हैव टू सी ओके व्हाई एसेट्स आर क्लासिफाइड हेल्थ एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बैंक क्वालिटी ऑफ एसेट्स पीरियोडिक रिटर्न रिपेमेंट कि एसेट जो अनुसार थिबो सेही अनुसार बैंक को जना पड़िबो कि भाई एमाने केते लोन दे परिबे एसेट क्लासिफिकेशन देयर आर 5 टाइप्स गोटे होछि स्टैंडर्ड एसेट्स डज नॉट कैरी मोर नॉर्मल रिस्क स्टैंडर्ड एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नॉट रिटर्निंग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन लास्ट 90 डेज भितरे जदी जणे प्रिंसिपल आउ इंटरेस्ट रिटर्न कर देला दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एसेट फॉर एग्जांपल मु मोर केस कथा बोल मो पाखरे गोटे क्रेडिट कार्ड थिला स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ठीक अछि जेतले मो क्रेडिट कार्ड ता नेइथिली मते से माने कहिले आर एनुअल कोनोसी दबार नाही चार्जेस एनुअल चार्जेस लागिबो नै वर्षे पर गोटे एनुअल चार्जेस लगे देले 999 टका देन मु बारंबार ताको सहित कथाली भाई मते तुम इनिशियली कहिदिलो कि एनुअल चार्जेस लागिबो नै बर्तन एटा काहार लायबिलिटी ए पैसाटा किए दबो मते जे कहि कि देइथिला सिए दबो ना मु देबी मु तो कोनोसी रिपेयर देबिनी बिकॉज़ मु जानि छि कि मोर एनुअल चार्जेस दबारी नै मते एथि पई कहैतिला बोली मु कार्डटा एक्टिव करली नहले मु एक्टिव ही करन ना तो कोनोसी मते मु पैसा देबी ठीक अछि देन से माने सुन लेनी 999 टा हला 1000 फर्स्ट मास देन 1200 सेकंड मास देन 1500 समथिंग थर्ड मास एंड मु देली ही नै बारंबार कॉल आसला मु देली ही नै मु कहली मो पाखरे लायबिलिटी नै मु देबिनी जदि मोर 20000 टका खर्च करछि मु से 20000 टका तमे क्लियरली देखो ए अकाउंट रे जदि मु आज पर्यंत 50000 खर्च करथिबी ए क्रेडिट कार्ड रु तो 50000 रो टाइमिंगली मु पेमेंट करछि बिकॉज़ आई एम लायबल बट फॉर दिस आई एम नॉट लायबल जदि आ पाई मु लायबल 9000 टका एमिति न कि मु देई परिबिनी मु देई परिबि किंतु मु काहे कि देबी जोठी कि मते कहैतिले कि मु देबिनी बोली सो मु देबिनी तो से माने कोन गले 1599 परे इट बिकेम एनपीए देन एबे बर्तन मते जीरो देखौछि मु पैसा देलिनी बर्तन मते जीरो देखौछि हां
गोटे impact मो ऊपर पड़ी जी, that is my credit score. My credit score has been gone down because for 3 times, correct no, since last 3 months I didn't pay the money. तो एथिरे गोटे डिफॉल्टर बोली गोटे आसीबो, ठीक अछि, बट धीरे धीरे सेटा भी because I have around 14 to 15 credit card, तो से क्रेडिट कार्ड ओडा मो टाइमली पेमेंट कर दोछि, तो सेथिरे सेटा इंप्रूव हे जिवो, बट हां ए 3 मास पई ये वर्तमान मते जीरो देखौछि, वर्तमान मते आ किछि पैसा देबाको देखौनि. सो not returning principal or interest up to 90 days coming under standard asset, post 90 days becoming non performing asset NPA 3 मास रु अधिक हो गले. सबस्टैंडर्ड एसेट कोन ना 3 मास रु नै कि 12 मास जाए 3 मास ऊपर को पळेले तो NPA हे गला. वर्तमान NPA गुडा को फर्दर कैटेगराइज करा होजी NPA फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. 3 मास रु ऊपर को नै कि आउ एक्स्ट्रा 12 मास मींस 12 3 15 मास बुझी होची ना नै. NPA केते बेले हला ना 3 मास परे हे NPA टा जदी आउ वर्ष चली गला NPA हेगी ताल ताको कहला सबस्टैंडर्ड एसेट. जदी सबस्टैंडर्ड एसेट आउ फर्दर 1 ईयर चली गला ताको कहा जाउची डाउटफुल एसेट. जदी डाउटफुल एसेट आउ 1 ईयर चलला ताको कहा जाय लॉस एसेट. बुझियरा कांसेप्ट कोन जीरो रु थिला 3 मास भीतर पैसा दे देलो स्टैंडर्ड एसेट. 3 मास आगु चलला NPA ए NPA फर्दर गोटे वर्ष चलिला देन 3 मास को चलला माने NPA गोटे वर्ष पर जदी कवर हे गला गोटे वर्ष हे गला हाइनी ताले दिस इज सबस्टैंडर्ड एसेट. सबस्टैंडर्ड एसेट आहुरी फर्दर 1 ईयर चलला NPA हे कि 1 ईयर चलला सबस्टैंडर्ड एसेट 1 हे कि चलला देन दिस इज डाउटफुल एसेट. होंगे नहीं डाउटफुल एसेट फर्दर 1 ईयर चलला लॉस एसेट. बुझियला ना कार डाउट है फाइन. तो देखियो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंडिया केस रे इट इज इन ए डिक्रीजिंग डाउनवर्ड ट्रेंड. ओके नेट परफॉर्मिंग एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट स्लोली डिक्रीज होची. आगुरु मझिरे बहुत 2017-18 रे बहुत अधिक थिला नॉन परफॉर्मिंग एसेट बट धीरे धीरे एगुडा डिक्रीज होची. अब जदी कहबा कि सबटु अधिक नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहार अधिक ना प्रायोरिटी सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक रो अधिक देन प्राइवेट बैंक मींस गवर्नमेंट बैंक गुडा कर NPA अधिक देन प्राइवेट बैंक गुडा. इकोनॉमिक सर्वे कहूची शेड्यूल कमर्शियल बैंक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैज बीन reduced not in last decade but in last 5 year रे तो डिक्रीज हिच. ओके देन लोन रिकवरी सरफेस एक्ट अपन ओपीएससी वगैरह तो मु सरफेस एक्ट गोटे बोधे क्वेश्चन गोटे थिला. ओके ठीक अछि ताले 1991 रे नरसिंह कमिटी आसिला बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म ऑब्जर्वेशन ना डिफिकल्ट इन NPA रिकवरी. सो स्टे ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्ट्स वगैरह से नहीं आछन तो रिकमेंड कले कि गवर्नमेंट हैज टू सेट अप ए DRT डिस्प्यूट रेजोल्यूशन tribunals or debt recovery tribunal, not dispute resolution, debt recovery tribunal in 1993 that is called debt recovery tribunals. Narsimham committee 2 asila 1998 रे recommended need to strengthen this debt recovery tribunal with law जो थि कि 2002 रे नेके आसिले सरफेस एक्ट. तो debt recovery tribunal तापरे debt recovery appellate tribunal को जिवो देन फाइनली हाई कोर्ट को जिवो. So we will discuss surface act tonight. Fine. एपर डिस्कशन कले रिवीजन इजी लागुची हे जिवो फॉरएवर विल. ओके सो हियर when you talk about SARFAESI, sir, what is SARFAESI? Na securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act 2002 एथरे से कहूची कि it empowers bank कहा को empower को होची बैंक को to recover their bad debt by selling the assets of defaulter like building, factory, etc. whatever you place without prior permission of the court. परमिशन दरकार नहीं कोर्ट रो जहां तमे प्लेस करिजो सेटा को सरफेस एक्ट अनुसार बिक्री कर देई परिबो बैंक जदी तमे सुझी न परिलो पैसा डन. लैंडमार्क legislation for banking sector जोडा कहला कि enable bank to reduce their NPA by adopting measures of reconstruction. It does not apply to unsecured loans. Very important कि ए सरफेस एक्ट अनसिक्योर्ड लोन पे अप्लाई करनी काहे कि ना सरफेस एक्ट सेठी तमे अप्लाई करबो जोठी कि कोलैटरल गोटे बंधा पड़िथिबो. कोलैटरल जोठी बंधा पड़िथिबो मीन सिक्योर्ड लोन जति हिथिबो कोलैटरल बंधा पड़िथिबो सेठी सरफेस एक्ट बंधा सरफेस एक्ट यूज हो. तो इट डज नॉट अप्लाई टू अनसिक्योर्ड लोन्स and loans below 1 lakh 1 lakh ru तळु को भी सेठी अप्लाई होनी and where remaining debt is only below 20% of the original principal amount. तीनटा कांसेप्ट एठी भाई एग्जाम रे जदी पचार देला तो एठू क्लियर हे जो कोठी सरफेस एक्ट लागुनी ना अनसिक्योर्ड लोन जोठी कोलैटरल नाही लोन बिलो 1 लाख जदी लाख टंका तळु को जने लोन नेची सेठी सरफेस मु लगेबिनी
जदि 10 लाख नैथिला आ 2 लाख रु तळुक अछि सुजिया पई एठी भी लागियोनी बिकॉज़ 20% रु जदि ओरिजिनल डेट ता प्रिंसिपल अमाउंट रो 20% रु कम अछि ताहले भी सरफेस एक्ट लागियोनी इज दैट क्लियर ओके देन नेक्स्ट सरफेस एक्ट रे से कोन कहूची ना लेंडर कोन कर परिबो मोर्टगेज जोडा अछि एसेट जोडा सेटा को से सेल कर परिबो डेब्ट को इक्विटी रे कन्वर्ट कर दे परिबो डेब्ट जदि डेब्ट रे नै जे बॉन्ड वगैरह धार बार नै सेटा को शेयर रिलेटेड रे कन्वर्ट कर दे परिबो ये जो एसेट गुड़ा अच्छी से एसेट को से एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज मानक भी बिकी देई पारिबो 2021 रे आरबीआई सेट अप सुदर्शन सेन कमिटी टू सजेस्ट रिफॉर्म फ्रॉम एसेट मन रहइबो सुदर्शन सेन कमिटी दिस इज एस फॉर सुदर्शन एस फॉर सरफेस डन नॉट एप्लीकेबल फॉर लोन अवेलेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स नॉट एप्लीकेबल फॉर लोन दिस इज व्हाट इज नॉट एप्लीकेबल करेक्ट नो सरफेस एक्ट कोठी कोठी अप्लाई फार्म लोन रे भी अप्लाई होबनी फार्म लोन रे अप्लाई होबनी सरफेस एक्ट भाई गोरे गरीब लोक जे कि कृषक सी ता जमी बंधा पकी के आनदियो दिन तमे कहबो कि तू सुति पाइलो नली तो जमीटा नै दियो आ भाई तार जमी व्यतीत आउ तार किछि नाही सेटा ही तार रोजी रोटी करेक्ट नो तो फार्म लोन रे सरफेस एक्ट लागियोनी सब कहा को अवेलेबल ना ऑल टाइप्स ऑफ बैंक चाहे से कमर्शियल बैंक हो कोऑपरेटिव बैंक हो प्लस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मानको भी अवेलेबल हाउस फार्मिंग हाउस फाइनेंसिंग कंपनीज जो बना छै एनबीएफसी पई अवेलेबल की यस दीटा कंडीशन जदी से माने सैटिस्फाई कर दे एसेट साइज एनबीएफसी रो 100 कोटी रु अधिक थिबो लोन 20 लाख रु अधिक देथिबे अर्लियर 50 लाख थिला बट एबे 20 लाख रु जदी अधिक से माने देथिबे लोन ताले से 20 लाख ऊपर को सेटा सरफेस या यूज ही परियो किंतु अला कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक वगैरह जदी लाख टका ऊपर को भी लोन दिया छै ताले भी सरफेस एक्ट लागि जिवो इज दैट क्लियर सरफेस ओके नेक्स्ट कांसेप्ट does cooperative banks have surface act power yes constitution schedule 7 union list under रे entry 43 and 45 banking 45 कहूची banking 43 कहूची does not include cooperative society तो गोटे जजमेंट आसिला तो कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन लिस्ट अनुसार अछि देन कोऑपरेटिव एटा तमरा कनकरेंट रे भी आसीबो ठीक अछि तो बैंकिंग गोटे लेखा है बैंकिंग ता जदि तमे देखिबा एटा यूनियन अंडर रे आसीबो किंतु 43 बेले जतले कोऑपरेटिव सोसाइटी एटा स्टेट रे भी आसुची किसी कोऑपरेटिव स्टेट रे आसुची तेनो एठी कोहला जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट सरफेस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू कोऑपरेटिव बैंक एज पर एंट्री 43 सरफेस एक्ट होची गोटे यूनियन रो 2020 रो रेगुलेशन रे कोहला बैंकिंग आल्सो इन्वॉल्व्स ऑल टाइप ऑफ बैंक सो कोऑपरेटिव बैंक हैज आल्सो पावर्स ऑफ सरफेस एक्ट तो तमु बास मन रखियार अछि कि भाई जदि कोऑपरेटिव बैंक भी अछि ताले से सरफेस एक्ट सेठी भी लागि पारिबो क्लियर नेक्स्ट गोटे लोक अछि से एसबीआई रो लोन नै भाबिनो 10 लाख टका कोलैटरल दे देछि निज घर जमी घरटा को बंधा पके आनछि टू रिकवर आई हैव टू पे लोन ए 10 लाख को रिकवर करिया पे ताको पे करियार अछि बर्तन से 10 लाख को रिकवर करिया पे से पुनी आईसीआईसीआई को गला हेठू लोन आनला 15 लाख कोलैटरल पुनी से सेम होम रो कोलैटरल आउट देला डुप्लीकेट करिके देन हेठू दा माने 10 लाख आनला 10 लाख सुजिया पे पुनी गोटे डुप्लीकेट कला 15 लाख रो देन 15 लाख लोन नेला ताकू पे करिया पे पुनी एचडीएफसी को जाउची 20 लाख टका लोन नउची पुनी सेम कोलैटरल दोची ता माने जालियाती करिकी से केते टका उठै देलानी 15 10 25 15 20 45 लाख बैंक used to did not get to know worthiness of the person not sure of the collateral being placed in multiple places कोठी कोठी collateral कोन दिया है एटा बैंक को जणा पड़ नथिला then there is a concept of civil रे कोन हला ना information company it is a credit information company ठीक अछि बैंक offer after giving loan receive money will put info into civil बैंक जतले लोन देदेला पर जतले से पैसाटा पाउची सेतले से संग संग कोन करबो सेटारे सिविल स्कोर रे सिविल एप्लीकेशन से मानकर गोटे निजर सॉफ्टवेयर रे अछि सेथिरे से माने सिविल स्कोरटा ऐड कर देबे इट इज समथिंग कॉल्ड वन स्कोर ऐप आल्सो वन स्कोर ऐप तो वन स्कोर ऐप कोन ना जो सिविल फाउंडेड ऑन 2000 अगस्त 2000 रे तो 25 26 वर्ष आकु भी कंप्लीट हो they will collect information on individual payment pertaining to loans and credit card record or info submitted to civil by banks and credit info on monthly basis प्रति मास रे सिविल स्कोरटा से माने बैंक गोडा अपडेट करिवे used to create civil report and a civil report रो help to evaluate and improve loan applications बुझियाला सिविल भीतर कार डाउट अछि सिविल टा बनै छी के ना वन स्कोर अप केबे आस्तिला 2000 अगस्त रे कहम पई बना है छी ना जनरली जो लोन माने रहउतती
जना पड़िबनी कि भाई ये लोन केते नै क्रेडिट वर्दिनेस केते अछि याकू हमें केते लोन दे परियो केते दे परियो तो ये एनपीए को ही हेल्प करियो कि एनपीए न होबा पई ये हेल्प करियो लिक्विडेशन ऑफ एसेट तो लिक्विडेशन कोन ना गोटे होची सरफेस द्वारा करि परियो जदि लिक्विडेशन करि पारिलो नाही इन केस ताहले कोन करि परियो जदि तमे सरफेस को जाउनो देन यू हैव टू ऑप्शंस आइदर रिस्ट्रक्चर योर लोन 1 लाख को 8% जे गोटे ईयर दउतलो बर्तन तमे कहो कि भाई मु गोटे काम करछि 1 लाख टा जो तमे दबा कथा 8% रे तमे वर्ष करे देई परनो ए वर्षर टेन्योर टा मु बढ़ाई दउछि 5 वर्ष किंतु तमे 12% इंटरेस्ट दबो बुझि होछि ना नहीं सरफेस जदि न होबो ताहले तमे कोथिरे जीवो आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आईबीसी अनुसार तमे आइदर रिस्ट्रक्चर कर परियो लोन टा को जो 1 ईयर रे तमे आनिया चाहतलो एटा को 5 वर्ष रे नै आसो एंड इंटरेस्ट रेट टा सेवन टिके बढ़ाई देबे दिस इज द कांसेप्ट या फिर राइट ऑफ करनियो राइट ऑफ इफ नॉट प्रोविजनिंग ऑफ एसेट कि जदि एसेट को तमे प्रोविजनिंग करि परनो ताले राइट ऑफ माने बैंक रो बैलेंस शीट रो भाई ताको हटा बैंक रो बैलेंस शीट रो ताको हटेई दियो देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट माने पडुची एसेट को हमें फर्दर क्लासिफाई करथले गोटे होची नॉर्मल स्टैंडर्ड एसेट 90 दिन जाय 90 दिन पर हे गले सी हे जो एनपीए एनपीए जदि वर्षे जाय चलिला स्ट्रेस्ड होंगे देन सब स्टैंडर्ड डाउटफुल स्ट्रेस्ड एसेट माने सब स्टैंडर्ड एसेट डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस करेक्ट नो ये सब गोडा पळे आसो कोथिरे ना स्ट्रेस्ड एसेट तो एनपीए प्लस रिस्ट्रक्चर लोन प्लस रिटर्न ऑफ एसेट ये सब हो जाउची कोन ना तमरा स्ट्रेस्ड एसेट कि एसेट टा बर्तन स्ट्रेस्ड हो एसेट टा बर्तन स्ट्रेस्ड हो कोन ना तमरा एनपीए भी हे जाइची एनपीए हेपड को गला माने स्ट्रेस्ड एसेट हमें कोन कहले ना गोटा होची एनपीए गोटा होची सब स्टैंडर्ड गोटा होची डाउटफुल आ गोटा होची लॉस एया ना चारटा तो एनपीए होची 3 मास रो पडू गले एनपीए वर्षे चलीला फर्दर कंटिन्यू होला वर्षे परे ताको कहउची सब स्टैंडर्ड एसेट से सब स्टैंडर्ड एसेट आ वर्षे चलला ताल डाउटफुल आ वर्षे चलला लॉस तो एनपीए प्लस रिस्ट्रक्चर लोन प्लस रिटर्न ऑफ ये सब को कहउची रिटर्न ऑफ माने आउट ऑफ द बैलेंस शीट इफ नॉट रिटर्न ऑफ देन यू हैव टू डू प्रोविजनिंग माने एतिकी जेतिकी पैसा तमरो खर्च होची सेतिकी पैसा तो प्रोविजन करिया पड़ियो सेटा को तमे लोन देई परबोनी रिस्ट्रक्चर लोन माने कोन ना चेंज ऑफ द पेमेंट पीरियड और इंटरेस्ट रेट को कमाई दियो और लोन को इक्विटी रे कन्वर्ट कर दियो ए भलिया जो देला ताले रिस्ट्रक्चर ऑफ लोन ताले एसेट टाइप हमें जदी कहउचे लोन लॉस एसेट दैट लॉस जोटा हेची ताको 100% प्रोविजनिंग करियो पड़ियो कोन प्रोविजनिंग माने मु एटा रखिबी मु हे पैसाटा जोटा माने मु जानली कि भाई ए पैसाटा मते बुडी गला ताले मु हेतिकी पैसा एटलीस्ट रखिथिबी हेतिकी लोन देबिनी फर्दर जे डिपॉजिट करियो हे पैसाटा को मु 100% प्रोविजनिंग करके रखिबी बुझियला ताकू मु लोन देदे मु फसी जी भाई जो लोक पैसा मागियो केतले परे आसीकी मु हैराणी जीवी तो ताकू मु ताऊ लोन देबिनी डाउटफुल एसेट होची कोन ना अनसिक्योर्ड जदी डाउटफुल अछि अनसिक्योर्ड जदी कोनोसी कोलैटरल नाही ताले 100% प्रोविजनिंग करके रखो जदी सिक्योर्ड अछि ताले 25% प्रोविजनिंग करके रखो फर्स्ट ईयर रे स्टिल देलानी 40% प्रोविजनिंग कर रखो पुनी फर्दर 1 to 3 ईयर रे देन 100% प्रोविजनिंग करी रखिया पड़ो ग्रेटर देन 3 ईयर स्टैंडर्ड एसेट ओनली 15% प्रोविजनिंग substandard asset only 0.25 for MSME 12.4% for restructuring the loan housing sector teacher loan see concept एते किछि नै सिंपल जिंस भाई प्रोविजनिंग रे गोटे concept अछि प्रोविजनिंग रे तुमको जदी तुमको लागु कि भाई लॉस एसेट हे ताले 100% प्रोविजनिंग करिया पड़ियो डाउटफुल एसेट जदी अछि डाउटफुल आगु फ्यूचर रे जाकी लॉस हबो तेडु इनिशियली तो 25% जदी प्रोविजनिंग करियो जदी सिक्योर्ड अछि जदी नाही अनसिक्योर्ड है 100% प्रोविजनिंग करियो नले 40% 100% सेगुडा मन रखे किछि आवश्यकता नाही बट चलियो नेक्स्ट कांसेप्ट गोटा होची एवरग्रीनिंग लोन आ गोटे जन लेता नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कोन एनपीए तमे जानि छो नेट जते लागिबो ता माने एनपीए रु किछि तो माइनस करबी तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट माइनस प्रोविजनिंग जति हला सेटा होची नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट या को नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाय नेक्स्ट कांसेप्ट एवरग्रीनिंग लोन ना बोरोअर टेकिंग न्यू लोन टू पे ऑफ हिज ओल्ड लोन पुराना लोन को सुजिया पई बोरोअर आउथरे लोन नउची देन ट्विन बैलेंस प्रॉब्लम कोन ना प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी कमुची नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द बैंक भी बढ़ुची फॉर एग्जांपल ये कंपनी ये एसबीआई रु लोन नेला बर्तमान जदी आर प्रॉफिट होता ये लोन आराम से सुझी दियंता होंगी नहीं किंतु जदी ये लॉस को गला आर तो प्रॉफिट कम हैला ये लॉस को गला बोली ये सुझी भी पारुनी बैंक रो भी एनपीए गला तो गोटे कंपनी लॉस को गला लोगो बैंक रो एनपीए भी हो जाउची ताले दिस इज व्हाट वी कॉल ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इज दैट क्लियर तो ये सब कांसेप्ट को आसला कोन ना बासेल नॉन 3 तो बासेल नॉन 1 2 3
तो 1 हला कोन ना गोटे जर्मनी रे थिला 1974 रे देयर इज ए बैंक इन जर्मनी दैट गॉट फेल्ड तो देन G10 कंट्री जो माने थिले लग्जमबर्ग रे स्पेन रे से माने सब भेटिले एंड से माने कहले गोटे विल ब्रिंग ए समथिंग कॉल्ड स्टैंडिंग कमिटी जो रे अंडर बैंक फॉर इंटरनेशनलाइजेशन बीस सेटलमेंट कॉल्ड बासेल बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कॉल्ड बासेल these are the representative of central bank of regulatory authority ताले बासेल रे हमर के रिप्रेजेंटेटिव ना आरबीआई ताले इशू कला गाइडलाइन कोन ना इंडियन बैंक्स टू फॉलो बासेल नॉर्म 3 फ्रॉम 1st अप्रैल 2013 and fully implement them by 31st March 2019 ताले बासेल नॉर्म कोन थिला तो बीआईएस गोटे थिला मीटिंग ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक बासेल रे को माने थिले ऑल सेंट्रल बैंक ऑब्जेक्टिव होची अचीविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन बैंकिंग सेक्टर रे मते फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दरकार ताले बासेल नॉर्म 1 कोन थिला ना एवरी बैंक शुड हैव मिनिमम कैपिटल रेशियो रिक्वायरमेंट मिनिमम कैपिटल तो एथिरे टायर 1 टायर 2 एंड एडिशनल टायर वगैरह रखाला एते हमकु जिबार दरकार नै नेक्स्ट हमर कांसेप्ट होची टू कवर कोन ना क्रेडिट रिस्क जनरली बैंक मानकर एनपीए होची से एनपीए को कवर करिवा पाई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट केते मिनिमम हम पाखरे रहिया दरकार तो सेतिर गोटे कांसेप्ट आसला कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ना टोटल ऑन इंपेयर्ड कैपिटल फंड डिवाइडेड टोटल रिस्क वेटेड एसेट की रिस्क वेटेड एसेट केते अछि और टोटल ऑन इंपेयर्ड कैपिटल फंड केते अछि टायर 1 जोधरे के होची परमानेंट कैपिटल टायर 2 नॉन परमानेंट कैपिटल एंड टायर 3 सेमी परमानेंट कैपिटल हमकु फार्मूला दरकार नै जस्ट खाली कांसेप्ट जानो ताले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कोन ना इट विल चेक साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक इट एम्पायर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एबल टू विथस्टैंड विथ रीजनेबल डिग्री ऑफ लॉसेस कि केते लॉस हे परिबो कोन नै ए सब कांसेप्ट होची कोथरे ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रे जणा परिबो ताले कैपिटल कोन हे पारे सो CAR और कैपिटल रिस्क टू रिस्क एडिक्वेट रेशियो CARR हमें कहते कैपिटल एडिक्वेट रेशियो कोन कैपिटल ना शेयर होल्डर और ओनर और इक्विटी बैंक रे जो माने शेयर होल्डर थिबे जो माने ओनर थिबे जो माने इक्विटी थिबे से माने पैसा देथिबे 2000 परमानेंट कैपिटल बुझियो ना नै फॉर एग्जांपल SBI रे भाबिनो मु होची गोटे शेयर होल्डर मु SBI रा 80% शेयर होल्ड करदी ताले मु होची जो कैपिटल टा देथिबे SBI चलिया पई एटा होची परमानेंट कैपिटल बुझियाला बॉन्ड किछि लोक एटा तो शेयर गला शेयर माने होते से ओनर माने किछि लोक बॉन्ड देथिबे 40% भाबो SBI रो 40% आ जो रहला 80% मु नै गली भाबिले मोर गोटे बैंक अछि से बैंक रो 80% होची मो शेयर हेले मु हे गली परमानेंट कैपिटल मो शेयर बाद 40% जो रहला 40% भाबो 15% अछि डेब्ट मींस बॉन्ड रे करेक्ट नो डिबेंचर तो बॉन्ड जो माने देथे से नेक्स्ट से माने होचंदी नॉन परमानेंट कैपिटल आ गोटे होची नॉन परमानेंट रु परमानेंट वाला कि बॉन्ड रु इक्विटी को मु ट्रांसफर कर परबी 2000 कॉल सेमी परमानेंट किछि थिबो जो माने बॉन्ड अथले मु ताऊ कहूची भाई गोटे काम कर बॉन्ड रो इंटरेस्ट तो मु दे परबिनी तो मु किछि शेयर दे दोची बॉन्ड टा को चेंज कर दोची इक्विटी सेटा होची सेमी परमानेंट तो ए सब जति की पैसा आसिला दीज आर व्हाट वी कॉल्ड टोटल अनइम्पेयर्ड कैपिटल फंड देन व्हाट इज टोटल रिस्क वेटेड एसेट ना लोन एडजस्टेड फॉर रिस्क केते तमे रिस्क नौचो फॉर एग्जांपल जदी 100 कोटी टंका रु गवर्नमेंट को दौच 30 कोटी कंपनी को दौच 50 कोटी हाउस होल्ड को दौच 20 कोटी मत तमे गवर्नमेंट 30 कोटी रिस्क तो जीरो होंगी नहीं कंपनी को जो 50 कोटी तमे दब सेतिरे रिस्क भाबिनो 20% हाउस होल्ड को जो दब भाई सीए सुजियो बोली किसी गारंटी नहीं 50% रिस्क तो रेशियो केते जीव ना 30 * 0 50 * 20 डिवाइडेड प्लस 20 * 50 डिवाइडेड आई टोटल लोन केते 100 कोटी तो ये होची 20% रिस्क ता माने 20 कोटी टकार रिस्क अछि ताले तमरो टोटल कैपिटल केते अछि डिवाइडेड तमे रिस्क केते नतो सेटा मते मिल जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यूपीएससी 2018 क्वेश्चन बतला कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टायर 1 टायर 2 टायर 3 जोटा कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी गोटे अछि तो बासेल नॉर्म 3 अनुसार टायर 1 रे रिस्क वेटेड एवरेज तमे पकाओ 4.5 आरबीआई सेटा कहूची कि हमें पकेबु केते एटा बासेल कहूची आरबीआई कहूची कि भाई टायर 1 रे 5.5 टायर 2 पई मिनिमम तमे 2% रखिया पड़िबो 2% टायर 2 टायर 3 पई निहाती 1.5% एंड सीसीबी जोटा कि होची कैपिटल कंजर्वेशन बफर सेथिरे तमे 2.5 एमिति 11.5 ऑफ रिस्क वेटेड एवरेज मिनिमम तमारे बासेल कहूची भाई 9% मिनिमम रखियो 8% 9% बासेल नॉर्म 3 अनुसार आरबीआई कहूची ना 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 11.5 तमे 11.5 माने जदी 100 टका तुमको मिलिला 11.5 आगो तमे रखि दियो रे बाबा कोथि पई ताकू तमे लोन दियोनी ताकू तमे बासेल अनुसार एतिकी नन जदी तम पाखरे एतिकी कैपिटल अछि ताहाले ही तमे लोन दबो नहल दबो तो बासेल नॉर्म 3 हमें कहूचे बैकग्राउंड होची यूएस रो प्रॉब्लम सबप्राइम क्राइसिस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सुपरवाइजर रिविजन
market discipline, capital adequate ratio concept, liquidity coverage ratio wala concept, stricter norm from tier 1 capital. Okay, give me a second now. Then we will talk about liquidity coverage ratio. Give me 1 minute. Okay, am I audible? Okay. Then what concept is liquidity coverage ratio kono? What capital adequate ratio बुझियला कि टोटल जो कैपिटल गुडा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एवरेज कि रिस्क केते अछि. Then liquidity coverage ratio कोन ना stock of highly liquid asset divided net of each outflow over 30 days. सी एगुडा हेते दरकार होएनी तो stock of highly liquid asset कोन ना गवर्नमेंट रो सिक्युरिटीज वगैरह हला ठीक अछि कि किछि कैश अछि जोडा ऑलरेडी लिक्विड अछि लिक्विड डिवाइडेड है केते कवरेज दे पर आउटफ्लो केते होउची ओवर नेट कैश केते बाहर को जाउची मो पाखरे केते लिक्विडिटी अछि जोडा कि मु होल्ड करके संगे संगे कैश रे कन्वर्ट कर परबी डिवाइडेड है लास्ट 30 दिन रे केते टंकार बाहर को मार्केट को जाउची कैश ठीक अछि. सो हाईली क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कि संगे संगे हठात काली आसी कि जने कहूची भाई मते 50,000 दरकार एमिति हे कि 20 टा लोक आसिले ता माने मते 10 लाख टका दरकार मो पाखरे लिक्विडिटी एसेट अछि काहे ना लोन तो मु किछि दे देछि ता बाद मो पाखरे लिक्विडिटी एसेट केते अछि जोटा कि संगे संगे मु प्लेस करके पैसा काढी के आनी पारि बुझी परतो ना नै सी मो पाखरे टोटल 10 लाख टका थिला 10 लाख रु भाबिने मु 5 लाख टका लोन दे देछि ताले मो पाखरे अछि केते ना 5 लाख टका कैश रे अछि काली हठात जे लोक आसिले आनसने कहले 10 लाख जो मान देथिले कहले भाई हमु 8 लाख टका दरकार 3 लाख टका मो पाखरे लिक्विडिटी अछि कि 5 लाख मो पाखरे अछि आउ 3 लाख मो पाखरे गवर्नमेंट सिक्युरिटी थिबा दरकार जो मो प्रॉफिट हेतिला इधर मु किछि इन्वेस्ट भी करथिबा दरकार गवर्नमेंट सिक्युरिटी ताकि जेतेले माने अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आसीबा शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आसीबा ए 3 लाख रे गवर्नमेंट सिक्युरिटी को संगे संगे मु गोटे बैंक रे बंधा पके कि गोटे दिन पई मु कहि भाई मते एतिक इंटरेस्ट मु तते भी मते पैसा दे देता बुझियो ना बुझियो लिवरेज रेशियो कोन ना टायर 1 कैपिटल जोटा कि परमानेंट कैपिटल एसेट फासेट जोटा थिला जोटा कि ओनर गोटा जो माने करेक्ट नो इक्विटी जो माने नहीं थे डिवाइडेड टोटल एसेट into 100 minimum maintain you have to maintain 3% that is called leverage ratio ए सब हमको दरकार नहीं आ गोटे खाली जानि थिया कांसेप्ट जे एगुडा इंपोर्टेंट नो पड़ी न पारे. Capital conservation buffer CCB कोन ना लाइक कॉमन इक्विटी कैपिटल बफर कैपिटल व्हिच बैंक हैज टू क्रिएट फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्स जति की रिसोर्स तापर प्रॉफिट बढ़ला सेठू गोटे बफर से रखि दियो तो जोटा कि होची आरबीआई अनुसार 2.5% तुमको रखिया को पड़िबो तेनु ए सब हमको एते दरकार नहीं बस हमें जानिले कि देयर इज ए कांसेप्ट ऑफ बासेल नॉन जोतरे 11.5% आरबीआई कहूची टोटल रिस्क वेटेड एसेट रो जदि तमरो 20% होची 20 होची रिस्क वेटेड एसेट तार 11.5% तुम निहाती रखुथबो 11.5% जदि कैपिटल तमर थिबो ताहाले तमे लोन दबो नहल दबो कांसेप्ट होची सेति. नेक्स्ट रीजनल रूरल बैंक एंड लोकल एरिया बैंक. रीजनल रूरल बैंक इंपोर्टेंट काहे की ना 1976 आरबीआई आरआरबी रीजनल रूरल बैंक 1976 50 वर्ष कंप्लीट होची बेस्ड ऑन द नरसिम्हम कमिटी को कमिटी नरसिम्हम कमिटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन आरआरबी एक्ट 1976 पास हैला आरआरबी एक्ट 1976 अनुसार आरआरबी इंप्लीमेंटेशन होती. सो सेपरेट नॉर्म्स फॉर सीआरआर एंड एसएलआर एंड आरआरबी गुडा को वर्तमान मर्ज भी हेची ई ईयर रे तो सेपरेट नॉर्म्स रखा हला सीआरआर और एसएलआर पीएसएल रखा हला 75%. नाउ liquidity ratio cannot be more than the cooperative loan interest rate cannot be more than the cooperative bank in their local area जो एरिया रे कोऑपरेटिव बैंक अछि ताठ अधिक लोन इंटरेस्ट रेट तमे रख परबोनी रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू डिस्ट्रिक्ट ओनली. इमीडिएट रेगुलेटर किए ना नाबार्ड ये क्वेश्चन आस्थिला ओपीएससी रे बुझो जी आरआरबी रो इमीडिएट रेगुलेटर किए ना नाबार्ड अल्टीमेट रेगुलेटर किए आरबीआई मन रहबो. लोकल एरिया बैंक भी टिके सुन देता हूं 1996 कांसेप्ट ये भी 30 वर्ष कंप्लीट हो अगेन फाइनेंस मिनिस्ट्री किए थे ना मनमोहन सिंह सेट अप बाय प्राइवेट एंटिटीज बाय अप्लाइंग विथ आरबीआई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मैक्सिमम 3टा ज्योग्राफिकल कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट रहि परिबो ओनली गोटे अर्बन सेंटर रहि परिबो पर डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटर होची आरबीआई.
गोटे ही मात्र अर्बन सेंटर रही परिबो पर डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम तीनटा कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट रे रही परिबो डन नेक्स्ट असला स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक कोन ना एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं डेबिट कार्ड से दे परिबो लोन दे परिबो 75% हटि 60% हो जाई होंगी नहीं क्रेडिट कार्ड दे परिबो यस दे परिबो टारगेटेड कंज्यूमर होची अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड फार्मर एंड एमएसएमई ए माने होचन तार टारगेटेड कंज्यूमर को माने तो माने फार्मर आउ अनसर्व्ड जो माने को पैसा पत्र मिली पाउनी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक रे से माने को लोन वगैरह अवेलेबल कर दिया जाय परिबो एमएसएमई मस्ट हैव एटलीस्ट 25% ब्रांचेस इन अनरैंक्ड रूरल अनबैंक्ड रूरल एरिया एसएफबी निहाती 25% बैंक से कोड रखिया पड़ियो ताको ना रूरल एरिया रो जोठी की 25% बैंक अनबैंक्ड जो एरिया रे कोनोसी बैंक नहीं से एरिया रे निहाती 25% ब्रांच ताको खोलिया पड़ियो पेमेंट बैंक can accept only demand deposits payment bank can accept only demand deposit and maximum balance होची 2 लाख जाय से एक्सेप्ट कर परिबो पर कस्टमर अर्लियर एटा लक्ष्य दिला एबे पेमेंट बैंक 2 लाख जाय नहीं परिबो डिमांड डिपॉजिट नॉट टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर परिबो नहीं डिमांड संगे सेविंग अकाउंट वगैरह बुझी होची ना नहीं बहुत भल से मन रख इधर ଗୋଟେ क्वेश्चन भी आस्थिला इधर एनबीएफसी वाला एनबीएफसी डी ओके डेबिट कार्ड दे परिबो लोन दे परिबो नहीं required to invest all the deposit under GSEC and treasury bill credit card दे परिबो नहीं लोन दे परिबो क्रेडिट कार्ड दो and it will promote what small saving remittance of migrants labor unrecognized sector unorganized sector small businessmen etc से मानो को पेमेंट बैंक ता हेल्प करेगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट small finance bank after 5 years they can become UCB if RBI approves 5 वर्ष गोटे बैंक एसएबी भलिया काम कला परे सीए आरबीआई रो जदी अप्रूवल नै की से यूनिवर्सल बैंक ही परिबो बुझि परलो यूनिवर्सल लाइक पब्लिक बैंक प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक टाइप फॉरेन बैंक तो होबनी ऑब्वियसली पब्लिक प्राइवेट भलिया काम करि परिबो से पब्लिक तो केतल हो जेतल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देकी ताकू नेशनलाइज करिवो हम कि नै नहले एसएबी जो गुडा थिबो प्राय तो प्राइवेट कंपनी गुडा तो प्राइवेट कंपनी गुडा से प्राइवेट बैंक बुझियला नाउ आफ्टर 5 इयर्स सिमिलरली पोस्ट पेमेंट बैंक से माने एसएबी ही परिबे जदी आरबीआई सैटिस्फाई होबो पोस्ट पेमेंट बैंक से माने एसएबी ही परिबे जदी आरबीआई सैटिस्फाई होबो 2019 रो करले बार वन टाइम लाइसेंसिंग फॉर स्टार्टिंग एसएबी तो से कहला एसएबी पई को भी मोमेंट रे तमे चाहिले लाइसेंस नै जाओ एसएबी करिया पई एंड अचीव करियर को ना पीएसएल टारगेट ना 60% रो हेल्ड इन फाइनेंशियल इंक्लूजन 2021 रे असला यूनिटी एसएबी गेट्स लाइसेंस गोटे यूनिटी एसएबी दिला दिस बैंक हैज एक्वायर्ड पीएमसी बैंक पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक तो गोटे एसएबी थिला जोटा कि 2021 रे थिला कि ताकू लाइसेंस मिलिथिला तो एसएबी लाइसेंस मिलि परिबो को भी टाइम रे ऑन टैप लाइसेंसिंग माने एमिति किछि नै कि जून रो जुलाई मास भीतर लाइसेंसिंग जेमति जो नोटिफिकेशन आसे सेमति कोन नोटिफिकेशन पूरा थ्रू आउट ईयर तबे जेतले चाहछो एसएबी बनिया पई बैंक भलिया बिहेव करिया पई ठीक अछि तमर कंपनी अछि कंपनी पाखरे तमर एति कैपिटल अछि जेन जदी कैपिटल अछि ताल तम ओरे काम कर अप्लाई करो आरबीआई जदी तम कहो बैंक भलिया बिहेव करिया पई बिहेव करो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 रो कांसेप्ट 8 वर्ष कंप्लीट होची रजिस्टर एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनी एक्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी दैट मींस आर वर्तमान शेयर तमे बाहर बांटी परनो तो पब्लिक लिमिटेड ठीक अछि बिकॉज़ लिमिटेड दैट मींस लेस देन 200 एम्प्लॉय 100% ओनरशिप 200 माने शेयर होल्डर नॉट एम्प्लॉय 200 शेयर होल्डर 100% ओनरशिप बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कहा पाखरे अछि ना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पब्लिक के अंडर रे जाउची तो पोस्ट अंडर रे पब्लिक लिमिटेड कसी लिमिटेड माने यार शेयर मार्केट को जाऊंगे ठीक अच्छे ये शेयर दिया है जदि ये लिमिटेड न था ताले ये शेयर पब्लिक रे तमे इशू करि पारी थालो पब्लिक माने ताले गवर्नमेंट रो शेयर अछि एथिरे गवर्नमेंट रो शेयर मैक्सिमम अछि तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी अंडर दे ऑब्टेन आरबीआई रो लाइसेंस अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 टू स्टार्ट वर्किंग एज ए पेमेंट बैंक तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही पारे गवर्नमेंट रो किंतु पेमेंट हबा को हेले तमे आरबीआई ठू परमिशन आनिया पड़ियो largest customer reach why because 1.55 lakh post offices across the India doorstep banking through postman open account with zero balance maximum 1 lakh तमे पैसा दे पारि थो वर्तमान हेटा 1 लाख टका केते जेजी 2 लाख इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बुझेला तो यूपीएससी 2016 रे पेमेंट बैंक ऊपर क्वेश्चन करथला करंट अफेयर 2019 ना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से माने एसएफबी रो क्राइटेरिया 5 वर्ष पर सो दैट इट कैन लेंड टू लेंड आल्सो
कहीं पोस्ट पेमेंट बैंक से लेंडिंग कर परिबे लोन दे परिबे क्रेडिट कार्ड दे परिबे सब तो गवर्नमेंट रो सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल क्रिया को ही पड़े बुझेला से कांसेप्ट तेनु एमाने कहि भाई हम तो 5 वर्ष हो गलानी हम गोटे काम करो आमे एसएफबी हमको करे दियो नेक्स्ट कोऑपरेटिव बैंक रो कांसेप्ट रे इट एप्लीकेबल सिंस 1966 अगेन 60 वर्ष हो कि नहीं अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1966 रो कांसेप्ट सीआरआर और एसएलआर रहिबो कि नहीं रहिबो आरबीआई कैन कीप डिफरेंट नॉर्म्स बैंक पई जोठी 4% 18% रखुजी आरबीआई सीआरआर एसएलआर कोऑपरेटिव बैंक पई किछ अलग रखि पारे रिवर्स रेपो और एमएसएफ रहि परिबो ना नहीं यस ओनली फॉर सिलेक्टेड कैटेगरी फॉर कोऑपरेटिव बैंक जो माने आरबीआई को लागुथबो कि माने डिपॉजिटर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करजदी आरबीआई रो डिस्क्रिशनरी पावर अछि से चाहिए दब न देबे भी किछ कर परिबो नहीं पीएसएल लेंडिंग ओनली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जोटा 75% दिला सेटा भी हटि केते जाई छी 60% ओनली किए दे परिबो ना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पई पीएसएल अछि 60% नॉर्मली अदर कोऑपरेटिव बैंक पई कोनोसी पीएसएल टारगेट नाही काहे से माने पीएसएल माने कोन दबो भाई कोऑपरेटिव माने एही फार्मर माने तयारी करथिबे एंड से ऑब्वियसली फार्मर माने तयारी करछन ताको निजे लोन नवा पई देन एतरे पीएसएल दिया किंतु अर्बन रे काळे कॉम्पिटिटिव देखि के माने खाली बिजनेसमैन वाला को लोन देबे बोली 75% थिला जोटा कि 60% हो जाय रेगुलेटर के ना बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस एक्ट 2020 अनुसार आकु रेगुलेट करा जाउछ तो अर्बन को बर्तन रेगुलेट के करछि ना आरबीआई ठीक अछि चैलेंजेस कोन ना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रे पॉलिटिसाइजेशन होतला पुअर रिकवरी ऑफ लोन होतला स्कैम होतला मनी लेवरेजिंग लेंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह भी होतला तो कोऑपरेटिव बैंक जनरली दी प्रकार गोटे रूरल आ गोटे अर्बन रे सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सेटा को के बुझिबो ना आरबीआई आ स्टेट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सेटा को आरबीआई आ यूनियन बुझुला बट फ्यूचर रे से बारे कोन कहले केवल आरबीआई कर देले सिंगल स्टेट हो कि या फिर मल्टी स्टेट हो केवल बुझिबो कि आरबीआई ही बुझिबो कोऑपरेटिव बैंक रूरल जदी मुझिबी सेतिर ओटा अछि पीएससीएस प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी तो सेटा किए बुझिबो ना कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट एटा को रूरल टा को आरबीआई आ स्टेट गवर्नमेंट एबे भी बुझुची तो रूरल रे स्टेट गवर्नमेंट रो कोन ना रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ए माने रूरल रो बैंक टा को बुझियला आरआरबी हेले भाई नाबार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी हेले दैट इज डिफरेंट करेक्ट नो देन नॉन बैंकिंग एआईएफआई ना एनएबीएफआईडी प्राइमरी डीलर्स तो एथिरे आसीबो तो नॉन बैंक रे एक्सिम नाबार्ड एनएचबी सीडबी एंड एनएबीएफआईडी ठीक अछि ताले व्हाट इज एक्सिम ना एआईएफआई कोन ना कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक all India financial institutions they cannot accept deposits from public these are non bank ठीक अछि then गोटे आसीबो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बट एआईएफआई these are big institutions ए माने लोन देबे कोटी कोटी टमार ठीक अछि तो जोटा कि एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 रो कांसेप्ट गवर्नमेंट रो ओन करछि 100% नाबार्ड 1982 रे आसला किंतु एक्सिम परे वेरी इंपोर्टेंट एक्सिम परे नाबार्ड ई परे न गवर्नमेंट रो अछि 100% आरबीआई रे पाखर दिला आरबीआई 2018 रे नाबार्ड टा को पूरा देतला का गवर्नमेंट एनएचबी 1988 गवर्नमेंट पाखर 100% आगुर आरबीआई पाखर दिला 2019 परे एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक पूरा गवर्नमेंट पाखर सीडबी आगुर दिला आईडीबीआई बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ठीक अछि तो जहा पाखर 100% दिला सेटा बर्तन का पळेला ना एसबीआई प्लस एलआईसी बहुत इंपोर्टेंट सीडबी गोटे जोटा कि गवर्नमेंट पाखर नहीं बट एसबीआई और एलआईसी मींस सेमी गवर्नमेंट भलिया कहयो बोले करेक्ट नो एसबीआई और एलआईसी का अंडर रे गवर्नमेंट अंडर रे आर 100% शेयर का पाखर अछि गवर्नमेंट पाखर हो कि नहीं तो जदि तमे देखियो एसबीआई और एलआईसी बाकू पळे आसी बट गवर्नमेंट अंडर रे 100% नहीं बट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट पाखर अछि यस डायरेक्टली एसबीआई और एलआईसी पाखर अछि काहे कि एथि गोटे स्कैम हला ए आईडीआई बैंक को तार शेयर नहीं वाला के ना एसबीआई और एलआईसी एक्सिम ताले कोन करे इट विल प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हेल्प्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट विथ लोन्स फॉरेन सर्विस ताले ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट रे लोन दबो एक्सिम ताले एक्सपोर्ट इंपोर्ट केतला हो ना बाहर को जेतले तमे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करियो तमने फॉरेन सहित कॉन्ट्रैक्ट आरो ठीक अछि एक्सिम गला नाबार्ड रेगुलेटर ऑफ सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबी किछि कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबी को रेगुलेट किए करछि ना नाबार्ड आरआरबी तो डेफिनेटली करछि किछि कोऑपरेटिव बैंक को भी रेगुलेट किए करछि ना नाबार्ड जोटा कि स्टेट रजिस्टर एंड आरबीआई मिसी की इनडायरेक्ट रीफाइनेंस टू कहा को ना रीफाइनेंस को फाइनेंस नो डायरेक्ट फाइनेंस नो वेरी इंपोर्टेंट नाबार्ड एटा क्वेश्चन आस्तिला ओपीएससी रो नाबार्ड विल नॉट गिव डायरेक्ट फाइनेंस टू फार्मर कि फार्मर अकाउंट को डायरेक्ट पैसा पठे दबो नाबार्ड ना कोन गोटे खेती बाड़ी होची इनडायरेक्ट रीफाइनेंस करियो कहा को फार्मर को और आर्टिसियंस को नाबार्ड इनडायरेक्ट फाइनेंस करियो मींस गोटे बैंक को से पैसा दबो से बैंक फार्मर को दबो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इनडायरेक्ट रीफाइनेंसिंग
ऑपरेट आरआईडीएफ रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड गोटे अछि जोथरे कि नाबार्ड से फंड रे जो पैसा छला से फंड थ्रू रे से माने खर्च वर्च करा एनएचबी हाउसिंग बैंक फाइनेंस टू बैंक और एनबीएफसी हाउसिंग प्रोजेक्ट ପାଇଁ କାହାକୁ ନା बैंक ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବେ एनबीएफसी को भी देबे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ମାନଙ୍କୁ भी देबे बिकॉज़ दीज आर एआईएफ एମାନେ होतନ୍ତି सबुठु बड़ बड़ आंका पाखरे सबुठु बहुत पैसा नेशनल हाउसिंग बैंक बुझौछि यस तो एंगर गोटे रेसिडेंस थाए कोन रेसिडेंशियल इंडेक्स तो इट विल मॉनिटर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्राइसेस एनएचबी रो रेगुलेटिंग पावर का पाखरे थिला 2019 रु आरबीआई पाखरे एनएच रेगुलेटिंग पावर आरबीआई पाखरे बट एटा वर्तमान ओन करूछि के ना गवर्नमेंट सीडबी होछि कोन ना ऑपरेट्स क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस developmental fund it all operate udyama mitra for loans to small entrepreneurs via schemes like mudra stand up india तो जो छोटो छोटो स्कीम गुडा अछि माइक्रो एंटरप्राइजेस वाला को हेल्प करिया पई ताका पई अछि किए ना सीबी एनबीएफआईडी पर दरकार लागि जणा पडला कि 2021 रे हमको आहुरी बहुत बड़ा दरकार गोटे इस्टू जोटा कि बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जेति गति शक्ति प्रोजेक्ट गुडा से पाइपलाइन रे बहुत कोटी कोटी लक्ष लक्ष कोटी टका दरकार ताकू की हेल्प करिवो तो से माने क्रिएट करले नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट तो आगुरु थिला डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआई थिला देने माने करे कि नै विल ब्रिंग ए बिगर वन तो एक्ट 2021 रे ओडा एक्ट आसला जोथरे अलाउइंग सेटअप ऑफ डीएफआई जोटा कि गला एनबीएफआईडी वेयर रिस्क विल बी मोर जेहेतु डीएफआई रिस्क थिला तो एमाने बने गोटे नेशनल लेवल रे गोटे एनबीएफआईडी नेक्स्ट कांसेप्ट होची प्राइमरी डीलर कोन ना डीलिंग इन प्राइमरी मार्केट जोटा कि गवर्नमेंट रो सिक्योरिटी परचेस करिवे सेल करिवे नै कि सेकेंडरी मार्केट दैट इज व्हाट लाइक यूटीएफ म्यूचुअल फंड ये सब कोन करंदी प्राइमरी मार्केट रो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किनिवे सेकेंडरी मार्केट नै कि सेल करिवे सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी नॉन बैंकिंग एनबीएफसी